तिवारी जी नमस्कार। 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 हेलो तिवारी जी नमस्कार। दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आप। सिद्धांश, ये क्या हो गया? कुछ ये मैं भूल गया वो सबको अनम्यूट करने वाला बटन। कुछ कहीं एडमिट एडमिट में था कि डोंट हैव टू आस्क ऑल द टाइम टू एडमिट। यस। क्या हुआ? हो गया? हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तिवारी जी आपकी आवाज। पाठक जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाउ आर यू सर? नमस्कार। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर प्रोफेसर तिवारी आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या बात है? तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़े लोग और ज्वाइन हो जाएं, फिर हम लोग शुरू करें कार्यक्रम। तब तक बताइए, आप लोग बात शुरू कीजिए शायद। सो प्रियम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर इसमें जो लोग जुड़े हैं, राहुल पाठक जी हैं, ये हमारे इंडिया वाइज चैनल में ही नोएडा में हैं। अच्छा, नमस्कार जी। शुभम पांडे जी हैं, लाइव 7 चैनल के यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पे। अच्छा, वो जुड़े नमस्कार हुए हैं सर। जी। और अभी और लोग को भी मैंने बोला है, तो मे भी वो सब भी जल्दी आपको ज्वाइन। हम लोग भी बड़ा प्रोफेसर एक्साइटेड तिवारी, हैं आपको। आपको आवाज नहीं आ रही है, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर, क्या बात है?
प्रोफेसर मिश्रा फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज ज्वाइंड। आपको नमस्कार, आपका स्वागत है। और अभी क्या लखनऊ में क्या समय हो रहा है? लखनऊ में सर 2:50 PM। तो अभी समय है, मेरा ख्याल है 3 बजे का समय हमने दिया है, तो 3 बजे हम लोग शुरू करते हैं। तब तक आप लोग कुछ चर्चा बताइए। आप कुछ कहेंगे प्रोफेसर मिश्रा, आपके तरफ क्या प्रगति है? सर, ये आपके जो भी इनिशिएटिव्स जिन जिन टॉपिक्स पे लिए हैं जी इन टॉपिक्स की कंसर्न तो सभी का है, जी लेकिन एक प्रॉपर वे में प्रोसीड करने के लिए अभी क्योंकि जो प्रोसेस है वो जी उतना नहीं हो पाया है। जी लेकिन एग्रीमेंट तो इस बात पे सभी का है कि ये होना ही चाहिए। जी और हमारे लेवल पे तो हम ये कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन मेंटल हेल्थ इन माय डिपार्टमेंट एज अ को करिकुलर एक्टिविटी। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। यस, Thank you so much. So that is how, at least in the department, I can take some initiative. जी And overall university में जो हम लोग बात कर रहे थे जी उसके लिए आई कि अगर आपके पास किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ MOU वगैरह साइन किया है तो अगर आप उसका ड्राफ्ट हमारे यहाँ भी भेज देंगे जी तो वी कैन टॉक अबाउट इट। क्योंकि जो इन प्रिंसिपल है अवर वाइस चांसलर ही हैज एग्रीड टू इट। जी। तो अगर कोई ड्राफ्ट होगा तो वी कैन शो इट टू हिम एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट। नहीं, अभी तो हमने कोई सिग्निफिकेंट प्रगति हुई नहीं है जिसमें हम उनको बता सकें कि ये मॉडल है। हमें अच्छा। उनके साथ मिलके, अगर वो इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं तो हम ये प्रपोज करें कि ये 2 तरह के कोर्सेज हैं, आप कौन सा शुरू करना चाहेंगे? पहला जो है वो 40 घंटे से 60 घंटे की ट्रेनिंग है, और दूसरा है 3 महीने या 6 महीने का डिप्लोमा। तो नहीं, वो दैट इज हम ऑप्शन, वो मैं पेपर बना के एक कागज बना के आपको भेजता हूँ अगले हफ्ते, फिर वहां से बात आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमें सर एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे। वी डू नॉट जी हैव जी जी दैट जी जी। कॉम्पिटेंस। हाँ, वो लोग तो हम लोग करेंगे, फैकल्टीज हैं हमारे पास। ये इसी तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम हम 10th के लिए भी सोच रहे थे उसमें भी यही है कि जी। वी डू नॉट हैव फैकल्टीज टू डू द वर्कशॉप। ऐसे आकर के कोई भी बोल सकता है, दैट इज जी। अनदर थिंग। बट डूइंग हम्म। वर्कशॉप, डेवलपिंग द like the capacity of the students to हम्म handle this हम्म। kind of crisis. So we need like that kind of help with the experts. नहीं, वो थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने अथॉरिटीज को। जब वो सोचेंगे तो वो खुद, जब वो चाहेंगे तो वो 2 आदमियों की, 3 आदमियों की कमेटी बना के और उसमें एकेडमिक डिस्कशन करके, करिकुलम डेवलप करके, अप्रूव करके कर सकते हैं। तो academic part तो I can take care of. But हाँ the बस। thing is there are two things important जिसमें कि यूनिवर्सिटी बहुत ही पीछे हो जाती है, the जी financial aspects हाँ and the resource persons, because they are not in the capacity of paying something to other persons right now. So राइट। unless developed, so we are just ठीक requesting the है, people who support. ठीक है। Yeah, हम उस पर विचार करके फिर आपको बताते हैं। thank you so much. बताइए शुभम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पांडे जी। सिद्धांश, लिंक भेज दिया तुमको।
हेलो। सर, इसका जो क्या इंसेंटिव है, क्या इसका उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दें। सर, उद्देश्य तो ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे तो उद्देश्य बनेगा। इसमें हमने इसकी कोई संस्था नहीं बनाई है। ये एक समस्या है जो हम सामने लाए हैं और हम चाहते हैं कि लोग जुड़ें और उसके बारे में विचार करें कि क्या किया जा सकता है। इसे कोई सेंट्रलाइज, देखिए ये समस्या इतनी बड़ी है जो सरकार भी आगे तो जिन देशों में सरकारों ने ज्यादा कंट्रोल लेकर प्रोएक्टिव काम किया है वहां भी समस्याओं का हल हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो लोगों को हर स्कूल, हर कॉलेज में अपने अपने तरीके से कार्यक्रम बनाना, समस्याओं के जड़ को पहचानना और उनका इलाज करना, ये आवश्यकता है। अब ये इसको पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स कितनी तरजीह देते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए कि हर पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो ये जाने कि उसके बच्चे की क्षमता क्या है, ना कि वो अपनी इच्छा अनुसार उसे किसी भी तरह के कोर्स में या उसमें डालना चाहे। तो वहाँ उनके सामने भी प्रश्न आता है विचार करने का। तो इन सब बातों पे इसीलिए हमने बहुत से एक्सपर्ट्स इकट्ठा किए हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कौन सा मॉडल काम करता है, कौन सा मॉडल काम नहीं करता। तो हम वो सब सुनेंगे। ये कुछ देखता हूँ प्रोफेसर तिवारी को क्यों परेशानी आ रही है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम आप सभी का स्वागत करते हैं मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में, जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस पहले 4 दिनों में की जाती थी, 12-13 घंटे की। इसे हमने इस महीने 2 दिन में करने का प्रयास किया है। और समय ना गंवाते हुए हमारे साथ हैं प्रोफेसर तिवारी, जो किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, जो अब किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी कही जाती है, वहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर और चीफ ऑफ साइकियाट्री हैं। बड़े ही बुद्धिमान, समाज से जुड़े हुए और हमारे साइकियाट्री कम्युनिटी में बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आपका समय अपना दे रहे हैं। हम बहुत सालों बाद चर्चा कर रहे हैं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपके जुड़ने से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ये आज का विषय है जो एडोलेसेंस, मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन। तो आप अपनी बात शुरू कीजिए। 1 घंटे तक आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो जिस तरह चाहें आप कार्यक्रम को आगे ले जाएं। डॉक्टर तिवारी, प्लीज वेलकम। Thank you so much, Dr. Amresh, and good afternoon to everyone on the screen and who has joined this program, which is so important nowadays because of lots of adolescent suicide occurring around many corners of the country. I am grateful to Dr. Amresh to have included me in this panel, and
I would be talking. Good afternoon, Dr. Mehrotra. Namaste ji. Good afternoon, Dr. Tiwari. Namaste. Namaste. Namaste, namaste. Hey, Amresh ji. I was told by Dr. Amresh to speak on adolescent suicide. हाँ जी, हाँ जी. And the suicides, I think, which are there between 15 to 24 years of age, these adolescent children, they have highest suicide rate in India. 35% of suicides occur between 15 to 24 years of age group. All over the world, the general prevalence of suicide have been 11 to 13 per lakh population, which has remained constant for many years. But recently, there is a slight higher trend in suicide all over the world, and teenage and adolescent suicide has shown an increase in contrast to elderly suicide, which used to be maximum earlier, but now the prevalence of suicide from elderly has shifted to more to adolescent group and to middle-aged group. The 11 to 13 per lakh population data is seen all over the world, not only in India, but also abroad. If you compare the 2020 data and 2021 data, there has been increase in the adolescent suicide as reported by National Crime Record Bureau. It has risen to almost 4.5%, and that's a very alarming situation. We need to deliberate on this issue, why this teenage and adolescent suicide is increasing. There might be a number of causes, but I believe that this meeting will be able to delineate and give some kind of input to people or to places or to persons where suicide is occurring maximum. As we all know that suicides occur because of a very poor integration to society, or very extreme degree of integration to suicide, or a almost not very appreciable integration to suicide. The teenage suicide or the adolescent suicides are not usually egoistic as classified by Emile Durkheim, the great social scientist and thinker. And this teenage suicide and adolescent suicide is also not because of altruistic reason. These suicides are usually because of third category of suicide, that is anomic suicide, or a fourth category of suicide, that is fatalistic suicide. Anomic suicide occurs in situations of stress. And these anomies could be environmental stress, could be financial stress, could be social stress, could be stress of relationship. And if a teenager or an adolescent faces one of these kind of stresses, one has to be cautious that he might or she might commit suicide. On the other hand, the fatalistic suicide occur in people who are
under strict disciplinary control of an organization or of a religious sect, are places like you can say Kota in Rajasthan, where students are kept under strict disciplinary situations with an objective to compete for the competitions they are preparing for. And that also provides a ground for the fourth kind of suicide, that is known as fatalistic suicide. Because of those strict environments, perhaps these children are not able to bear this stress or bear the expectations or come up to the expectations of their teachers, their parents, their friends, etc. And in that situation, they usually commit suicide. The issue is that if these people, these teenagers and adolescents, they commit suicide, what could be the possible causes? And I am of the opinion that social stigma, that one has not one has not performed well in the examination, one has not got the desired results, the people at large will look at them with a low esteem and all that. And because of this social stigma, usually the adolescents and teenagers, they indulge into suicidal behavior. Then there might be academic distress, what is now being seen in Kota and other places. When the examination results are out, usually teenagers and adolescents, they commit suicide because of the academic distress, I think, which they face. Then one of the important issues is that of relationship problem. Over the years, the issue of relationship has cropped up everywhere in the world and also in our country to a very large extent. And all these adolescents, they have a relationship, and whenever that relationship breaks, that pushes them to either anomic kind of suicide or to fatalistic kind of suicide. Then lack of adequate support. These adolescent children and the teenagers, they lack adequate support by the from the places where they live or from their parents and friends in situations of crisis. And because of that, perhaps they also commit suicide. The most important issue, as Dr. Amresh just told, is the high expectations of the family and parents relations. People are not able to appreciate the abilities and the capacities of the child, and they expect a lot from the teenager or the adolescent, and as a result, when they are not able to fulfill their expectations, they indulge into such kind of behavior. Then psychiatric illnesses are a very important cause. There might not be a very frank presentation of the psychiatric problems, but there might be subclinical syndromes. And whenever there is a stressful situation, they break down and they commit suicide. Now the issue is how to recognize
suicide, potential suicidal children, adolescents, and the teenagers. There are two aspects of manifestation of suicide. One, it can be very overt. Overtly, one is saying that he or she might end their life, or they might be covert. There might be overt suicidal behavior, just like often slicing up their wrist, consuming medicines, undergoing gastric lavage, or after slicing their wrist, they might need some kind of dressing or stitching. And if such kind of overt suicidal behavior is seen, then one has to be cautious. One has to be very careful that those teenagers and adolescents might commit suicide. As a psychiatrist, in your clinical practice, you must be seeing such cases of slashing their wrists or consuming, over consuming drugs. That manifests a overt kind of suicidal behavior, which one should be, which should make a person conscious, a person aware that he or she might indulge into suicide, if not today, then tomorrow. Then there might be overt suicidal ideation. When people are depressed, when people are anxious, when people are living in stressful situations, they might communicate overtly about their suicidal intent. And I think examination of such children are all children belonging to that place. If one is able to discover either overt suicidal behavior or overt suicidal ideation, one should take note of that and remain conscious of the fact that this guy may at one time may commit suicide. Similarly, there are covert manifestations of suicide. Covert manifestation like suicidal behavior, behavior which is a covert, is indulging into multiple addictions, reckless driving, unhealthy eating, overeating, frequently meeting accidents. These are the overt kind of suicidal behavior that one is indulging into number of addictions, reckless driving, what we say, eating habits, uncontrolled eating habits, which has a kind of subconscious or unconscious intent to end life. Then there might be covert suicidal ideation, like complaining of chronic pain, suffering with some kind of disabling disease, some kind of disability, some kind of such negative thing in the human body that they are not able to communicate openly. But that is a kind of communication which is covert communication, and that may also point out to such kind of suicidal behavior. Now, how we can know about these kids that they might commit suicide? Besides overt and covert suicidal behavior and ideation, there are other ways which can help in identifying the potential suiciders. There may be past history
are such attempts, then the environment where the adolescent is living are living alone, there might be some kind of pessimistic thoughts. There might be they might be preparing for some kind of examination, some kind of competitive examination, some kind of job-oriented examination, and one or two failures should usually indicate that there might be a possibility of a potential suicide in this person. Then many psychiatric illnesses like depression, like terminal phases of schizophrenia, like schizophrenics having commanding hallucinations, other kind of psychiatric illnesses might indicate that this person might have a kind of suicidal intent. One of the clinical discoveries which I made is about androgenetic baldness. Somehow I have found that in almost 98% cases, the androgenetic baldness, and in such persons, if a psychiatric syndrome occurs, it is on affective plane, and these persons might suffer with, if not today, then tomorrow, with some kind of intent to commit suicide. I would advise that if grade 3 androgenetic baldness is there in the parents and the children have some kind of underlying depressive features, then one has to be very cautious about this. This androgenetic baldness is published in Indian Psychiatric Society journal and is known after my name as Sarvada Sign. And it has paid me lots of dividends in identifying patients of depression and predicting that this might, the person may, at one point in time, may commit suicide. So such kind of screening of such children, going to coaching institutions, going to places like Kota, not only patients, but the students, but also their parents. And one should put a note after examining them, after counseling them, after doing some kind of psychometric assessment, that these persons might have a potential desire to commit suicide one day. And one has to take preventive measures right from there when they get admission in the school, in the coaching institutions. I think that can prevent to very large extent. Then those students, those teenagers who indulge into reckless driving, uncontrolled eating habits, into multiple addictions, complain of chronic aches and pains, they should also be taken note of, and that they might be potential suicidals. As far as prevention is concerned, recognition is very important. For that, we need to have clinical examination. We need to take science of help of some instruments to discover underlying depressions. We need to take into account the endogenetic baldness, a very important aspect. We also should take into account the previous failures, the student how he has been performing. If he's after some time, if he is found living alone, not mixing with the colleagues, not mixing with other students,
These all issues should be taken into account. Then overt and covert behavioral manifestations and suicidal ideations for suicide is very important. And as I just told, that there might be overt suicidal behavior, there might be overt suicidal ideation, there might be covert suicidal behavior, there might be covert suicidal ideation. They should all be taken into account. Then a clinical assessment by some kind of psychometric test or some kind of a clinical examination may also help identifying these teenagers and adolescents for committing suicide. Sorry. This is an alarming situation. And over the years, in past decade, the adolescent and the teenage suicide has increased a lot. And two important issues which are seen is the stress of examination, stress of competition, and failure in relationships. And these issues should be taken into consideration by the institutions and should identify such potential teenagers and adolescents whether they might be one day commit suicide. I think I'm open now to questions if somebody has to ask me, and I would be happy to reply that. Okay, Dr. साहब, thank you, बहुत बहुत धन्यवाद. तो हमारे बीच प्रोफेसर सविता मल्होत्रा हैं, आपका स्वागत है मैडम. एंड प्रोफेसर आर श्रीनिवासमूर्ति has joined us. Sir, most welcome. Your valuable opinions are always very important for everyone and each one of us here. So before I go on to the questions, may I invite one by one, Professor Malhotra, would you like to make a comment at this point of time? What is the cause of adolescent suicide? Okay. Can you? आपको आवाज आ रही है, डॉक्टर मल्होत्रा? Or is she not there? I think, okay, we take a question. Please. Namaste everybody. Can I please have a moment? नितेंद्र जी और आस्था जी, कृपया आपका वीडियो, आपका ऑडियो बंद करें. नितेंद्र जी, आपसे विनती है कि आप म्यूट रखें अपने आप को. आस्था जी, आपके घर की डिस्टरबेंस आ रही है स्पीकर के टॉक के बीच में. आस्था जी, please mute yourself. Actually, the host can mute all participants, and when the person is speaking, that. Okay. So, may I invite Professor Malhotra? Is she there? I don't see her now. Okay. So Dr. Murthy, would you please take up and make an initial comment to our group about what do you think is the cause of adolescent suicide before I move on to other speakers? Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Yeah. I come from a different direction.
It might not be in line with what I heard from Dr. Tiwari. You know, the biggest problem in suicide in particular and mental health in general is this whole deviancy aspect. Everyone is potentially suicidal. Everyone should be, you know, we have to look at their hair or their nails or this or that. And this is a wrong approach. This is my firm belief. The right approach would be that each one of us is capable of maintaining good mental health by our activities, give them the tools to take care of it. The same way we do it with nutrition, we do it with other functioning, and that is the right direction to go for suicide prevention. Any amount of providing services we have seen, as Dr. Shekhar Saxena said, when it comes to mental health, all countries are developing countries. This is a quoted from the Lancet 2019. It is true, because we have concentrated only on the 5 to 10% of the people who have severe illness and draw all the conclusions based on that. You know, what we need to do in this, as the name of the Manasika Shakti comes, we should think of what is it that we can do so that if and when the adversity comes, the person has the resilience. And I submit, and I hope on October 2nd, when you give me an opportunity, I'll present to you the amount of things that we can do to decrease the problems, from simple things like exercise, sleep. My own humble submission, Amresh, is that don't go the deviancy model. You're not going to get anywhere. All that is happening in IITs and Kota is counselors. What is this counseling that is going to do? Is it going to change the person? All of us have got 50 years of experience. Let's not use counseling as some sort of a rubber band which will solve all the problems. What we need to do is, all of us have to recognize three things. We are all vulnerable. All of us can become strong. And when we have an adversity, we should use a positive way of responding to it rather than a negative way of responding to it. Positive way of responding to it is resilience, post-traumatic growth. Negative way is suicide. So if you present it saying that you're capable of being a strong person psychologically, here are the tools for it. And if and when you meet with a problem like a disaster, I've done a lot of work with the disaster. You know, the disaster is a thing which affects everyone. But when you give them the tools, most people recover, and 70% of the people don't have post-traumatic stress disorder. So my own submission to the group, please move away from pathologizing suicide and look at it as a crisis, as Durkheim did. He talked about suicide is an individual act with social origins. If we can look at that way and try to strengthen the individual, minimize the social factors, we would make a big success, especially in India. Thank you very much. Thank you, sir. I think I will clarify a little bit in the group that what is the direction of work that we are taking. So we realize that suicide in relation to mental illness is a very different issue. So we have kept it a little bit away. We also realize that, and we want to tell everybody that suicide is not a mental disorder. Let us not confuse just because specialists who treat mental disorders are talking about suicide, that does not mean suicide by default becomes a mental disorder. It is a phenomena. हम ये कह सकते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर मन में जो शक्ति है और उसकी समाज की और उसकी भावनाओं की जो चुनौतियां हैं, उनमें जो जद्दोजहद चलती है, उसका परिणाम परिलक्षित होता है। कभी कभी वही आदमी सुसाइड की भावनाओं को दबा सकता है, उससे वो डील कर सकता है, और कभी कभी ये बात उससे आगे निकल जाती है। जब ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं, हमें इंसान को इस तरह कैसे बनाना है कि वो
अपने कॉग्निटिव रिजर्व्स, अपनी कॉग्निटिव स्टाइल यूज करके उसका उपयोग करते हुए जीवन की हर भावनात्मक चुनौतियों को, चाहे वो शर्म हो, गिल्ट हो, द्वेष हो, घृणा हो, असफलता हो, सफलता हो, रिश्तों का ताना बाना हो, जो भी हो, उससे वो अच्छी तरह सफलतापूर्वक उसमें विजय पा सके। इस उद्देश्य का जो भी मार्ग है वो हमारे लिए एक चुनौती है। हम लोगों से पूछते हैं बताइए सुसाइड क्यों होता है, लोग हमसे पूछते हैं आप बताएं करना क्या है। तो हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं उसमें इस पर भी चर्चा होगी कि हमें करना क्या है। करने में ये किसी एक आदमी के करने की बात नहीं है। इस खेल में घर के लोग, माता पिता, स्कूल, यूनिवर्सिटी सभी मौजूद हैं, मगर जो वो शख्स है जो जिसे आत्महत्या के विचार आते हैं उसका जीवन केंद्र में है। उसका बचपन कैसे गुजरता है, तो बचपन कैसे गुजरना चाहिए इसकी शिक्षा दीक्षा लोगों को थोड़ी बात उस पर भी होनी चाहिए। हम तनाव महसूस करते हैं तो तनाव से निपटने के क्या तरीके हैं, बात उस पर भी होनी चाहिए। हम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए पूरे सेमिनार में आगे बढ़ेंगे। देखिए जो भी एक्सपर्ट हमारे यहाँ बात कर रहे हैं, भले यहाँ पर लोग कम हैं लेकिन ये सारे सिंथेसाइज होके यूट्यूब पे जाते हैं, ऑनलाइन कोर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में इन विचारों को व्यापकता मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हर किसी का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रोफेसर शीला मिश्रा कुछ कहना चाहती हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। मैडम यस प्लीज मेक योर पॉइंट, बताइए क्या कह रही हैं। Express my gratefulness that Dr. S.C. Tiwari presented a lot of causes and situations which lead to suicide and this kind of situation where we have to be really very, very careful to help. Also believe into that we have to pay an equal emphasis on recognition and prevention of the suicidal behavior and attitude. But at the same time, there are people who do not commit or who do despite of severe external situations. And this, I think, is because of the identity of the person, and there is a gap between desire and ability to fulfill that desire. So, for success, either we reduce desire or we increase the capability. So, any we can do this by increasing the mental capacity of our children from the very beginning, childhood. Also, go long way. Also, degree of challenge versus skill and confidence level. Recognition and diagnosis, but how can we strengthen the mental ability and well-being? That also should like given equal emphasis. And I must say there is a lot in Indian wisdom and in Indian scriptures which can help us, like yoga and Vedanta, and there are philosophies which are really very, very helpful in mentally. Thank you. Professor Murthy, you want to make a point? Yes, Dr. Mishra, as we said, we have to see things in 2-3 contexts and evolve methodology, because if we are serious to teach and train people, we have to be very precisely aware
what an individual should do to look after positive mental health. Ultimately, it is in his hand. We expect a human being in today's century to be able and capable to deal with adversity of his own life as well as life of others, be able to recognize the risk which these psychological challenges present to his life and to life of others, how to create a conducive and safe environment around himself to be able to remain productive, enjoy a health and well-being, and live a fruitful and meaningful life. So there is a lot which depends how do we train right from childhood. And therefore, we will have to come back to the question of, for example, say discipline, dialogue, discourse, conversation, autonomy, thought, health, wisdom, optimism, hope, how to understand the emotion, how to exercise emotional gratitude, how to recognize own psychological challenges and how to contain them. I believe there are in context of positive psychology or positive psychiatry, if we divide, I can say that there are issues related to psychological characteristics that we all have. For example, we may have problems related to mood, we may have problems related to memory, we may have problems related to behavior or understanding. If these problems cross a borderline, we may start thinking that somebody might be developing a psychiatric disorder. That's a very different issue altogether. But there are psychological characteristics which are not developed, which people are capable of developing. For example, people are capable of developing trust, faith, and optimism, but everybody doesn't develop. It's a question of how we train them. And that is how a number of non-drug therapies have come up. They have been systematic, large trials in psychiatry where these interventions have been properly evaluated for people suffering from a mental disorder, as well as people who are in distress, or those who go through the problems of psychological trauma or abuse, etc. So all it comes to, I will give you one example. I was looking at, so peer support is a recognized treatment modality for suicide. Now let us apply what is peer support. So we thought, I checked, 15,000 research papers are being published every year on peer support. And you would agree that hardly about 15–16% of research work gets published. So therefore, we can say in this world, about more than 1 lakh of people have felt the need to examine peer support as a scientific content. Now, what is peer support? यारी दोस्ती का जो कॉन्टेक्स्ट है, जिसे हम कहते हैं हाथ मिलाना, हाथ जोड़कर चलना, बचपन से जो हम सीखते हैं, अगर हम उसे एक कहानी में परिप्रेक्ष्य में रखें तो राम और श्याम में दोस्ती थी, दोनों आगे चलकर बिछड़ गए, दोनों के परिवारों में दुख बढ़ गया और दोनों में समस्याएं बढ़ने लगी। ये जो कहानी है जिसमें हम टुगेदरनेस की बात करते हैं, और जब वो प्रोफेशनल कंटेंट होता है तो हम पीयर सपोर्ट की बात करते हैं। कहना ये है कि ये वे गुण हैं, these are those psychological characteristics which we are expected to learn when we are growing. All children are supposed to be trained to develop positive content of behavior, positive content of psychological mindset, build our grit and persona, develop more psychological reserve and capacities, recognize and develop ability
to recognize abnormalities, have good set of mental health information. I think that's the most important. So before going on and on, I would try to support and agree to what Dr. Murthy has said, that we need a change in the shift. Say 20 years back, things were very different in mental health. Our challenges were people who were too sick lying in the mental hospital, in psychiatric hospital, they were our forefront challenges. We then recognized, no, the common man. I published a book, The Battle Within. The theme is the daily life struggle is reflection of your psychological challenges. What we face in daily life gets reflected in terms of symptoms. And therefore, we must have the skills of bringing psychological change in our behavior. And for example, changing smoking behavior, changing drinking behavior. We do not wait this to become a psychiatric disorder of addictive substance abuse, etc. And then we can say, okay, we can say tobacco is the most common addictive substance and tobacco addiction is, but what it is fundamentally a problem of behavior which we have not been able to fine tune. We have not been able to tell ourselves what to do with it. Chew tobacco, smoke, how injurious it is. So finally, it comes how we grow our brain power, how we amalgamate our brain power into your mind power and develop the system of growth and development. There are thousands of examples from childhood development experiments and others to prove the point that we are trying to say. But I'm here to listen to all of you, and I think we'll move on. And I'm waiting for Dr. Chadha, but he has not yet joined. Yes, Dr. Can I Murthy, come in briefly? Can I come in briefly, Amresh? Thank you very much. You really hit the nail on the head. I want to make 4 small points to sound that what I'm talking about is not a pie in the sky. For example, if you look at the latest book on suicide, the Oxford textbook of psychiatry is the Oxford textbook of suicide and suicide prevention. Yes. Do you know, out of the 96 chapters, the first 11 chapters are on religion and spirituality. Yes. Before even they talk about the epidemiology, the first 11 chapters are on this aspect of it. I urge each one of you to look at it, and the first 11 chapters are easily available free on the Kindle. You can download it. Yeah. Number 2, all over the world, people who follow Islam have low rates of suicide because in Islam, a strong feeling is there. Suicide is haram. God has given us life. And all over, even in Israel, the Arab Israelis have half the rate of suicide compared to the Jews. Number 3, the JAMA Psychiatry in December had a review of physical activity and risk of depression. It's a meta-analysis, a 3-year follow-up of a minimum of 3,000 people. It concludes significant mental health benefits from being physically active is there, and ends up saying that should therefore encourage any increase in physical activity to improve mental health. I can go on, and we have ourselves published a book for caregivers on 10 things that you can do to do that. Anyone who wants it, send me an email and I'll send you a copy of this. So there is an enormous amount of it. Now you might ask, Dr. Murthy, are you taking this away? See, at this moment, mental health professionals are running ugly clinics, not beauty clinics. We must move away to run beauty parlors where everyone feels like coming. Thank you very much. Yeah. No, thank you, Dr. Murthy. I think the purpose of discussion is to take out the best possible thought that is suitable to us. And I have to unhesitantly say that the answer
finally lies how to increase the coping ability of Absolutely. each one of us, not just our children. Let us recap that when somebody dies due to suicide, there are at least 4 people in the family and friends who become at a very high risk of suicide again. So I think I will ask Professor Tiwari, do you want to make a final comment on your presentation after listening to all of us? Dr. Tiwari? No, he's okay. Is there anybody else who wants to make a comment or any question at this point before we move on? I have welcome Dr. Shruti. You are welcome. Dr. Ria, Dr. Jawar, most welcome. May I speak, sir? Oh, yes, Dr. Mishra. Go ahead, please. Yeah, so I fully endorse what Dr. Murthy has said. Right. And definitely, this is the spiritual quotient which has under it like intellectual quotient, and then it is like mental, and then it is like the physical. So that way, spirituality and religion, that plays a really very, very important role. So we must also include whatever like the techniques and strategies are talked about there. For example, Srimad Bhagavad Gita, it starts with the first chapter as Vishad Yoga, which we call like anxiety. So we can take a lot of help from there also, and combining the modern and the ancient wisdom, I think we can better fight all these issues. Thank you so much. Yes, Dr. Mishra, thank you for bringing this context. I was thinking of introducing Bhagavad Gita and its relevance to child development, education, and daily life functioning little later, but thanks for bringing in this context. We have a master book for giving us guidance how to live our life, how to deal with the conflict, how to deal with problems in our life, and it's a proven text. And a lot of work in mental health has been done. It has been, and practice of Bhagavad Gita doesn't really need any evidence, and it works, we know, because it is culturally acceptable intervention. And I hope we will have a full day program on this in times to come, and we will take it up in that manner and call upon request the experts to share their opinion with us. Anybody else who wants to share any experience or make any comment? We have, I think Dr. Tiwari has left. नमस्कार So, yes, बोलिए राहुल जी. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है बताइए. कि आजकल के इस युवा पीढ़ी में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जी. चाहे हम हो या हमारे बच्चे हों, कब डिप्रेशन में चले जाते हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता. तो इसके कुछ संकेत, कुछ साइन जिससे हमें पता चले कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं. एक मिनट. हाँ बोलिए डॉक्टर साहब. हेलो. हाँ मैं डॉक्टर तिवारी से कह रहा हूँ कि वो आए. डॉक्टर तिवारी, would you like to make a comment and respond to what Rahul has asked? So, Dr. Tiwari, please, can you join us for making your final comment? And there is a question about prevalence of depression in day-to-day life. आपको सुनाई पड़ रहा?
डॉक्टर तिवारी, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? Can I respond to it, Avdesh? Yes, please go ahead. You know, हिंदी में बात करूं इंग्लिश में बात करूं? हिंदी में करिए आप, नो प्रॉब्लम। हिंदी में, ओके। बात यह है कि कोई भी डिप्रेशन या कोई भी बात हो, सिर्फ एक सिम्टम से नहीं होता। हम 4 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या ये बिहेवियर कोई कारण से हो रहा, नहीं कारण से हो रहा। जैसे कि किसी का घर में डेथ हो गया, उस टाइम डिप्रेस्ड होना नॉर्मल है। सिमिलरली कोई एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम नॉर्मल है। सेकेंडली, इज द रिएक्शन नॉर्मल रेंज में है या एग्जैजरेटेड है? ठीक है ना। नंबर 3 इज दैट इज इट इंटरफियरिंग विद द पर्सन्स फंक्शनिंग? वो खाना पीना छोड़ दिया, नींद छोड़ दिया, कपड़ा बदली करना छोड़ दिया, इज दैट अकरिंग? सो इज इट अकरिंग विद एन इवेंट और नॉट, with or whether it's exaggerated or understandable under social norm है? और तीसरा है कि उससे उनका फंक्शनिंग में कोई फर्क पड़ा है या उनका बिहेवियर में सुइसाइडल बिहेवियर दिखाया है। ये लगे तो जस्ट बिकॉज यू फील सैड इट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। ये गलत बात है। ये या नहीं, वो रिएक्शन एग्जैजरेटेड है या नहीं, और ये इंटरफियर कर रहा नहीं। दूसरा बात यह है कि सबसे बड़ी बात हमने करना है, फैमिली कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करना है। See, the biggest problem that has happened in that, because of the phones, we all are the screen oriented rather than person oriented. To me, the biggest thing that we have to address is to increase communication between the family members, between the peer group, as Amresh ji pointed it out, and to increase feeling that what is happening to me is understandable, I can master it alone or with the help of other people. ये सब कुछ कर सकते हैं तो जरूर फरेगा। उदाहरण के लिए एक लास्ट एग्जांपल, during the COVID, in the elderly people who are lonely, if only they had someone to listen to, they had less problems compared to those who are alone. Yeah. Everything doesn't have to be medicine. There are so many things that can be done by people. Thank you very much. देखिए, जो डॉक्टर तिवारी, आई इनवाइट यू प्लीज। हेलो। हाँ, बोलिए सर। कैन यू हियर मी? यस, प्लीज गो अहेड। Okay. The prevalence of depression, so many studies have shown that it is, the major depression is 1 to 2% in general population, whereas it is more than 20% in elderly population. Apart from that, as we were talking about suicidal behavior, suicide, I think it should not be left only to talking these people or interacting these people. Everybody doesn't commit suicide. There are some identified people who commit suicide. What is lacking in them? What is troubling them? What is the problem in them? It is social, it is educational, it is constitutional, it is whatever. One need to define these issues if we need to prevent suicide in teenagers and adolescents. I believe that those who commit suicide, they have some potential endowment to indulge into that kind of behavior. And that potential endowment could be, either it can be a psychological one, it can be a biological or physical one, a constitutional one, or it can be environmental, or it can be educational, whatever. We need to find out these issues amongst teenagers and adolescents. We want to prevent suicide in those adolescents and teenagers. One very important aspect has come, that of relationship, which is now not being taken very easily by the parents, and things go beyond such a situation that they indulge into this kind of behavior. Many other aspects are there.
of suicidal behavior. It should not be left only to talking or only to making an assessment. We need to find out by assessment, by talking, by psychometric assessment, by some kind of a clinical examination, by some kind of a antecedent history, by some kind of behavior, that what puts them at risk of suicide. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for, I think now it's time to move on to Dr. Murthy. You want to make a point? The last question before I move on to other speaker. Yes, Dr. Murthy. No? Okay. Professor Tiwari, thank you very much for taking out time and sharing your ideas and joining. This is a new group and we need lot of encouragement. हमारा विश्वास है कि चिंगारी लगाई जाएगी, आग लगेगी और मामला ठीक होगा. हमें हर उस बच्चे के दिमाग तक पहुंचना है जो अपने जहन में सुसाइड के आइडियाज को लेकर यूनिवर्सिटी में घूम रहा है. उसे उम्मीद की किरणें कहाँ दिखाई पड़े, किससे वो बात करे, इन सारे मामलों पर जब बातचीत हो तब ये हम कहेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक है. आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है. लखनऊ शहर में आप पिछले 40-45 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टरों को पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे भी कार्यक्रमों में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे और आप हमें ज़रूर मौका देंगे. धन्यवाद. जी. Amresh bhai, thank you very much for giving me an opportunity, and I will happily join you whenever you ask me on any issue pertaining to such kind of mental health problems. Thank you. Thank you so sir. much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Now it's my pleasure to introduce Professor Rakesh Chadha. Rakesh ji, can you hear me? No. Where is he? Rakesh ji, can you hear me? Welcome. Yeah, I can hear you. I can hear you. So it's my proud privilege to introduce Professor Rakesh Chadha, who is Professor of Psychiatry and Chief Head of the Department of Psychiatry at the Premier Institute of the country, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. It is indeed a matter of great satisfaction and encouragement for such small and nascent initiative that we have started, but you can see that we have friends and colleagues who are committed to the cause of problem, and in that context I wholeheartedly thank you immensely, Dr. Chadha. राकेश जी, आप अपनी बात आगे शुरू कीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं. आज का विषय है एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड बिहेवियर. पिछले सेमिनार में बात हुई थी, डॉक्टर सिन्हा ने बहुत सी बातें बताई जो आपके इंस्टीट्यूट में हो रही हैं, कैसे मॉनिटर किया जा रहा है स्टूडेंट्स का बिहेवियर और क्या क्या नई नई बातें हो रही थी. वो वीडियो भी यूट्यूब पे है, हम जब मौका मिलता है तो उसे डिस्प्ले करेंगे जिससे कि लोग उसे सुन सकें. ओवर टू यू, डॉक्टर चड्ढा. Thank you, Dr. Amresh. It's definitely a great pleasure to be a part of this program. And can I share my screen? Yes, please. You can. Can you please activate allow screen sharing? I think so. Allow participants.
multiple. Yes, go ahead now. Can you? Yeah. Thank you. So thank you for sharing, and thank you for inviting me for this program. Here I have given two photographs. The left one is of our National Drug Dependence Treatment Center, which is located around 40 kilometers from our institute, and it's located in Ghaziabad. The second one is a picture of our institute, that's the All India Institute of Medical Sciences. So I'll be discussing about challenges in preventing students' suicide. Now, this is something, suicide amongst the students, which has become a talk of the day in the last few years. I would say maybe last 2 decades. I'm not sure, when we were students in 70s, or it was a very, very unusual event if we could hear that some student committing suicide. Or so I think the social networks are also very strong during those days. Now, another thing, the day this week is very important from the angle of if we talk about the suicide prevention. The World Suicide Prevention Day falls on 10th of September. So that's just few days from here, from today. The problem of suicide prevention has been recognized worldwide. And as we see on this photograph also, there are a group of people who are trying to network or speak to each other. So basically that social networking or social support, that remains a hallmark of suicide prevention. This is something which has been a kind of major loss in the last few years, especially with the internet and virtual media becoming more and more popular, and people have stopped mixing with each other, talking to each other. Here I often come across, all of you, many of you must have seen Munna Bhai MBBS, the Jadoo Ki Jhappi, which Sanjay Dutt has often referred to in that. That offers a kind of emotional warmth or emotional support. So that's in fact, he uses this Jadoo Ki Jhappi in one of the scenes in the movie where one of the persons who is suicidal, and he provides emotional support by resorting to this means. So that remains a very important suicide prevention step or method of suicide prevention. All of us are familiar with this kind of news. These are of just last few days. Kota, which has been a capital of providing training in the competitive exams for entrance to engineering and medicine, it has become more notorious also in the last few years, with many students committing suicide while they are preparing for their entrance exams for medicine or for engineering. And then suicides happening in the professional colleges or engineering colleges or medical colleges is not a uncommon event, and this is often the news are in the media. So in fact, I would like to congratulate Dr. Amresh Srivastava for organizing this program targeted at prevention of suicide amongst the students. So it's becomes very important to look into the causes and how we can tackle with this serious problem. As we see, academic distress is one of the important things in the background. And there has been a rise in the suicides among the students in the last few years.
like as one of these items says, student suicide in India, 1 every hour. So these are the some of things which are talk of the day amongst the young students. So we need to take care of this problem. And now, why there is a rise in suicide amongst the students? If we look critically into the issue, the most important, one of the most important things is academic stress. Now, too much of focus on academic achievements, and sometimes it's said that Indian society is more focused on academic achievements as compared to the Western countries. In fact, that's one of the reasons that the students from India or say South Asia, they excel when they go to the Western countries, and many of them are occupying very important positions among the universities and medical schools and business establishments. So, but that feeling of that thought of over achievement, and that also leads to generation of stress, which is associated with the suicidal risk also. And there are often unreasonable expectations of family members and society from the students, from the growing child, from the, again, you would remember the famous scene in the Three Idiots when Amir Khan is looking at the pregnant sister of Kareena Kapoor and says, "Tu to andar hi raha hai," means तेरा नाना तो बाहर बैठा हुआ है हंटर लेकर कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. So that kind of expectation of family and society, that leads to lot of stress among the students, among the youth, and leads to this kind of issue. We are not giving any open opportunity to our children or the adolescents that they can grow as per their choices. They can choose their career. So that kind of problem is also sometimes that mismatch leads to the problems of suicidal, increases the risk of suicide amongst the youth. Then there are not enough job opportunities, and there is increasing competition among the students for getting the jobs. Now, if we talk about unemployment, this is not something new. This has existed since long. So that's not but the expectations have to be as per the person's qualifications, person's work, or person's, so you can't have, everyone can't be at the top. Now, other thing is, now when the parents are sending the students, their children to such places like Kota, and there are many cities associated with providing this kind of training. In North Dakota is popular, and there are such places in eastern India or south, and where the children now Kota is it said that the number of students who are there in the 6 to 7 months before the competitive exams, that goes into almost 1.5 lakh. Now these are the children who are staying away from the family. There is no immediate social support, and this is a time when the growing child who is preparing for the exam, preparing for the competition, the child is pressured. He or she is attending his or her regular classes in the school, whether he or she is attending or not. And in addition, the student is also attending the coaching classes. And in the absence of immediate social support, the family, the parents are at the distance of 500 kilometers or 1000 kilometers, and so child is under stress, and there is an absence of immediate social support, which further worsens the situation, and child feels socially isolated. And so that's a very important issue, and there is often the mental health issues are ignored or neglected in that situation. Child is under stress and may be needing emotional support, social family support, which are lacking, which leads to the increasing risk of suicide amongst the students. This is a write-up which appeared just yesterday in the Times of India. This is written by one of the former directors of IIT Delhi, and Dr. Professor V. Rajagopal Rao especially mentioned that there's a disparity between top and other institutions. There are only few counted IITs which are excelling, and then there are NITs, and then after that, the number of
good institution falls down to a great extent. Then media emphasis on high salaries. Here he especially mentioned that often you would get in news in the month of March or April that one of the IIT students they got, or say IIM students, they got a package of 1 crore. Now, the parents would think that 1 crore is a norm for the students who pass out from IIT or IIM. And here the writer has very clearly said that this 1 crore salary package is only for 1% or 2% of students. So 98 or 99% of students, they are not getting that kind of salary package. But this raises an unrealistic expectation, and the parents would send the child to Kota or other such cities without realizing what are the interests among the child, among their child, and the child would be away from family, away from the emotional support. So that all these things, they lead to so much problem for the emotional trauma for the child, and child becomes more prone to emotional breakdown, and which may go on to develop into increase the suicidal risk. The paper has also, this writer has also offered some solutions. I'm not going into those details. I'll be talking about especially about the mental health issues and how we can prevent suicide risk among the students. It's not only students. In the last 5 years, if we see the suicide statistics of our country, from 2017 to 2021, there was an increase in the suicide rate from 9.9 to 12 per 100,000. And all of us very well know that suicide is often underreported. If we compare the states, we find that in Bihar, the suicide rate is just 1 to 2 per 100,000. And whereas in Tamil Nadu or Pondicherry, the rate goes into 25, 30. So it's not that the rates would be so much different between these states. It's basically the suicide may not be reported in some other states, and that shows the very low figures. So the actual figure may be 2 to 3 times of this figure, which is being reported by the National Crime Records NCRB in India. Now, more serious is suicide is the commonest cause of death in 15 to 29 age group. Now, in our country, like if we say the 15 to 29 age group is nearly constitutes 25% of our population, and 0 to 15 is another 25%. So if we talk about the student population would be around, say, 25% of the total population, and where the commonest cause of death is suicide. Yes, globally, it's the 4th leading cause. Suicide is the 4th leading cause of death internationally, but it's the most common cause of death in our country, and there we need to be cautious, and we need to take an action in this regard. Hanging and poisoning are two of the commonest methods used for suicide. Now, it's very important to mention here, somehow media has not been very responsible in reporting suicides. Media often would try to highlight the suicides and the method of committing suicide, and that leads to the copycat suicides. We saw like jumping from high-rise buildings. We saw this happening very commonly during the, in fact, it's with the multi-rise buildings coming in most of the metro big cities in the country. Jumping from the high-rise building, jumping from the higher floors has become one of the common causes of, common methods of committing suicide. But media would never say how many suicides are prevented by early intervention. In fact, in mental health, in psychiatry, this is one of the very important, very interesting thing. My fellow psychiatrists, some of senior psychiatrists are here. Sometimes while sitting in the OPD, one of the patients would say, or family member would say, "Doctor साहब, psychiatry में तो मरीज कभी ठीक होता ही नहीं है. जो बाहर बैठे हुए हैं, वो कोई कह रहा है मैं 15 साल से आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 10 साल से आ रहा हूँ." But then I would have to tell them that a person who recovers, he won't be coming here to tell you that I have recovered. Same way, the cases of suicide which get prevented, those nobody comes to know. The successful treatment in psychiatry,
at least in our country, very rarely will find one of the media personalities declaring that I had suffered from depression and I undertook treatment. And but these instances are very, very uncommon. But the events, those get popularized, those are highlighted to the media, and these days every channel of TV, every news channel would be showing if some suicide happens. So every channel would be showing for those glimpses so frequently, which is a very irresponsible. And there are clear guidelines for the media reporting, but no, at least those are not followed in our country. So in the younger age group, academic failures, disruptions in the education, that remains one of the very important causes of suicide. Then child abuse, trauma, bullying, stigma, minority stress, these are the other important causes of suicides among the youth, among the students. Depression, family history of suicide, these absence of social support, which I have been referring to. So these are some of the factors, some of the risk factors for suicide amongst the youth. Some of the statistics: for every death by suicide in India, there are more than 200 people with non-fatal suicidal thoughts. So if you're having suicidal thought, that doesn't mean the person is going to commit suicide. But these are the warning signs, and the doctor and the family member, they need to be careful that these should not be completely ignored. This means the person needs some help. And for every death by suicide, there are more than 15 suicide attempts. And nearly 5% of the population, more than 18, has some level of suicidality. And nearly 68% report suicidal ideation. So fleeting suicidal ideation is not uncommon. And suicides are more common in males as compared to females. It's nearly male-female suicide ratio of suicide is 0.68. Now, what are the warning signs of suicide? This is very important to know. If you're finding one of your family members, one of your friends, students, this is for teachers, is expressing suicidal feelings or has expressed some kind of well-formed plan, that there's a warning sign for suicide. I remember nearly 20 years ago, one of my colleagues found a note written by her son that he's planning suicide. The student, the son was studying in, I think, 11th standard. She immediately rushed to me with the note. And so that's the kind of step the parents or anyone who comes to know about it, they need to take, so that the person can be assessed immediately and provide a solution. Now, it's not that person may have is planning for suicide and has written. So, but it should not be ignored, because this is a kind of, say, expression of distress or expression of need for help. Depression or other psychiatric illnesses, I have put in the red the items which apply to the students. Expression of marked hopelessness, strong feelings of guilt, withdrawing from activities, missing classes. If a student who has been very regular in classes and has been absenting for no reason, and so that should be a warning sign for the teachers. They should be careful in taking an action in this. Students who are living in hostel, a student, a person who is regularly having meals and is not coming for meals, missing meals often. So that's another sign of emotional distress, and that should be the hostel wardens and the other students, they need to be careful about this. And and these are the messages which need to be spread amongst the students, amongst the teachers, amongst the parents, that if such a thing is happening, action needs to be taken. Now, what are the protective factors against suicide? Recently, we have the government of India has come out with the National Suicide Prevention Program.
And this is has come in 2021, and that's a very important document which they have come out with. Different policy initiatives being taken by the government of India. And early primary prevention, that is a thing. And early primary prevention, there's one term called resilience. Resilience means a kind of emotional strength. Resilience building from the early stage by training young children. So making the children strong in dealing with the negative emotions, that's very important. Negative emotions, and also they strengthening their problem solving skills, their conflict resolution skills, and non-violent handling of disputes. So these are the things, and all these things, strengthening resilience that helps in negating the risk of suicide. Then availability of psychosocial support for any emotional disturbances, access to treatment, and restricted access to means of suicide. Like, for example, the bridges across the rivers, they should be covered with the height, so that the person, nobody can use the bridge to committing suicide. High-rise buildings, they should have some kind of restrictions that people are not able to jump from there. Controlled sale of pesticides. So these are some of the methods which, and Government of India has also taken some steps in this direction, especially sales of the pesticides have been restricted. So religious and cultural beliefs, like suicide is relatively uncommon among the Islam. Now this message, live life, this shows, summarizes some of the methods of suicide prevention, like less means for suicide, for attempting, for committing suicide, like less means by restricting access, as I said, access to the bridges, access to the pesticide, access to the firearms, access to the high-rise buildings. Interactions with media needs to be responsible. It's not that media is publicizing the methods of committing, someone has committed suicide and the media is constantly showing that 4% committed suicide by using this means, and that leads to the copycat suicides. In fact, this is something which happened in our institution also in 2020. There are two events which happened in the background of COVID. One of the persons who was admitted in the Safdarjung hospital was under observation, and this person jumped from the 3rd or 4th floor and died by the injuries. Now, one of our students, two of our students, one of the students who was admitted with us and had been discharged after treatment and had submitted his protocol of MD thesis, and one day he suddenly disappeared. And same way, another student, both of them, they committed suicide by jumping from one of the highest floors of their multi-story hostel. So these are some of the things which we need to be careful. Early identification of emotional distress, evaluation, so and providing help if there are any mental health issues. So these things, they would help in this message comes from the live life. So leadership has also to the political leadership, they also need to be, the policy decision need to be made, taken in the background of, say, increasing the psychosocial support services, mental health support services. So these are some of the steps which can help in preventing suicide. So some of the methods which can be helpful by restriction on the methods to commit suicide: installing barriers at jumping hotspots, as I was mentioning, bridges, balconies in high-rise building and towers, CCTVs at other prone sites. This also helps in suicide prevention. Restricting availability of pesticides, one of the very important steps which was taken by the Government of India. Limiting over-the-counter availability of medicines and short duration prescriptions by doctors. Government of India banned the registration, production, distribution, and sale of 18 pesticides in 2018.
and it's being further expanded to 27 other toxic pesticides. And there is some evidence from state of Kerala showing a reduction in suicide death rate as a result of pesticide ban. Resilience as a protective factor I mentioned, and this is something which needs to be built up from the early childhood. How to deal with the adversities, how to deal with the problems. Putting a feeling of optimism amongst the growing child, growing student. Optimism acts as a helps in enhancing resilience and also acts as a protective force against suicide. Bringing a feeling of thought of meaning and purpose in the life. Now, a child who has been constantly being pressured to go for engineering or go for medicine, engineering and medicine are not the only thing in life. There are so many opportunities, there are so many professions where the child can access, where the student can access. So depending on the child's capabilities or interests, so the parents need to recognize this. They should not be pressing on the emotion, on the academic achievement and the choice of academic. Now there are so many options available. So social support, religion also is one of the very important factors which helps in strengthening resilience as well as protects against suicide. Religion helps in religion and spirituality help in dealing with the stress. So there are a number of methods by which we can enhance the resilience. One very important example of the policy decisions is which was taken up by the government of Tamil Nadu some time back. As we know, India records an increase in adolescent suicide deaths in June and July each year. This is a common, this is not an uncommon news item. When the results of the board exams come, and sometimes what happens just before the result, the day before the result, one of the students commits suicide, and next day it's found that that student has done so well in the exam, but he was nowhere because he had already died, he or she had died. So there is, we have so much of stress at the time of declaration of the results. Central CBSE, the Central Board of School Education, and the state education boards, they in the last, I also appeared in one program way back in 2004, I think, one of the suicide prevention helplines. These are in existence for nearly 2 decades. So this is very important policy decision by the state government to help in preventing suicide. The state of Tamil Nadu had introduced a system of supply exams in 2004, allowing students to resit in the exam the same month the results were declared. So by this measure, the students won't lose 6 months or a year, or they would be able to appear in the exams, the competitive exam, the same year. So that was a kind of very important policy decision which was done by the state of Tamil Nadu, and this led to reduction in related suicide deaths by nearly 50% in the state. So these are the kind of policy steps which are required at the level of the state government. There is a dropout, so I just wanted to ask you. Yeah, I think I'll give some time. After this, if you are okay, then otherwise I will. I have some other lecture to do. Yeah. So now, are suicides preventable? Yes, after definitely. Definitely, all suicides are preventable. Dengue fever. No, depends. Almost 8. That's okay. That's fine. 80% of people who commit suicide, they do so for emotional and mental problems. Yeah, I'll deal with it. I'll invite you. I'll invite you to present. Be ready after this. Okay. Okay. So they can be helped. And depression is the biggest cause for suicide, and depression is one of the illnesses which is treatable. We have very effective treatments available. And now, unfortunately, we have a large treatment gap for the person with depression. Nearly 85% of the people who have depression, they remain untreated in our country, in India. So creating awareness about
mental health issues, about that mental health issues and depression are often in the background of suicide. So that is very important. And teachers are the best messengers for this, who can help in identifying that so and that's one or more of their students are having mental health issues. So parents, they need to be watchful. They need to spend more time with these days with the smaller families. That kind of emotional support sometimes is lesser because both the parents are working, so they are not able to spend quality time with their child. And we should not ignore any statement about suicidal intent. But every statement about the suicide intent that shows a cry of help. So I'd like to conclude here so that we have some time for discussion. For suicide prevention among students, teachers have a very strong role. Then parents and the peers and the friends, the schoolmates, the classmates, they have a very important role. So we need to be watchful amongst our friend circle, our students about this. If there is any change in the habit, the day-to-day functioning of the child, so that needs to be watched. Parents need to keep their expectations at a reasonable level based on the child's interest and capabilities. Now, if child is scoring just 58% or 60% of marks, so the parent should not expect that the child is going to get an admission in an IIT or one of the leading medical schools. So we need to see which area the child has capabilities, so that the child should be given that education in that background. Need to offer emotional support. Any attempt of suicide, any suicidal gesture, that should not be ignored. That's a desperate call and for help and to escape the unbearable pain. And most suicidal individuals, they would give some kind of warning signs. And these warning signs need to be recognized and a person needs to be offered help. So we need a multi-dimensional, coordinated, multi-agency, multi-phase and multi-departmental approach to bring this psychosocial epidemic, I would call it as a psychosocial epidemic, under control. With this, I thank you. So I would be happy to answer questions. Thank you. Thank you, Dr. Chedda. It's wonderful, very comprehensive presentation in which you discussed relevant causes. Media report is very important. As we know, I must highlight, probably we need to, I was doing a workshop yesterday with Prayagraj University. The professor of professors, Dr. Tripathi, had organized, and I had a conversation with him, and his submission was that media sensitization, how to report suicide, is an important piece of work which is not so much taken up in our country by experts. And at some point of time, we would pay attention to it and invite them. In fact, we have a workshop with media on 9th of this month. Hopefully, if I get an opportunity, I will bring forward this point. Dr. Chedda has very rightly taken it out. Media is potentially very influential in making opinions and taking messages to people. And if we can utilize the power of media in a positive, gainful manner, I'm sure the problem of dealing with unawareness, denial, stigma, unawareness can be simplified far more easily, But that's a different discussion, and thank you, Dr. Chedda, for bringing this out. So now I keep the floor open for discussion and invites question. Is there anybody who wants to, any question to Dr. Chedda? Can you stop your screen sharing, Dr. Chedda? Yeah. Yes, Thank you so much, Dr. Chedda, for such elaborate presentation and so many informative facts about our Dr. Mishra is a faculty in Lucknow University. She is a very illustrious and dedicated faculty for our group.
and is looking after mental health promotion program in Lucknow University. She's our key resource faculty there. Yes, please, Dr. Mishra, go ahead. Thank you so much for the introduction. Yes, during the COVID time, NIMHAS, they initiated a capacity building workshop program for the psychosocial well-being, like known as the first aid of for the mental health. And as we know, like this requirement is so huge, like each and every person is a potential mental risk, teachers, students, and parents, everybody. So do you have any such kind of initiative to train the teachers or the parents to build up their capacity so that they can handle this issue whenever they confront with their children or their students? So that is my query. Thank you so much. Yeah, thank you. See, we have a student wellness center in our institute, which is in existence for almost, I think it was started in sometime in 2010. And we have a team of psychologists, full-time psychologists there, as well as there are inputs who have been gradually recruited over the period. And then we have, in addition, the inputs from our own faculty. And where we are providing services from 8 to 8. And these are located, these centers are, they are located within the hostels. So psychologists are located in the hostel, and so that's one thing. And during the COVID time, we also had come out with some programs. That was more of it was focused for the employees, but there was also we held for the doctors. But we don't have any full-time program for the teachers. So, but within our institute, we have Student Wellness Center, and where we are offering, and as you would be maybe aware, that we have a large pool of students which goes into almost, I think, should be more than 8 to 9,000 actually, because we have MBBS, and then there are almost 2,000 residents, postgraduate students, then BSc nursing, MSc nursing, and other diplomas. And so it's a very large, huge pool. And then there is a large, huge employee base where we are providing these kind of services. Yes, thank you. I, for the interest of the group, let me highlight that need for educational content to train people, whether it is training for life skill or training for, say, counselors training program or gateway counselors training program, our teachers training program, our family physicians training program, our nurses training program. There is enough information and resource available which says there is a strong need to develop culture-specific teaching module. And this is one of the aspects which our group has seriously taken it up. We are in the process of developing these educational modules. We are aspiring to set up an online kind of an academy where we can provide short duration as well as long duration courses for providing orientation to parents, providing orientation to students, providing policy details of the policy document which governments have prepared, providing how mandate for different international organizations can be translated into local uses, particularly when we are talking about what is the value of exercise and physical health, etc. All these pieces are, it is not possible to implement without developing proper, credible and informative educational content. We are collecting faculties and requesting them to join us to prepare these modules. And we are in the process, and I am sure in about 6 to 7 months' time, we will be ready to launch at least 4 teaching modules. One for the teachers, second
for the health professionals, third for the orientation for general public and parents, and fourth for the students to have faith in life skill and positive psychology. Well, all of you are invited to provide good inputs there, collaborate, cooperate, establish partnership, and आप अपने समय का जितना इसमें होम करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. Yes, कोई और सवाल हो तो बताएं, please. Any more question? Okay. So, Rakesh ji, Dr. Chadha, मैं पूछूंगा. See, the problem of students, suicide in medical student, I was reviewing, is facing a severe challenge, you know. Last month we had somebody in Mumbai who was a postgraduate resident in medicine. He killed himself. When I see the causes, one of the main challenge which is emerging is the relationship and duty hours, etc. So I think your comments are very valuable for information for all of us. Please, can you elaborate on this? Yeah, I think if we compare the teaching or duty hours now with something which was there in 1970s or 80s, the duty hours were long even at that time. Yes. But students going for this step, that was not a common thing. Mm-hmm. No, reason being relationship issues, as you just mentioned. That's one very important cause. In fact, the instant messaging in the media, in the virtual media, the WhatsApp and Facebook, and so these have been, in fact, more damaging in this because earlier people would talk to each other physically, face to face. So that would save, because you get more emotional warmth in that kind of relationship. Now, the other thing is, I especially mentioned about the mess, eating in the mess, eating together in the mess. That was a big stress buster. Yes. Because once we are eating together, and now everyone is ordering on online. There are online portals available for everything. So people would be eating in their room, or say they won't be coming to the mess. So there's something which has led to this kind of absence of discussion. People don't discuss the problems with each other. And the other thing is definitely the competition towards getting a job, then there are further so many super specialization. Earlier times, the people would be happy after doing MBBS or maybe the post-graduation, and they would settle in the job. Now, that competition has increasing, so ambitions are increasing. So all the corporate sector has further, corporate sector in the health, that has further brought more competitiveness. And so these things are, I think, a lot of it is damaging to the mental health. People are not sharing with each other, not sharing in the physical mood. So that has led to, and they are often avoiding the consultation with the mental health. Though mental health services are much more and more services are available everywhere. But despite that, people are avoiding that. So I think we need to sensitize ourselves. We need to erratic sleeping hours. That's another thing. People. In earlier days, you won't have any TV channels or radio channel. Radio news would finish. Radio program would finish at 11 p.m. So you could these days, anytime you at 3 a.m. the person is watching a movie. So these things are definitely affecting. They are very creating more risk for emotional problems, and then definitely the suicide risk. Yeah, I will just share with you a little bit of something which I feel is important, and I think the relationship issue and the life of doctors, I don't know, but report after report, even if we see the suicide amongst medical professionals, that is also showing a very rising trend and showing a kind of problem that not say the bond, like you said, eating together in the mess. Relationship we thought
would be a strength for people to, 1 + 1 is equal to 11. That was the concept of relationship. But it has, so probably the skills to handle relationship is becoming a challenge. Now, whether it is, I see a lot of things in the Western country here where I work. One of the prime cause for para-suicide or suicide attempt is my relationship is broken. And you have young 16, 17, 18-year-old boys and girls standing in emergency room for assessment with overdose with marijuana and number of other molecules put together. So are we seeing an epidemic of inability to handle the issues of life in youngsters? In other words, are we not training them to handle life with care? If I summarize the whole thing, as Dr. Murthy was talking, Dr. Tiwari talked, you spoke, we heard Dr. Mishra, all opinions put together, and if I say, let's keep mental illness little aside, and we say, where is the problem? Are we facing one set of problem is that we are unable to train our children how to handle emotionality, how to use their intelligence, how to develop social network, how to use. I see many people have social resource, but the boys are unable to reach out and make use of that in times of crisis. What would you say, Dr. Chedda? What message you would like to pass on in this context that I have said? Yeah, I think this is something. I would give you one example. While I was working in England in 2004-5, in fact, 2004-5 and 2023, again, there is a much difference in the social structure. So in the first few days of my clinical interactions, I would ask about how long, I would presume one male and one female are coming, they would be husband, wife, or but after just 5-6 days, I stopped asking, presuming that. I would ask them how long you have been living together. So that was a question to know that, so that how much information I can ask from the other person who has come accompanying the patient. Right. In my that 14 months I was there, one couple came and they said we have been living together since 40 years. So they were husband wife. So that's the only time that I was able to get that kind of answer. So our relations have become so fragile. And in fact, in the younger generation, it's rarely we'll find that there is a stable relationship between two persons and which matures and they remain together for 3 years. And so it's a part of, I think, changing social structure. So I'm not sure how much we can, what we can do about that, because our media, movies, and the serials, and so everywhere you're finding that kind of message. So it's a part of changing social values. No, I fully agree with you, but my concern is that if the cause is there and we are searching the cause somewhere else, we will be missing the point and a lot of damage will be done by the time. Probably it might be better to hand over the skill training, life training in the hands of gurus who can influence families, couples, marriage, economy in the family structure, rather than we shouting from top of the world that look, we do the job of suicide prevention, listen to us. Probably our job might start from early intervention of first symptom of disorder, rather than are we encroaching upon, are we expanding our area of professional intervention far too deep, where somebody else is required to do something? I mean, it's a thought which occurs to me that as we are trained as professionals to deal with human problems of human behavior, human mind, human brain, etc. But
the pathology is originating from psychosocial context within the four walls of human values and family. I think here something is important is that it's not only the mental health professionals who can take steps in this sector. Here comes the role of social scientists, role of religion, role of political leadership, and the community leaders. So there's so many people, because all these they need to be involved, so that steps can be taken. So bring stability in the relationships, and don't go for the unstable kind of thing. So it's social values need to be created actually. So, and for social values need to be created, it's basically the community leaders who can take a kind of model here. तो समस्या समाज की बहती हुई धारा में है, और उस धारा को कौन से स्वामी विवेकानंद बदल देंगे और कौन क्या वैज्ञानिक रूप से करेगा, हमें उस दिन तक इंतजार रहेगा, क्योंकि हम या तो कोई ऐसी नई शक्ति सामने आए जो प्रभावित कर सके बहुत से लोगों को, बच्चों को, उनके माँ बाप को। सबसे जरूरी ये है मेरे ख्याल में कि माता पिता को अपनी लालच पर कैसे कंट्रोल आए। वो अपना सब कुछ लुटा कर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं बच्चों को प्यार करता हूं, उनका भला सोचता हूं, जबकि वे ये भी नहीं जानते कि उनके बच्चे की सही क्षमता क्या है। There is no mechanism to examine the potential of a student to withstand the stress of examinations, whether it is PMT, JEE, or whatever. Somewhere I have spoken, mark sheets do not speak about capabilities. और सारी बातें डिसाइड होती हैं। परिवार में कहा जाता है कि 92% 10वीं में नंबर आया है तो लड़का बड़ा ब्राइट है। लड़का जरूर ब्राइट है, मगर उसकी एक फैकल्टी का टेस्ट हुआ है 92%। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है, वो कितने दिन भूखा रह सकता है, कितनी रात खड़ा रह सकता है, कब रोता है, कब मांगता है, कब जागता है, उसकी भावनात्मक जरूरतें क्या हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और हम ये भी नहीं जानते कि इनका टेस्ट करना कैसे है। हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने भी इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है कि हाउ डू वी टेस्ट द साइकोलॉजिकल वर्थ और द कैपेसिटी टू डिसाइड whether Mr. X will develop a problem, whether Mr. X will not develop a problem. Who is vulnerable, who is not vulnerable? Shall we decide the potential depending upon how vulnerable? We have to decide some way. There has to be some parameters. I mean, tomorrow the parents are going to ask, okay, doctor, tell us, how do I decide whether to opt for a quota institute or not to opt for a quota institute? And we have, believe me, we have no answer. It is very unfortunate that, I don't know, correct me, Dr. Chadha, if I'm wrong, no study, 13,000 students have died. More than 1 lakh of students have attempted suicide in the country. And they are being recycled into 1 attempt, 2 attempt, 3 attempt, etc. But we do not see any national project where we can vouch and say, these are the causes, this is the answer. I don't know what to say. Who is going to do that? Who is that responsible officer? We all are, quote unquote, enlightened people, responsible people of society. People come to us to seek guidance, and we have to provide that guidance based upon number of assumptions, using the studies, what happened in the United States, what happened in China, what happened in Philippines, what happened in Sri Lanka. Why do we not have, my question is to every socially conscious person, including politicians, why do we not have a project and a study which can tell us what is the phenomena of student suicide, what it is? I remember when former suicide came up, our
tallest leader those days, Professor N.N. Wig, in 1976, was given the task of heading the first commission on farmer suicide. I have seen that report, an excellent report, but at least the government or somebody in the government got interested, handed over the job, and something rolled out. But today, in 2023, when there is so much of awareness on all fronts, media is writing. Social media is full of. But do we have any authentic report? Dr. Chadha, would you like to comment on this? What I've said? I think, no, if we say that government has not taken any step, that would be wrong, because just in 2021, which I shared, that government India has come out with a national suicide prevention policy. Yes. It's all 70-page document, and which highlights all these issues, and then government is also taking, like spreading the national district mental health program, the wellness clinics, health wellness clinics, so which has a component of mental wellness. There have been introduction of the mental health helplines. So steps have at the national level. So certain steps have been undertaken in this direction. So it's not completely that, but social structure, that means what we are talking about, the social values and relationship. So those are some of the areas where initiatives also need to be taken in those directions also. Problem of substance use among students, that's also one of the growing problems, and which also has strong association with substance, with the suicidal risk. So there are areas, but problem is so huge. I mean, country like ours, we need much more steps. It's very big country, lot of people, but still, I think it is job of every school and every teaching institution to frame their rules, regulation, practices, traditions, and follow it through. I'm sure I must comment upon the suicide prevention policy, long overdue. I remember asking for it, and our forefathers from time of Dr. Venkavarao asking that there is no policy. Last 40 years, but fortunately that the government has framed it and signed for the social change. And by 2030, I think they are committing to reduce suicide by 10%, and hopefully it will happen. Good luck, and whatever we can do, we will definitely participate. Okay, Dr. Chadha, thank you very much for coming to us and talking to us, to our group. It is a great encouragement to have you on the board and faculty, and you yourself so illustrious in your studies, in your academia, and beside that, you are heading most important institution, which is opinion builder in the country and in the world. We look forward to you, and we solicit your support for future as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. So now I invite, may I request Shruti Sinha to, are you there, Shruti? Yes, sir, I'm there, sir. Yeah. The next lecture was due by Dr. Shailesh, but he became unwell and he was in the hospital. So my apologies, wish him good luck. And that's why I requested Dr. Shruti. Dr. Shruti's lecture is due tomorrow, but I have requested her to take the floor today. She is a consultant psychiatrist in Apollo Hospital, Lucknow, young dynamic practitioner and academia, trained from King George's Medical University, Lucknow. And she is going to give us her thoughts and her understanding about adolescent suicide. She is particularly interested in child and adolescent suicide, and she is going for a super specialization course as well, as I am given to understand, and wish her good luck for that. So Shruti, over to you. Please share your thoughts, and then we will discuss together.
Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here to discuss about, after the wonderful talk by Dr. Rakesh Chadha and also the discussions with Dr. Amresh, my understanding would not be with so much of experience, but yet I would like to explain a few points with as much understanding that I have. With your permission, sir, can I share the slides? Yes, please, please. Are you able to get through? Yeah. Yeah. I hope they are visible, sir. Yeah, they are good. They are good. Go ahead. Yeah, thank you. So my topic is on a program for managing adolescent suicide. So I'm basically talking about what all would be required, like we had in the previous discussion, that there is a need to address this problem at a grassroots level. So what would be required if we design a kind of program for managing adolescent suicide? I would be discussing under the subheadings, what are the present public health concerns, what are the current psychological problems amongst this age group, and how are adolescents different, and why are they more predisposed for such conditions, and what would be the pathways for enhancing mental strength in adolescents. Now, coming on to the public health concerns, the current global situation, I just want to give an overview. 1 in 6 people today globally are between the ages of 10 to 19 years. And it is estimated that 1 in 7 out of this population experiences mental health conditions. So which makes it 14% of our adolescent age group globally experiences certain mental health problems. So the consequences of failing to address adolescent mental health conditions can extend to adulthood and can limit the opportunities to lead fulfilling lives as adults. So this is a general idea that how important it is to address the situation in the adolescents. Like it has been discussed in the previous discussion, there has been an increase in the number of students suicides globally, as well as in India itself. Now, coming to the current psychological problems in adolescent age group. Just to get an idea, we know that what are in general, what are problems like depression, anxiety, and what are the mental health issues faced by people in general. So in 3.6% of 10 to 14 year olds, and in 4.6% of 15 to 19 year old, there has been a predisposition of anxiety. This is a global data. Depression is estimated to occur in about 1.1% of adolescents, which is the 10 to 14 years age group, and 2.8% of the 15 to 19 years old. So we can clearly see as the age advances and in the later adolescent age, there is more chances of depression. There are also behavioral problems. Attention deficit hyperkinetic disorder occurs in around 3.1% of the 10 to 14 years age group. It is this is a disorder which is which limits with the age, and so the prevalence is less in the 15 to 19 years age group. And conduct disorders occur in about 3.6%. Now, coming on to the more important areas, risk-taking behavior. So risk-taking behavior includes both substance use as well as sexual risk-taking, which is predominant in this age group. 18 to 30% of pediatric patients screen positive for substance use or risky substance use behavior. And the prevalence of heavy episodic drinking has been seen up to 13.6% in the 15 to 19 years age group. Also, many adult smokers report that their first cigarette smoking was started before the age of 18 years. So clearly, adolescence is a time where people are exposed towards substance use. Cannabis also is the most widely used drug using the young people, with about 4.7% prevalence in the 15-16-year-old age group.
Now, coming on to our topic, suicide and self-harm. Suicide is the fourth leading cause of death in the older adolescents. And like Dr. Rakesh pointed out, it is in our country, it is the leading cause of death amongst the adolescent age group. Suicide attempts represent less than 5% of injuries treated in the trauma centers. And most adolescents that have suicidal thoughts do not progress to suicidal attempts, but they account for 26% of the future suicide attempts. So, which can occur even in the late adulthood. So it is important to address any first attempt or suicidal behavior or suicidal attempt. Also, it is seen that 68% of adolescents and young adults who attempt suicide never report to have a prior suicidal thought or behavior. Now, this is an Indian study which reports the suicidal behavior in adolescents, and this subgroup analysis revealed that in different regions, the variation was there. So there was more suicidal ideation reported in the south rather than the north, east and northern part of India. Although, like Dr. Rakesh rightly said before this presentation, that it could be because of the lesser reporting from the northern states of India. And there was also a higher prevalence amongst the educational institute-based settings and the urban areas, which could be because of the pressure that these children feel during the education and in the process to succeed. So both of these situations could be the reason for such a reporting. Now, coming on to what are the risk factors for suicide? Exposure to any kind of violence, even intimate partner violence, and any kind of suicidal behaviors is the most important risk factor for suicide. Substance abuse and acute intoxication is again a risk factor. History of adoption also predicts towards risk factor for suicide. Physical abuse and neglect is a major risk factor. And experience and perpetration of bullying is also a very common factor for suicide behaviors. Pathological internet use is another problem which we are facing as a society, and it can also lead to risk factors for suicide. In the past, we have seen a few internet games which led to suicidal behaviors among adolescents. So this is a very important area to be targeted. Also, certain specific kind of injuries like traumatic brain injuries or spinal cord injuries, they are also seen to predispose for suicide. So we need to address the issue of depression in any chronically ill patients and adolescents with injuries, because that can also lead to depression as well as suicidal behaviors. Now, there are certain mental health disorders which by themselves are risk factors for suicide. Most importantly, depression, also post-traumatic stress disorder, which has been on a rise since the COVID epidemic. Any kind of sleep disturbances for a long term might also predispose for risk for suicide. Bipolar disorder, which has a subgroup of depression by itself, can be a risk factor. Substance use disorder, like we have already discussed. Also, certain kind of psychotic symptoms, especially any kind of commanding hallucinations, might lead to risk for suicide. In general, impulsivity or aggression, these traits when seen in adolescents, they can lead to suicidal behaviors. Now, just having an idea of how adolescents are different and why are they more predisposed for suicidal behaviors. Adolescence, like we know, is a transition phase between childhood and adulthood. And there are significant physical, social, and psychological changes during this period. Also, there is a rapid neurological development, and this leads to associated vulnerability to a range of positive and negative influences during this period. Also, in the present context, adolescents are very much concerned about their body image and their appearance, which undergoes a lot of pubertal changes. So this could be another factor which leads them to things like eating disorders and consequently to behavioral problems like depression and suicidal behaviors. Factors leading to vulnerability of adolescents to adverse experiences. So we were just discussing about there are many socioeconomic issues which also predispose adolescents to adverse experiences. So situations like poverty, conflict, community violence,
forced migration, gender inequality, humanitarian emergencies, and unstable families. So these are issues which have to be addressed at a larger level, but these definitely predispose adolescents to adverse experiences and might lead to conditions like depression and suicide. Now, there is another cross-sectional study about suicidal ideation, attempt, and determinants in young adults in the state of Meghalaya. And again, it is mentioned that there was an urban predisposition, people with less family members or unhealthy relationship with parents, stress, complicated relationships. All of these issues have been discussed by our senior doctors before, and all these problems can lead to suicidal ideation and suicidal behaviors. Poor adolescent mental health can itself lead to several conditions like risk-taking behaviors, self-harm, substance use, risky sexual behaviors, violence, and definitely the most important one, suicidal behaviors. Now, there are factors which can help with adolescent well-being, and probably this is what we were discussing when we were talking about building resilience. So adopting healthy sleep patterns, this might seem to be a very small issue, but when adolescents come to us, to our clinics, often they have a very disturbed sleep pattern and they don't realize that how the going against the circadian rhythm affects their mental health as well. Exercising regularly, again, a very small concept, but it is leading to epidemics of diabetes and other non-communicable diseases, which is a very important part of not only physical but also mental health well-being of the adolescents. Now, developing coping, this is another area which needs to be taken care of, because nowadays adolescent population, there is a very limited coping skills. So there needs to be more coping skills and more coping ability in the adolescents to help with their mental health well-being. In general, learning problem-solving skills can also lead to a well-being, and improving interpersonal skills. There is often, like we discussed, we have shrinking societies, and adolescents are, getting segregated, and it is okay to have a different room, to be a part of a small internet group and not having real friends. So all this can actually lead to problems with the mental health being. So interpersonal skills are another thing which we should work upon in adolescent age group. Learning to manage emotions. This is also a very important aspect. Adolescents, if they don't recognize their emotions and don't manage them well, they often lead to harmful behaviors like self-harm or risk-taking behaviors and impulsivity. All these things in the longer run can lead to suicidal behaviors. So this is, or in general, we just need to lead to manage our emotions for a mental well-being in not only adolescence, but later in adulthood as well. Also, protective and supportive environments are definitely helpful for a mental well-being of an adolescent. Now, there are other mental health determinants like exposure to adversity, any kind of adverse situation in the community. We are in an age where a part of the world is experiencing war, experiencing poverty, experiencing climate crisis. All kinds of adversity can lead to mental health, can affect the mental health. Pressure to conform with peers and exploration of identity. This is a major crisis or major factor which is different from the other age groups, like we discussed, because it is a transition towards adulthood. This is the biggest factor which adolescents face in the general mental health. So adolescent crisis and the ability to deal with their peers as well as their own identity needs to be addressed at every home, by every parent, by friends and well-wishers. Media influence is a very important influence. Like we had discussed about copycat suicide, definitely a wrong media influence can lead to a worse mental health outcome. Gender norms, quality of home life and relationship with peers, in general, they all lead to, they determine the mental health of adolescents. Now, there was an assessment about adolescent suicide ideation. So
the study had concluded that a higher proportion of adolescents with suicide ideation and past suicide attempts reported it reported imagery in their ideation rather than an attempt in the past. So in adolescence, it might not be very long that they had a suicidal ideations. They might act on their suicidal ideations very quickly and very fast, as they are more prone to impulsive behavior. So this might be another area where we need to address while forming a program for adolescent health. Now, sorry. Other risk factors for adverse mental health is harsh parenting, early and forced marriage, and also adolescent pregnancy, which is on the rise nowadays. Any kind of discrimination or exclusion. Orphans are at a greater risk for adverse mental health. Lack of access to support and services is a very important factor. When we discuss challenges, this can be a big challenge in a country like us. Any kind of physical problems like poor nutrition, non-communicable diseases also can affect the mental health of adolescents. Dropping out of school is something which should be taken seriously, because that can always lead to adverse mental health outcomes. Now, there are certain tools to assess psychopathology in adolescents. So when designing a program to address adolescents, we should have proper measures to screen for suicidal behavior, so that we can find out which adolescents to address and which are more severe. So we can use these tools to address the screening issues. The patient health questionnaire is a 9-item questionnaire which screens for depression, suicide, and PTSD. And we also have an adolescent version of such questionnaire. Another item which can be used is the Ask Suicidal Screening questions. This is again a 4-item screening scale, which is designed to identify suicidal behaviors. For children, we have specific scales like the depression scale and PTSD scale to identify children with these mental illnesses. We can also use CRAFT or audit for existing substance use. Also, there is a Columbia Suicide Severity Rating Scale, which helps us get an idea about the severity of suicidal behaviors. Now, someone asked the question about how can you identify a child or adolescent with depression? So there are certain warning signs which everyone in general public should know about. Any kind of change in eating or sleeping habits, any frequent sadness, withdrawal from the family, friends, or withdrawal from the regular activities like going to school, going out to play, frequent physical complaints related to emotions like headaches, stomach aches, fatigue, a gradual decline in academic performance, and most alarmingly, a preoccupation with death and dying. These are warning signs of depression, and as we know, depression is the most important factor which can lead to suicidal behavior. So these warning signs should be educated to everyone, so that we can bring out the children and address their problems, so that they don't have any risk-taking behavior or suicidal behaviors. Now, similarly, there is PTSD symptomatology, which is more severe, and such patients have persistent, exaggerated negative beliefs about themselves. They blame themselves for a traumatic event, and they have a persistent negative emotional state, like seen in depression. They also report lack of interest in activities and inability to experience positive emotions. And most importantly, they re-experience traumatic symptoms, which can be in the form of nightmares or flashbacks. And they might have long periods of avoidance and emotional numbing, avoidance about discussing the traumatic event, or emotional numbing. So these symptoms also are a kind of warning symptoms which should be taken care and addressed before they lead to worsening depression or suicidal behaviors. Now, what are the factors which we need to address for in order to enhance mental strength in adolescents? So we need to have a multi-level approach. The delivery
we can have various delivery platforms like we discussed. Digital media is a very important platform in today's context. Health centers can be very important for screening such kind of problems in adolescents. So when often adolescents, they go to gastroenterologists or to other physicians with vague complaints, which often are indicators for hidden depression. So these are the patients should be referred to psychiatrists or psychologists to evaluate for their psychological problems, or if there is any major depression or suicidal ideation in the patient. In general, social care settings can also identify such adolescents. Schools can be a very important factor, an area from where teachers can pick up any kind of odd behaviors or seclusion or exclusion of the adolescent from their usual activities. Peer groups, if we can take them into consideration, they can be very helpful in identifying such adolescents who are having problems. Any kind of community groups, and most importantly, home and family. It is the problem of shrinking families and being excluded in the own family is becoming it is very evident nowadays. So the family members should not consider staying alone or staying in the room as a normal part of adolescent behavior. They should be mindful where the adolescent is getting out of hand or is being more alone or aloof than his usual self. Social media can have a major influence in adolescents. There is the study which there is literature which examines that there could be both contradictory evidence, that it could be a good as well as bad, but mostly the kind of reporting that is there nowadays, it leads to a bad influence in adolescent minds. Now, coming on to promotion and prevention of adolescent mental health problems and suicidal behaviors, there should be we should design program which can strengthen an individual's capacity to regulate emotions, and there should be alternatives to risk-taking behaviors. They should have good coping behaviors, so that if they are facing any emotional trauma or any kind of problem, they do not end into risky behaviors, but some positive alternatives. Building resilience for managing difficult situations and adversity is very important for promotion and prevention of suicidal behaviors. And there should be an overall supportive social environment and social networks, if that is feasible within this program. Also, if we could address the other socio-ecological problems like preventing trauma and adverse childhood experiences, promoting parenting skills trainings, establishing good family supports, strengthening positive coping norms, and implementing policies and laws that reduce access to lethal means, binge drinking, and like we discussed about high-rise apartments having barriers, or reducing the availability of over-the-counter medications. So all these policies and laws can help overall in helping with the adolescent suicidal behaviors. So there was also this study which showed that a direct intervention on the socioeconomic determinants of youth suicidal ideation positively affected youth mental health and reduced the suicidal ideations. Early detection and treatment, like in any kind of medical emergency or problem, we need to address the issue as immediate as possible. Also, avoiding unnecessary institutionalization is important. Over medicalization of this problem is important. Non-pharmacological approaches, if that they can be used, will be helpful in targeting the adolescents. And overall, respecting the rights of children is very important while managing the adolescents. So when we often have issues where patients with suicidal behavior
end up coming to the emergency room or to any kind of medical facility. During this time also, an immediate psychiatric consult or evaluation is very much important for such adolescents. And it is also important to ensure that the caregiver agrees to perform suicide safety measures at home. So removal or safe storage of lethal medication or firearms. And it is very important to have a surveillance of the patient, because any kind of suicidal behavior, there is a high chance of it to repeat. So this kind of psychoeducation is very important to be given to caregivers at the time of any such medical emergency, when they land up in medical emergencies. Also, they should ensure that there is an outpatient follow-up of such adolescent patients. And some of these may require inpatient psychiatric treatment if there is a serious mental health issue, and after the clearance from the medical or surgical care. So based on the amount of the symptoms that the patient has, he might require psychiatric intervention. On a broader basis, the key effective intervention that could be done would be limit access to the means of suicide, which involves lethal means counseling, interaction with media for responsible reporting of suicide. Like we said, it should not highlight the suicidal behavior or lead to copycat culture, but it should lead to responsible reporting and prevention of further suicides. Socio-emotional life skills should be fostered in adolescents, and early identification, assessment, and management of anyone who is affected by suicidal behaviors is very important. Early brief interventions on coping strategies for acute distress at index hospitalization itself is very much important. The kind of therapies that are available nowadays, they all can be helpful in some way to prevent suicidal behaviors. We have a range of options. There are psychologists which are trained, as well as psychiatrists which are trained in such therapies. And based upon the requirement, if the child requires, like dialectical behavior therapy is important for any kind of borderline traits or borderline behavior. Attachment-based family therapy for any kind of, we need to have a childhood history, a past history of the child, of how he has developed. If there are some issues, they need to be addressed to prevent suicidal behaviors. Multisystemic therapy involving all the family members is also important, because there are sometimes interpersonal issues which need to be addressed. An integrated cognitive behavior therapy is another way of therapy where individual problems and cognitive biases can be treated in the adolescent patient. Also, safe alternatives for teens and youth need to be educated. And if we could have a youth-nominated support team, that could be a great way of addressing mental health problems in adolescents. Now, the role of parents and peer support in adolescent suicidal behavior is very important. This is a study which highlights that issue. And they recommend focusing on strengthening parental and peer support and targeting programs addressing physical activity, bullying, loneliness, and other mental health determinants in adolescents. So overall, we need a multi-sectorial collaboration so that there could be knowledge sharing, exchange of methodologies and lessons learned, and sharing of suicide-related data and research, and also fostering transparency and accountability. So this initiative that we all are a part of can be a great way of using data and research in the West and trying to apply it to our own country in a way to improve the mental health of adolescents and preventing any kind of suicidal behavior. Now, what can be the barriers at the system level? Insufficient access to evidence-based treatment, lack of culturally responsive treatments, limitation in transportation options, and insurance limitations, and absence of affordable treatment options. So we need to address these barriers as well, so that we can address every adolescent in the country. It was also seen in the COVID epidemic that the problems of suicidal behavior and ideation increased. So
adolescence itself is a period of elevated risk of suicide, and during the COVID pandemic, there was a greater experience of suicidal behavior and ideation. There was a study where several factors were addressed, and it was seen that what all led to suicidal ideations and behavior. So again, many parents lost their job during this period. There might have been other psychological abuse in the family. There was closure of school, which was a very important determinant of the adolescent mental health. And several mental health problems, pre-existing mental health problems, might have exaggerated during this period. So all these causes could have led to suicidal ideation and behaviors in adolescents. Finally, I conclude saying that suicide is a leading cause of death among adolescents, and it is a big global concern. And the causes for suicidal behavior include not only mental health disorders, but socioeconomic issues as well. There should be feasible suicide screening in all medical settings, because once a suicidal behavior is a very big risk factor for further suicidal behaviors. And there should be no hesitation in asking directly any such kind of patient if they are having thoughts about suicide, if they're having thoughts about self-harm, and they need to be addressed immediately. A proper screening can help identify which youth is at risk for suicide, and they can be linked to proper psychiatric care. And a management would involve a multi-sectoral collaboration, preventive measures, as well as early detection and treatment. Thank you. Thank you for patient listening. Thank you, Dr. Shruti, for a very nice elaboration of the kind of programs and content of the program that we need to have. And before I start discussing with you, let me put it open to our group. If anybody is anybody having any question that or any concern or any comments at this point of time that you'd like to ask, discuss with what Dr. Sinha has presented? I know it's quite a few things are being repeated, but they are important, and I'm sure every presenter feels compelled to bring in that aspect. So, okay, I will begin by asking you, Dr. Sinha, that one aspect of young women in the age of 14, 15, 16, 17, the reproductive health, suicide behavior, mental disorder, the cultural values, self-harm, career aspirations, that piece is not very much discussed today. So would you take this opportunity to talk and give us your thoughts, how MENA, reproductive health, relationship issues in colleges in rural India, and the aspirational India, women in aspirational India, and suicide behavior. Do you find any link? What is happening? What does the data say? Any thoughts? Yes, definitely. This is an important area I have missed out in my presentation, but there are a lot of studies in this regard as well, and often seen in day-to-day basis during practice as well. Females definitely, and being a female psychiatrist myself, somehow they open up more to me, or I get more such patients. So they definitely have a predisposition, both because of the pubertal changes that they're going through, and it is also probably the age where they are expected to be most competitive in academic areas, and they are also battling certain kinds of stigmas back home from their own families and their cultures. So with all these things combined together, it is definitely a time of a lot of changes which female adolescents go through, and it definitely affects their mental health probably more than their male counterparts. And reporting of depressive symptoms or inability to cope is also seen more in this
in the female gender rather than the male gender. So I think an important part in the Indian context is, despite advancing otherwise, there are still certain cultural beliefs or problems which females go through. And even if students, female students in India are promoted to study and to excel and to compete with their male counterparts, but they might not get a similar environment back home or even in the community. So there is definitely more problems which they go through. So thank you. Incidentally, today is World Sexual Health Day. The WHO is right now doing a presentation and conference. You can see on your social media, the dialogue is at present going on. The issue is of great importance, because if we see the demography or epidemiology of suicide behavior, something is changing. Many women are attempting. The number of attempted suicide in women and men ratio is narrowing. You know, the mode of suicide and gender, this aspect is also coming into discussion. Of course, our people are going through a cultural transformation at every level, be it village, taluka, city, metro, whatever. There is a very strong force for social change. Now, in this, when you talk to, if I recap number of patients, their relatives, and young boys and girls that I meet in my practice and remember, they put their marriage and career far behind than career. That's one fact which is emerging, and even the parents have made peace with this thought of the children. That no, don't talk about marriage and relationship at this point of time. No children. I am 25-year-old. That's fine, but I have a career to look after. Having said that, this from 20 to 25, 26, 27, the period in which they have the issues of relationship, covert or overt issues, when they emerge, whether they have learned the life skill, art of handling, really putting the relationship issue behind, are taking it forward, the two, the career and relationship together, sailing it through. It's a modern challenge of modern India, and we have been conspicuously silent about this issue in our families, in our colleges, in our institutions, even to our students. The dialogue doesn't come up when they frankly ask. Now, before I move forward, I will just take the period of adolescence as to why it is so important. There are 2-3 reasons which, besides whatever has been discussed since morning. Number one, that our brain is maturing in the age between 12 to 14 with a very high speed. Whatever left, say 7-8% of brain maturation is accomplished between 12 to 24 years. And this is the time when a very fast turnover. In fact, I would show you a video that adolescents present the second opportunity of neuronal change. There is excessive neuronal upsurge for neuroplasticity in this age, which gives them special opportunity to learn the skills better, and also gives them makes them special to learn how to cope with life challenges. And that's one reason you see the brain of women matures far early than boys. And
if we put the data of brain maturation, age and gender put together, you can reconstruct a brain and illustrate very nicely why women have a better equation, better skills for interpersonal relationship and understanding, maturing. I don't know whether I'm passing a statement, but there are studies I can quote that demonstrate early maturation of females in the age of 13 to 17, what boys would accomplish between 17 to 19. So the 2.5 years gap is well explained based upon brain biology. Now, this brain biology gives them special opportunities. But my concern is that because families are not aware about it, they might be aware about it, I'm not sure about it. But if we are able to emphasize this point, probably there could be different kind of dialogue and different kind of empowerment of female students. So if I have to make use of this property that in a classroom in number of medical colleges, we have this tripod model for mentoring, where senior students looks after junior students. Am I correct, Shruti? This model is Yes, in number of, which has been found successful. I don't know. Would you propose making a female student of higher class more responsible for the junior and will understand better? Will this biology, can this be put to use? What do you think? Dr. Sinha, what do you think? So the basis that you said about brain maturation, that is more apt. But pardon me, but overall it is a paternalistic society, sir. It's not only adolescents, but in adults also. I mean, there are a lot of discussions about people not accepting female employers and females in a higher position. I'm not sure if such a design would be accepted by the junior male students. But yes. Definitely, what we could try is, what my understanding says is, instead of putting a female in charge of, we could have more representation of females in the decisive panel, or if there is something like that. I mean, rather than making one person, which might not be acceptable, but definitely their interpersonal skills and their understanding could be made use of, their wisdom could be made use of while designing certain programs or whatever. Yes, the sir, reason I definitely. brought this context into discussion is because of a popular dialogue going around ki hum unhe samajhte nahi. You people don't understand, the current generation. Now, my belief is the answer to the problem is going to come from the students themselves. They are the ones who are going to tell us one day what is best way to deal with the crisis, to deal with the emotional crisis, what should be done, how to tell one's father, one's mother that I don't want to go to this tuition, I don't want to do this this particular specialty. I remember in my long career, number of boys who have told me to inform their parent that don't push me to NDA, don't push me to IAS, don't push me to this, it's not my cup of tea, etc., etc. So it's all in the common knowledge. But what is that which is behind a meaningful dialogue? That's the issue in front of the group and in every family. Now, when I say that we are opening the dialogue and the parents are asking simple question that, okay, we don't understand, you tell us what to do. So what can be done is a topic which we are dealing and having more discussion maybe tomorrow, and then I would
definitely try to bring in some more aspect about our work on resilience and positivity. And I can share with you that 7 years back, when Professor Dilip Jeste's thought came about positive psychiatry, that wisdom is a neurobiological construct in the brain, which was a news item in New York Times out of his research. So that's the time we formed a section in World Psychiatric Association. It is known as Section on Positive Psychiatry. So if you go on the website of World Psychiatric Association, you will see a section known as Positive Psychiatry, and in that there are a number of activities, and with the loaded research which is going on today in this field, when we say that we are moving from, illness is a very small construct in the life of wellness, if you see the panorama of this. So this section informs you about effect of positivity on human brain, origin of positivity from human brain, how brain behavior and mind work together in tandem, and how things can be controlled, what kind of therapy is effective, what therapy is based upon positive psychology, positive psychiatry, and whatnot, etc., etc. It's a whole new area of science which involves, we have collaboration with the neuroscientists, psychologists, psychiatrists, humanists, geneticists, and all basic sciences together. It's a very enlightened group, and anybody who wants to know more about it should connect there. So we'll be talking about my own interest on work on resilience. We'll discuss this tomorrow. Today, till we have our next presenter at about 7, we have some time. I will, so thank you, Shruti, very much, and I'll take it forward. Thank you very much for coming to us, and tomorrow again, you have an opportunity, we have an opportunity to listen to you further. And we need more young people, and I'm thankful to your teachers and mentors who introduced me to you, and you are here as member of the group. I'm thankful to you. Thank you for the opportunity, sir. Point of time that we need to discuss. It gives me an opportunity to welcome Dr. Patil. I've forgotten, I can see somewhere he has left now. Okay. Any question at this point of time, or any comments that, no? Okay. All right. So what I'm going to do is to share a little bit of some. Sir. Yes, please. Sir, this is Meenakshi. Yes, welcome. Go ahead. Sir, it's really a very nice presentation from the both speakers. Really so informative and so comprehensive kind of thing. Sir, I have one thought in my mind that Yes. everybody's ecosystem is of the ecosystem of every individual is different. Yes. As Rakesh Chadar sir said, resilience and is the major element to encounter this topic. I personally feel, because we have, so for every individual, when we go, their support system is different. For everyone, family is not the support system. For some people, it may be the peers, it may be some other area like that. So for every disturbances, life disturbances, or every panic points, they will get healed in some other points, right? So Right. what I feel, personally, what I feel is this is a multi-sectional, as Sinha ma'am said. Multi-sectional collaboration is very much needed. I feel that it can be possible by creating the awareness in all the channels, like parents, teachers, peers. It's altogether it's a kind of societal kind of awareness
has to be brought up, sir, to arrest this, I mean, like, to reduce this kind of suicidal activation and all. Yeah, this Yes. is my point. I think you have put it very rightly. As we say, suicide prevention is everybody's business. Yes, yes. It's Not not one. completely towards the mental health experts. That awareness should come from all the elements in the ecosystem, like from parents, teachers, and but is even in every sector. Yes. Yes, ideally, now there are issues that awareness. There are three issues in the society that we are dealing with. One is lack of awareness. Second is lack of information. And third is denial. The problem is somewhere mixed. For a lot of us, it is denial rather than unawareness. Exactly. हमें मालूम है समस्या क्या है, मगर हम ये समझते हैं कि ये बरसात का पानी हमारे घर में नहीं आएगा, ये आग हमारे घर में नहीं आएगी, तो हम अपने बच्चों को उस तरह से ये सोच के चलते हैं कि ये तो मजबूत है या इसके बारे में जो कुछ निर्णय करना है हम कर सकते हैं. Now this thought of playing with the gamble is something which is serious. Parents, as parents, I must know how to assess my own child to find out what is the psychological worth or psychological merit or psychological weakness present, which will interfere or not interfere in his career choice. Now, making career choice, awareness, denial, mental health information, depression, substance abuse, psychiatric symptoms, teachers' behavior, mark sheet achievement, number of seats available, the pressure of competition in exam, all put together, everything makes life of adolescence and early adulthood absolutely, it is chaotic, with very poor direction and very poor built-in system for stress management. आप अगर उनकी जिंदगी में झांकिए और देखिए कि वो कब बोलते हैं, कब बात करते हैं, किस तरीके से हंसते हैं, उनके तनाव का स्रोत क्या है, उसे कम करने के तरीके क्या हैं, खेल कूद, बातचीत, जैसे कि मैं everything. I'll explain a very small case. ये बात बहुत पुरानी है और एक किसी के, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लेंगे प्लीज जरा. एक फोन आता है हमारे हॉस्पिटल में एक काउंसलर को. ये बात है मुंबई शहर की करीब 20-25 साल पुरानी, और वो पूछता है कि एक लड़के का नाम लेकर कि क्या आप इसे जानते हैं. तो वहां पता बात चलती है कि ठीक है, आप थोड़ी देर बाद फोन करिए, हम देख के बताते हैं. तो मामला आगे बढ़ता है. पता चला कि ये 10th स्टैंडर्ड का लड़का, वो अपनी क्लास में बैठा था और उसने एक छोटे से पर्चे पे लिखा आई लव यू और क्लास में किसी लड़की की तरफ फेंका. तो उसके टीचर ने उसे देखा और उसे बुलाया और कहा ये स्टूल पे खड़े हो जाओ पूरे क्लास में, और आधे घंटे उसे खड़ा. स्कूल खत्म हुआ, ये लड़का घर आता है. इसकी माँ, ये एक कमरे के मकान में रहते थे, उसमें एक किचन है. किचन में ऊपर पाइप लगी हुई है और पाइप के ऊपर पानी का बड़ा सा टब रहता है जिसमें पानी स्टोर करते हैं. तो माँ ने उससे पूछा कि तुम कुछ खाओ, तो ये कहता है नहीं मुझे खाना नहीं है, आप जाके सो जाओ. और दिस बॉय गोज इन द किचन, uses his own tie to hang himself with the rod
fitted in the kitchen to hold the water bucket, water box. And he dies. Now, it's unfortunate to narrate this. I seriously wanted to avoid bringing in case reports because that becomes an emotional moment of content of discussion. But now let us see what is the profile. A 14-year-old writing a letter in the teacher's behavior, the punishment, the humiliation, the loneliness, no debriefing, no discussion, and suddenly there's a suicide. I'm sure everybody, each one of you is reading newspapers with such reports day in and day out, where things are happening impulsively. Something happens, children make an action which becomes disastrous. This is also an issue to think that why do children decide how to kill themselves, when to kill themselves, where do they get the information from, in what situation and circumstances they are motivated to make an attempt so that they die, not that they convey the meaning of distress, so that they attempt suicide, not make a para-suicide attempt, etc., etc. My submission is that the topic is far more complex than it appears. There are issues of mental health, there are issues about social health, there are issues about social relationship, the issues about cultural values, academic expectation, dealing with psychological factors like guilt, trauma, humiliation, availability of buffers, availability of merely presence of parent does not guarantee a dialogue between children and parents. Let's not be under any illusion that घर में माँ बाप बच्चे हैं तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है. जो बदल रहा है उसमें से संवाद का कॉन्टेक्स्ट भी बदल रहा है, वो भी यही चीज है. एनीवे, यहाँ पे मैं रुकूंगा. अगर कोई कमेंट है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँ. Okay. So now I will. Last month when we started this program, so we have compiled a small book of 500 pages. This is known as Handle Life with Care. और इसमें ये Amazon पे अवेलेबल है. आप मैं इसे डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं. Can you see this? No? Yes, sir. Is it seen or no? Yes, sir, we can. Okay. Yes, sir. So this is a book which is available at Amazon. And this book is having all information about suicide. So it's a 500 pages book, Handle Life with Care, which has latest information about almost all aspects. So briefly, we will see what are the contents. It cost, I think, around 499 rupees. Those who are interested may procure it by ordering from Amazon. It will give some good stuff which we have been talking as to what is the literature support for what we are talking about. In this, we have highlighted the Mansik Shakti program क्या है. तो मैं बताऊं कि this program has been developed with the help of my friends in Canada, in UK, and in India. So few months back, I had the opportunity, I came to Lucknow and requested my colleagues who very happily obliged me and got together, and
So our mandate is we do 4 to 5 kind of things. One is awareness program through online webinar conferences. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर महीने की 10 तारीख को शाम को 7 से 9 हम ओपन फोरम रखते हैं, जिसमें आप वेबसाइट पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। इस 2 घंटे में हमारे साथ कोई एक एक्सपर्ट होगा, और ये इसका मकसद ये है कि आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो हम आपके लिए प्रत्यक्ष अवेलेबल रहेंगे। तो ये भी एक कमिटमेंट है हमारा। जन जागरण के काम में हमारा 3 तरह का कमिटमेंट है। एक तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, एजुकेशनल प्रोग्राम। दूसरा ऑनलाइन संवाद स्थापित करना, और तीसरा पब्लिकेशन, दैट इज नॉलेज ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल। तो जो भी रिसर्च हमारे देश में हुई है या जो भी रिसर्च चल रही है, जो भी आज का विषय है, कंटेम्परेरी थॉट है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि हिंदी में भी पब्लिश करें। काफी कुछ करने का प्रयास चल रहा है, मगर हिंदी जैसा बहुत कठिन भाषा है डॉक्टर लोगों के लिए, और हम चाहेंगे कि लोग उसमें, जो लोग हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, वो हमसे जुड़ें और हमारी कुछ मदद करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वे देखिए मानसिक स्वास्थ्य की जो सूचना है, हम ये कहें, द इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ मस्ट बी अवेलेबल ऑन पेज 1 ऑफ द करिकुलम, क्योंकि किसी के लिए भी इससे जरूरी कोई चीज नहीं है। हमें ये जान लेना चाहिए कि आपकी और आपकी सफलता और जैसा जीवन आप चाहते हैं, उसके बीच अगर कोई खड़ा है, पहला और आखिरी खंबा वो मानसिक स्वास्थ्य का है, मानसिक शक्ति का है। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, मगर अगर आपने अपने अंदर पैदा बन रहे डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में लेट किया, देर किया, तो सब बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे लोग धीरे धीरे इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे पढ़ने वाले, कभी अल्कोहल में, कभी ड्रग्स में स्लिप होते हैं। और इतना ही नहीं, कम से कम 40-42% लोग जो सफल होते हैं, सफलता के बाद 10 सालों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित पाए गए। ये एसोचैम जो हमारे देश में इंडस्ट्रिस्ट की बड़ी संस्था है, उनके रिसर्च की फाइंडिंग है। इंटरनेशनली हम देखेंगे तो ये करीब 50-60% लोग जो सक्सेसफुल हैं इंडस्ट्रीज में, उनमें बाइपोलर डिप्रेशन, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, मैरिटल प्रॉब्लम, डिवोर्स, सेपरेशन एंड इकोनॉमिक लॉस, ये उनके सामने नई, वो एक शेर की एक लाइन है कि एक दरिया का सामना था जो एक दरिया के पार उतरे। तो आपने एक मंजिल पार की, सफल हुए, मगर चुनौतियां दूसरी तरह से सामने खड़ी पाई जाती। हमारे चर्चा का मकसद ये है कि आप अपने आप को इस तरह से ढाल सकें कि जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार पाएं। तो मानसिक शक्ति जो प्रयास है, इसमें संवाद है, कोर्सेज है, ट्रेनिंग मटेरियल है, ऑनलाइन एकेडमी की परिकल्पना है, और हम सर्विस कंपोनेंट, यानी कि यदि किसी को सुसाइड के थॉट आते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करते रहें, और जो भी मदद कर सकें वो करें। हमारा काम है कि लोगों में जो एक्सपर्टीज है वो इकट्ठा करके हम एक जगह प्रस्तुत करें, और कम से कम हम ये डिफाइन कर सकें कि
क्या नहीं करना है, क्या करने से फायदा होगा। ये हमारा कुछ मिशन है। अभी बहुत नई बात है, हमने सिर्फ ये दूसरे महीने का सेमिनार आज हम कर रहे हैं। पूरे 1 साल का कार्यक्रम हमने सुनिश्चित किया है। हमारे खुशी है कि बहुत से दर्जनों मेडिकल कॉलेजेस हैं देश के, जहाँ की रिटायर्ड प्रोफेसर्स, करंट प्रोफेसर्स, टीचर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रिसर्चर्स, सब लोगों ने हमें वादा किया है, उन्होंने अपना टाइम बुक किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग हमसे जुड़े हैं और अपनी बात कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनी जा रही हैं। जो भी लेक्चर इस प्रोग्राम में हो रहा है वो YouTube में कोर्स के माध्यम से अवेलेबल रहेगा। जैसे जैसे आपके सुझाव हमें मिलेंगे, हम अपने कार्यक्रम को उस तरह से इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो पहली बात हम यहाँ पे कहें, ट्रीटमेंट गैप्स इन स्टूडेंट्स इन मेंटल हेल्थ इन इंडिया। ये हमें ये समझना चाहिए कि यदि जैसे हमारे तथ्य क्या है, रिसर्च क्या कहती है, जो भारतवर्ष में रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि लगभग 10% स्टूडेंट किसी भी समय ऐसे हैं जो अपने दिमाग में, उनके दिमाग में आत्महत्या के विचार घूम रहे होते। लगभग 10 से 12% बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। लगभग, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लगभग 7 से 8% लोग ड्रग्स और अल्कोहल से परेशान हैं। तो अगर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो लगभग समझिए 5 से 10% मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अल्कोहल, सुसाइडल आइडिएशन एंड ओवर एंड अबव। जो भी रिसर्च हुई ये बताते हैं कि लगभग 40% बच्चे ये कहते हैं कि वी फील सीवियर स्ट्रेस इन द कॉलेजेस, और करीब 25% ये कहते हैं कि नाउ इट इज अनबेरेबल, वी कैन नॉट लिव विद दिस स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो क्लासेस में हैं उनकी क्या आवश्यकता है और उनकी ट्रीटमेंट गैप्स क्या है। सरकार ने कहा, या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, हमने काउंसलर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया है, आप बातें कर सकते। IITs में सुसाइड हो रहा है। सुसाइड इज द एक्सट्रीम रूथलेस एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बात यहाँ तक आनी नहीं चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे तनाव में हैं, वो चीख कर कह रहे हैं, और हमारी खामोशी उन्हें आत्महत्या की तरफ ढकेलती रहती। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि समय रहते शायद हमने उनके प्रश्नों का उत्तर उस तरह नहीं दिया जैसा कि वे उम्मीद करते थे। हर रिसर्च हमें ये भी बताती है कि हर वो शख्स जो आत्महत्या का प्रयास करता है, करने के पहले संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। और आत्महत्या का प्रयास तब होता है जब हम या आसपास के लोग उस सिग्नल को मिस करते हैं। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमें याद रखना चाहिए। People approach for help, they fail to get timely help, and they are then compelled to make an attempt. ये इतनी सीधी सच्ची एक लाइन में जैसे मैंने कह दिया है, इतना तो संभव नहीं है, इसमें बीच में और कई गैप्स हैं। मगर हमें छात्रों की बातें सुननी होगी। मगर क्या कॉलेजेस में ऐसा कोई अरेंजमेंट है? क्या हम उन लोगों से पूछते हैं? और जब ये चिट्ठी लिख के कहते हैं कि हमें तनाव महसूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए और किसे कुछ करना चाहिए? सरकारों को करना चाहिए, या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को करना चाहिए, या परिवार के लोगों को करना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? Whose life is, whose responsibility is anyway?
स्टूडेंट सुसाइड के बारे में बातें तो चल रही हैं, तो मैं दिखा रहा हूं कि इस किताब में हमने क्या क्या कवर किया। डॉक्टर चड्ढा ने बहुत डिटेल में बताया। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी एक नया आयाम है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने ये स्टेप लिया है और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा जरूर होगा लोगों के लिए। नेचर ऑफ सुसाइड बिहेवियर एंड चैलेंजेस ऑफ प्रिवेंशन, तो ये जन साधारण के स्वास्थ्य की समस्या है। तो जन साधारण, चाहे वो हम मलेरिया कहें या कोई और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहें, वो सारे फार्मूले सुसाइड की समस्या में लागू होते हैं। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो वल्नरेबल हैं, उनकी पहचान आवश्यक है। कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे घर घर जाकर हम ये पता कर सकें कि कौन तकलीफ में है, कौन तकलीफ में नहीं है। एटलीस्ट यदि हम इस पर ध्यान दें कि डेफिनेटली हाई रिस्क कौन है, तो मैं आपको बताऊं कि सुसाइड के मामले में हमें सूचना, जो भी वैज्ञानिक सूचना है, वो मिलती कहाँ से? इसका पूरा स्रोत जो है, ये जो लोग सुसाइड का प्रयास करते हैं उन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया जाता है, वहां वो एडमिट होते हैं। कुछ बचते हैं, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बचते, मगर जो लोग बचते हैं उनकी जो स्टडी होती है, लॉट ऑफ स्टडीज कम, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द पूल ऑफ स्टडीज ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड, pool of studies of repeated suicide and studies of postvention. Postvention जहां लोग मर गए हैं, उनके परिवार वालों से जब बातचीत होती है तो उससे जो समाचार मिलता है उसे हम कहते हैं postvention studies। फिर जैसा कि हमने कहा, मेंटल इलनेस से इसका बहुत गहरा संबंध है। लगभग 10 से 12% मानसिक बीमारियों के मरीज हैं जिनमें आत्महत्या की संभावनाएं रहती हैं। तो जब आप डिप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें सुसाइड का कंपोनेंट आ जाता है। तो ये हमारे दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम कहें कि who all are the vulnerable candidates? So one, somebody who has a mental disorder is a vulnerable candidate, definitely। हमें उसका इलाज कैसे करना चाहिए, किस तरह से वे प्रोग्राम बेस्ड इंटरवेंशन, यहाँ पे मैं ये बताऊं कि रिसर्च में वे कौन से तरीके कारगर पाए गए, व्हाट आर द एविडेंस बेस्ड मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। उसमें ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड काउंसलर्स, 4 लोग have been found to be very effective method। तो हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये संभव है कर पाना। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन has been found to be successfully correlated with success in treatment of suicidality। तो यदि हम यही डिसाइड करें कि जितने अस्पतालों में डिप्रेशन के मरीज हैं उनका ही इलाज ठीक तरह से हो जाए तो अच्छा है, मगर विडंबना ये है कि आइडेंटिफिकेशन रेट ऑफ डिप्रेशन इवन इन ए जनरल हॉस्पिटल इज वेरी पुअर। अगर आप देखें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के लिए आप अपने डॉक्टर के पास सालों साल लोग इलाज चलता रहता है। आदमी को कभी कभी डिप्रेशन 10-15 से 25% लोगों को वहां भी डिप्रेशन होता है, मगर कभी कभी तो उन्हें डॉक्टर साहब उसके डिप्रेशन का इलाज करते हैं, कोई कोई उन्हें रिफर करता है और अधिकांश लोगों को सिर्फ इतना कहा जाता है कि अपना ख्याल रखिए, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। नाउ दिस इज अनएक्सेप्टेबल। देयर शुड बी ए गुड सिस्टम ऑफ रेफरेंस इफ someone is developing depression and is already under medical care। तो इस तरह जो ट्रीटमेंट गैप्स हैं उस पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का भी काफी रोल है, मगर आज ये मौका नहीं है उस बारे में ज्यादा चर्चा करने की।
प्रोग्राम बेस्ड इंटरवेंशन, जैसे मान लीजिए हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम बना या अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना, इसी तरह जब भी कोई काम हम एक प्रोग्राम बनाकर उसका आगा पीछा सोचकर अच्छी तरह करते हैं, तब उसकी सक्सेस बहुत अधिक होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो कुछ काम सरकार ने डिसाइड किया है, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी एंड सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड अलाइनिंग इट टू द सोशल डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये it's a welcome move, and we wholeheartedly congratulate this government to do this, because we have been waiting for this kind of a change in our country. Life is not at all good, no point living feeling hopeless. Yes, Dr. Chetta highlighted hopelessness is an emotion which is a very authentic and valid marker for suicidal ideas. So if any boy is feeling hopeless for reasonably sustained period of time, people who hear, they must go into more detailed logic discussion as to why hopeless, what are the factors, what do you want, what can be done, and provide the treatment as and when necessary. Let me pause at this point and ask you if there are any questions that we need to address. Any comments or questions? Welcome. Before I move forward, we have our next speaker after about an hour, and then we have this time to discuss amongst ourselves. We have Hemant Dikshit. Hemant ji, would you like to come in and make a comment from Dikshit represents trust which is known as Freedom from Poverty Trust, and this is the trust which has established Manasik Shakti program. I am very proud of people, Dr. Dwivedi from Montreal and Mr. Hemant Dikshit from Lucknow. हेमंत जी, आप बात करेंगे? Can't hear. Good evening, sir. हाँ, बोलिए बोलिए. Sir, I am Dr. Sandeep Tiwari. Yes, I am yes. principal in Darbhanga Engineering College, Darbhanga, Bihar. It's a government institute. Yes. Sir, first I would like to appreciate your effort which you are doing for the betterment of our student, as well as the kind of tendency which students are carrying, suicidal attempt or this kind of mindset that can be counseled timely, so that we can prevent these kind of accidents. So, sir, but the popularity of this kind of program and the drive which you are conducting time to time, it should be spreaded in Bihar also. So I have discussed this thing with Hemant Dikshit Bhaiya. So certainly this time I have shared link with all principals. So next time what I will do, I will interact with DST or authorities, Department of Science and Technology, secretary, when secretary sir will circulate this event, then certainly principals are bound to take active participation and ensure joining of students, faculty members. डॉक्टर साहब, थैंक यू. हमें आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत है. हमने सिर्फ शुरू किया है, और ये हमारी क्षमता आपकी क्षमता में है. और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे माला की कड़ियां जुड़ती जाएंगी और दरभंगा से दिल्ली जुड़ेगा. जी. मैं आपको बताऊं, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विनय कुमार. जी जी.
डॉक्टर विनय कुमार पटना के साइकेट्रिस्ट हैं, बड़े प्रबुद्ध और प्रगतिशील विचारधारा के हैं जी। हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने फेसबुक पे मैसेज भी दिया है लोगों को जुड़ने के लिए, और वो कोई कार्यक्रम बना रहे हैं। मैं पटना आऊंगा नवंबर में शायद। जी जी। तब मगर हमें रुकने की आवश्यकता नहीं, पथिक वो है जो रुकता नहीं है। जी। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप झंडा लें, आगे चलें, जो कर सकते हैं करें, और हमसे जो चाहते हैं आप हमें बताएं। क्योंकि जी जी। मैं आपको बताऊं, ये जो समस्या है इसकी, मैं नहीं चाहता कि ये एक एकेडमिक डिस्कोर्स का कैप्सूल बन के रह जाए। जी विषयों में दो तरह के काम होते हैं। जी। एक एसोसिएशंस होती हैं, जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, तो वहां सारे रिसर्च, सारी एकेडेमिया बातचीत करती है। जी मगर जी। सवाल लोगों की समस्याओं का है, लोगों को जुड़ना है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के साथ साथ उन्होंने अमेरिकन साइकेट्रिक फाउंडेशन शुरू किया। जी। जब उन्होंने फाउंडेशन बनाया तो ये जो जिस साइकेट्रिस्ट के उनके पास करीब 40,000 मेंबर हैं, तो इसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। जी। तो जो भी देखिए, जो भी रिसर्च होती है, जो लोग करते हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो समझते हैं, जिनकी तरफ हम देखते हैं कि हमें किसी भी समस्या का हल समझ में आएगा, जी जी। उनकी बातें लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा काम है। जी जी जी। और ये काम इल डिफाइंड है। परिवर्तन बहुत सा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास वो प्रेशर ग्रुप नहीं है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं कि अमेरिका में एक संस्था है नामी मतलब नेशनल एलियंस ऑफ मेंटली इल। वो संस्था आज करीब 50 साल से चल रही है, और वो इतनी प्रभावशील है कि मेंटल हेल्थ का जो बजट है वो डिसाइड करने में उनसे कंसल्टेशन होता है। जी। तो देखिए, मैं कड़वी बातें आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रायंगल के टॉप पे बैठा है परिवर्तन करने वाला, वो है सरकारी तंत्र। जी जी। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, भारतवर्ष के समाज सुधार की कड़ी सरकारों ने हाथ में ले ली कि सामाजिक परिवर्तन होगा नहीं। हम शिक्षा कैसी देंगे ये सरकार डिसाइड करती है, कौन क्या पढ़ाएगा ये सरकार डिसाइड करती है, क्या नहीं पढ़ाएगा ये भी सरकार डिसाइड करती है, हर चीज के लिए, हर विषय के लिए परीक्षा होगा ये भी सरकारें डिसाइड करती। तो सरकारें घरों में घुसी हुई हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। और सरकारों से निपटना जब मैं कहता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों तक एविडेंस बेस्ड बातें पहुंचाना अपने देश में बहुत ही कठिन काम है। ये मेरी बातें आपको कैसी लग रही मुझे नहीं मालूम, बट सच्चाई ये है कि परिवर्तन तब ही आएगा जब, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये चिट्ठी लिखेंगे तो ये साहब आएंगे, यही फार्मूला हर विषय में लग रहा है। अगर मैं सवाल पूछूं कि हमारे ये जो ट्यूशन दूसरे देशों में ट्यूशन क्यों नहीं होता है भाई, आप बताइए। नीदरलैंड में नहीं, फिनलैंड में नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं। मेडिकल एडमिशन कनाडा में होता है, अमेरिका में होता है, कहीं ट्यूशन क्लासेस नहीं है। क्या मामला है, ये माजरा क्या है? तो व्यवस्थाओं से हमारे जीवन की खुशी तो छोड़िए, हमारे आयु की सीमा भी व्यवस्थाओं से जुड़ गई है। जी। खाना कैसा मिलेगा, हमें एक्सरसाइज का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महिलाओं को सुविधाएं क्या मिलेंगी, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हम कितना जिएंगे ये भी वो डिसाइड करते हैं। तो जिन सरकारों को आपने चुना है वो सिर्फ आपकी इकोनॉमी नहीं डिसाइड करती है, आप भूल में मत रहें।
वो आपके जीवन की आय दर भी डिसाइड करती हैं, आपकी खुशियां, आपके गम भी डिसाइड करती हैं। मैं इस विषय पे आप लोग ज्यादा समझते हैं, ज्यादा बोलेंगे, मगर हमारी समस्याओं की एक कड़ी ऐसे हाथों में है जहां हमारी पहुंच नहीं है। दुख की बात है ये। इतना कहकर मैं विराम देता हूं। तिवारी जी, आपको सुनना चाहता हूं, बताइए क्या कर सकते हैं हम इसमें? सर उसमें मेरी रिक्वेस्ट यही है, इफ यू विल से ना विजिटिंग पटना वेरी फ्रीक्वेंटली, तो अगर आप कहेंगे मैं डॉक्टर सर से मिल के अगर कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर पाए, धीरे धीरे अवेयरनेस आए, मैं वहाँ जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ सर की मीटिंग करा के कुछ आगे करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक, मेरा वादा है कि मैं आप उन्हें चिट्ठी लिखूंगा और आप उनसे मिलिए। वो ये काम करने में बहुत आगे हैं और जरूर इसको आगे ले जाएंगे। और मैं तो खैर वही, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर द्विवेदी हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर शिवेन द्विवेदी मॉन्ट्रियल में हैं और ये इस काम की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं डॉक्टर द्विवेदी कि आप अपने विचार हम कुछ ही लोग हैं, मगर हम कुछ हैं, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ सुनेंगे, बताएं। Thank you so much, Dr. Srivastava, for your kind introduction. It's not the number which counts, it's the type of people who are involved which counts. That's what I would say. And I would like to sincerely thank Dr. Srivastava and each one of you for being here. This is a very important topic. It's very close to my heart. हम तो कनाडा में पढ़े बड़े हैं. I've been here since I was 5 years old. But जब मैं भारत को देखता हूँ और उसकी कल्चर और उसकी हिस्ट्री देखता हूँ, मेंटल इलनेस की चर्चा सोसाइटी में नहीं होती है. उसको छिपाया जाता है अगर डिप्रेशन और सुसाइड हो, स्पेशली हमारे गांव में. और अर्बन सेटिंग में भी ये दिक्कतें आ रही हैं. तो आई थिंक जो काम डॉक्टर श्रीवास्तव ने शुरू किया है, it's extremely important because it will save lives. And that is why the Freedom from Poverty Foundation and I have gotten behind this wholeheartedly. Because each intervention is an intervention which saves a life. So I'm very grateful to all of you for joining. My sincere apologies. I was in the operating room all night. So I just woke up about 10 minutes ago. But this is a really important work. और जितना भी इसमें आप लोग मदद करके आगे बढ़ा सकते हैं, उतना हम तो आभारी हैं ही आपको. श्रीवास्तव भी आपकी आभारी है, मगर पूरी सोसाइटी आपकी आभारी रहेगी. क्योंकि this culture must change. This culture of silence on this disease must change, and we must be a part of this change, and we will make it happen with your help. We will make it happen, and like I'm saying, each intervention saves a life. So thank you again from the bottom of my heart. Thank you for being a part of this, and please spread the word. Please spread the word, because the more people who join us, and Mansik Shakti, thanks to Dr. Srivastava, it's a humble beginning to make a change, but it's a very important beginning. And I think we are at the cusp of a revolutionary change in how people view depression and mental disease. And, you know, we're all behind you, Dr. Srivastava, and hopefully this will be the start of a new movement. Thank you so much for giving me Thank you, Dr. Saab. And I mean, the support from your organization. Dr. Dwivedi has this trust, Freedom from Poverty Foundation Trust in Lucknow as well as in Montreal. Lucknow, Mr. Dwivedi, Mr. Hemant Dixit, मैं उन्हें देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं हूँ डॉक्टर साहब, सुन रहा हूँ. सुन रहे हैं आप कुछ? आपके और ये डॉक्टर संदीप तिवारी जो है, ये इनकी क्षमताएं ऐसी हैं जो उनको खुद नहीं पता, और वो जुड़े हैं हमारे इस मुहिम से.
तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस गति से वो उसको आगे ले जाएंगे वो हम आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा किया कि वो हमसे जुड़े हैं और हम उन पर, उनके भरोसे हम भी आगे पहुंचे, यही हमारी इच्छा है। मैं वेट कर रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर सुजीत कार, जो लखनऊ KGMC में किंग जॉर्जियस मेडिकल यूनिवर्सिटी में साइकेट्री के एडिशनल प्रोफेसर हैं। ही इज जस्ट गोइंग टू ज्वाइन इन 10 minutes. It is now time for his lecture and he will speak about the risk factors for suicide behavior in adolescents. Okay. Excellent, very important member of the faculty and young man who is well known throughout the country. He was present. He and Dr. Dalal, the two are main pillar for mental health in mental health professionals from the psychiatric community in Lucknow, and I'm thankful to him and I'm waiting for him. So until he joins, I would like to listen comments from our audience, our people. Anybody wants to make any observation, please? Till he joins here, if we have yes, Dr. Tiwari, are you there? Okay. Yes, sir. हाँ, बताइए। तो हेमंत जी कह रहे थे कि आप हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें मिल गए हैं। तो Sir, I will try my best. Certainly, I will spread this drive among all students as well as faculty members. So I am very fortunate that with the help of Hemant Bhaiya, I have joined this organization. क्या कर सकते Certainly, हैं? I will move forward. आपके विचार से नीड ऑफ द आवर क्या है? इमीडिएटली दो बातें, क्या वे कौन सी दो बातें हैं जो करनी चाहिए? सर, एक तो जो कम्युनिकेशन है उसको और स्प्रेड करके, और दूसरा ये है कि कुछ हमें कुछ ऐप या कुछ ऐसा डेवलप करके बच्चों से कम्युनिकेशन इंप्रूव करना होगा। जब मैं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हम लोगों ने एक बेंगलोर की एक संस्था थी, उनके थ्रू हमने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो वो ग्रीन, ऑरेंज, रेड 3 कार्ड इशू करते थे, और जब बच्चे का सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ इंक्लिनेशन होता था तो वो हमें कॉल करके बताते थे। तो इमीडिएटली हम उस बच्चे को ट्रेस करके और काउंसलिंग करके माँ बाप को बता के वो करते थे। ऐसे 3 केसेस मेरे टेन्योर में आए, और सर्टेनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो तीनों को बचा लिया गया। तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उससे पहले ही हम लोगों ने काउंसलिंग कर दी। तो उस डायरेक्शन में भी सोचना स्टार्ट। अब कैसे, वो कहाँ पे है प्रोग्राम, वो हम देख सकते हैं? वो सर ये इसकी सारी डिटेल मैं हेमंत भैया को प्रोवाइड कर दूंगा आज रात तक, सारी अरेंज करके। हाँ, आप बताइए। वैसा ही कुछ हम लोग और करके इसको लोगों के बीच में ले जाते हैं। उसमें जब भी बच्चे, वो 24 आवर्स की ऐप है, कभी भी वो कॉल कर सकते हैं, और जो उनसे बात कर रहा होता है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, तो वो फ्रिक्वेंटली अपनी परेशानियां बताने लगते हैं बच्चे। तो वो उससे बड़ा मतलब मुझे फायदा हुआ था अपने बच्चों को संभालने में। तो वहाँ 2500 स्टूडेंट्स थे, तो वो एक सपोर्ट अच्छा था। उसकी पूरी डिटेल में हेमंत भैया के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आपने ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश नहीं किया है? ये तो सर वो एक एक्चुअली वो प्रोफेशनल एजेंसी थी, इसलिए मतलब मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने बस मैनेजमेंट से बात करके उस ऐप को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो अब अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसको मैं एक्सप्लोर करके आप मुझे ऐप भिजवाइए और मैं देखता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हमें बहुत उम्मीद है जी। अभी हमारी ये जो कार्यक्रम है मानसिक शक्ति, इसमें हमने सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुंबई में है, वहां पे डिपार्टमेंट है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उनको ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, जो ये ऐप डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 3 बातें देखी जा रही हैं। पहली बात देखी जा रही है कि क्या छात्र को सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस है, और अगर है तो उसका स्रोत क्या है। दूसरा, ये देखने का प्रयास चल रहा है कि क्या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तीसरा, ये देखने का प्रयास चल रहा है कि
इसकी मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए वल्नरेबिलिटी क्या है। तो इन 3 प्रश्नों पर वो एक पूरी टीम है हमारी, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, वो और ये सुमैया इंस्टीट्यूट, ये सारे लोग मिलकर ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है काफी कुछ काम हुआ है कि 6 महीने में शायद ये सामने ट्रायल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन जब तक वो हो तब तक अगर कल्चरली स्पेसिफिक कोई ऐसा ऐप है जो हमने बिहार में, यूपी, महाराष्ट्र में कहीं भी यूज किया है और वो काम करता है, तो उसे पुनः लेकर उस पर चर्चा करनी चाहिए और प्रपोज भी करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हफ्ता है 10 सितंबर तक, ये है सुसाइड प्रिवेंशन वीक। 10 तारीख को वर्ल्ड WHO का दिन है, ग्लोबल सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये हमें मौका देता है क्योंकि दुनिया भर में इस पर चर्चा चल रही होती है, मीडिया का ध्यान रहता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जगह जगह जहाँ भी आप वो बात करें। रोटरी क्लब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, जो लोग भी रोटरी से जुड़े हों वो अपने यहाँ जाके बात चलाएं। अगर बात बन जाए कार्यक्रम की तो बड़ा अच्छा होगा। जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अपने आप को I will try to make myself available. Yes, Dr. Kar, welcome. Dr. Sujit Kar, I have Dr. Kar is additional professor in, as I said, in KGMC, and now without wasting even a single moment, it is over to you, Dr. Kar. Please take over the floor. Good evening, sir. Am I audible? Yes, you are. Thank you so much, sir. You can share your slide, no problem. My slide is visible, sir? Yes, now it is visible. The slides are moving, sir? Yes, yes. Okay. I'm just stopping my video just to ensure that there will not be any break in my voice. No. Yeah. Thank you so much. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आत्महत्या की जो कारण है और उसकी रोकथाम के लिए सारे ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग स्कूल और कॉलेज की यंग स्टूडेंट्स में सुसाइडल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उनकी कारण को समझना चाहते हैं, रिस्क फैक्टर को समझना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई आत्महत्या की प्रवृत्ति है या कोई रिस्क है तो उसको असेस करना चाहते हैं, ये उसका मकसद है। तो आगे की जो प्रेजेंटेशन है नियरली 1-1.5 घंटे का, उसमें मैं इन विषयों के ऊपर ही चर्चा करूंगा। Just a minute, time. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग 10 सितंबर को हर साल विश्व इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10 सितंबर को, जो कि अगले हफ्ते में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इस साल। तो ये जो दिवस है इसको हर साल सितंबर 10 को सेलिब्रेट किया जाता है और सितंबर के महीना को सुसाइड प्रिवेंशन मंथ की नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस पूरे महीने के दौरान कई सारे प्रोग्राम पूरे दुनिया भर में किए जाते हैं जिसकी स्पॉन्सरशिप जो है बेसिकली इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दोनों मिलकर करते हैं। इस साल की जो थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो अपनी एक्शन के माध्यम से हमें लोगों के अंदर उम्मीद को जगाना, तो अपनी कार्यकलापों के माध्यम से लोगों के अंदर उम्मीद को जगाना।
और कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर उम्मीद जगाने की हम बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति काफी ज्यादा है। तो इस साल की थीम ये है, जिसके ऊपर पूरे दुनिया भर में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। आगे जब मैं सुसाइड की कॉज और रिस्क फैक्टर के बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड की आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सुसाइड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स या एपिडेमियोलॉजी जो है, दुनिया भर में सुसाइड की एपिडेमियोलॉजी मतलब कितने लोगों में सुसाइड होता है उसकी आंकड़ा को पता लगाने के लिए हमने डिफरेंट सोर्स से पता लगाया था। एक रिलायबल सोर्स है विश्व बैंक की जो सोर्स है, वर्ल्ड बैंक की सोर्स है, वो एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने डिफरेंट कंट्री की जो सुसाइड को लेके सर्वे हुआ है उसकी आकलन को लेके एक रिपोर्ट तैयार किया था, जो कि 2019 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे मैं जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का है। पर्टिकुलरली हम जब सार्क कंट्री की बात करते हैं, साउथ एशियन फेडरेशन की बात करते हैं, उस देशों में आत्महत्या की प्रेवलेंस क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान एक कंट्री है, बांग्लादेश कंट्री है, जहाँ पे सुसाइड की प्रेवलेंस 3.7 to 4.1 के आसपास और 1 लाख पॉपुलेशन पे कैलकुलेट होता है। हर 1 लाख व्यक्तियों में लगभग 4 व्यक्ति अफगानिस्तान में, लगभग 3.7 पीपल इन बांग्लादेश जो आत्महत्या करते हैं। भूटान में ये संख्या 4.6 है। जब ये भारत के बारे में हम बात करते हैं ये संख्या बढ़ के 12.7 हो जाती है। मतलब हर 10 लाख लोगों में 127 लोग आत्महत्या करते हैं भारत में। और सार्क कंट्री में सबसे ज्यादा आत्महत्या की जो आंकड़ा है वो आया है श्रीलंका से। श्रीलंका में लगभग 1 लाख में 14 लोग आत्महत्या करते हैं हर साल। तो जो सार्क कंट्री है, साउथ एशिया है, उसमें इंडिया और श्रीलंका में आत्महत्या की रेट काफी ज्यादा है। अगर हम पूरे साउथ एशिया को हम देखें तो साउथ एशिया की पॉपुलेशन में एवरेज जो सुसाइड रेट है लगभग 11.2 है पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत और श्रीलंका की आत्महत्या की रेट काफी ज्यादा है। कुछ साल पहले श्रीलंका की जो सुसाइड रेट था वो दुनिया के सबसे ज्यादा सुसाइड रेट था। तो वहां पे जो सुसाइड रेट था 49 पर 1 लाख पॉपुलेशन था। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कुछ ठोस कदम उठाए जिसके बाद आत्महत्या की जो रेट है वो काफी कम हो गया। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 साल के अंदर ये सुसाइड रेट जो है 49 से घट के 14 पे आ गया। उसकी ये बड़ी कदम था क्या, इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ये जो बड़ी कदम था, श्रीलंका में जो सर्वे हुआ था वहां पे देखा गया था जो आत्महत्या की सबसे प्रमुख कारण है वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से है। जो पॉइजन को कंज्यूम करते हैं, कीटनाशक दवाइयों को लोग कंज्यूम करके आत्महत्या करते हैं। और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। हर कोई हर जगह से खरीद नहीं सकता, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। जब उसके ऊपर रोक लगा दी गई तो उसके बाद पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के वजह से सुसाइड जो है वो कम हो गया और मोटा मोटा तौर पे जितना भी सुसाइड की संख्या थी वो भी घट गई। तो ये संख्या घट के 14 पे आ गई। अगर हम साउथ एशिया में सुसाइड की ट्रेंड के बारे में देखें, पिछले 20 सालों में सुसाइड की आत्महत्या की दर में कोई चेंज, कोई बदलाव आया है क्या? आप देख सकते हैं 2000 के आसपास जो सुसाइड रेट था टोटल, ये समवेयर अराउंड क्लोज टू 15 था, 15 के आसपास था 1 लाख पॉपुलेशन। जब मैं 2019 की आंकड़ा आपको दिखा रहा था तब मैं बात कर रहा था तो सुसाइड की जो रेट है वो घट के 11.2 पर 1 लाख पॉपुलेशन में आ गया। तो 14 से 11 की जो गिरावट आई, और ये गिरावट पुरुषों में भी आया है और महिलाओं में भी आया है। लेकिन ये जो डाटा यहाँ पे चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ ये 2019 तक का है। 2019 के बाद पूरे दुनिया में कोविड की पैंडेमिक शुरू हुआ 2020, 21, 22 पे। इस दौरान देखा गया कि लोगों के अंदर
जो मेंटल रेजिलियंस होते हैं उसमें काफी बदलाव आया, और पूरी दुनिया भर में लोगों ने बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन से लेके ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन होना, वैक्सीनेशन की इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज आए, जिसकी चलते आत्महत्या की दर में फिर बढ़ोतरी हुई है। तो अभी 2019 के बाद की जब रिपोर्ट में आगे डाटा एनालिसिस होके आएगा, उसमें आप देखेंगे कि ये सुसाइड रेट बढ़ा है। जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, उस कंट्रीज में लोग जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या की तरीके क्या क्या अपनाते हैं, उसको लेके हमने एक रिसर्च की थी। जितने भी सारे पब्लिश रिसर्च को लेके 2001 से लेके 2020 के बीच में जो आत्महत्या की अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाया है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे टीम ने एक रिसर्च की थी, जिसमें ये हम लोगों ने देखा था कि आत्महत्या की जो प्रमुख तरीका है वो है हैंगिंग, फांसी लगा के आत्महत्या करना, ये सबसे प्रमुख तरीका है। साउथ एशिया कंट्री में जो लगभग 20 साल में देखा गया है, हैंगिंग जो है, लगभग जितने लोग भी आत्महत्या करते हैं उनमें से लगभग 56% लोग फांसी लगा के आत्महत्या करते हैं। और लगभग हैंगिंग के बाद जो दूसरा तरीका आता है वो पॉइजनिंग। पॉइजनिंग की तरीके से डिफरेंट टॉक्स, कीटनाशक दवाई हो गया, कोई नील की गोली हो गई, या कोई पॉइजन को कंज्यूम करके जो आत्महत्या करते हैं, वो लगभग 35% लोग, जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से 35% लोग पॉइजनिंग के माध्यम से आत्महत्या करते हैं। तो ज्यादातर साउथ एशियन कंट्री में यही ट्रेंड फॉलो होता है। हैंगिंग सबसे कॉमन तरीका है, उसके बाद फिर पॉइजनिंग नेक्स्ट कॉमन तरीका है। लेकिन कुछ कंट्री में उसमें थोड़ा बदलाव है, जैसे कि श्रीलंका में हालांकि आत्महत्या की दरों में कमी आई है, लेकिन पॉइजनिंग अभी भी प्रमुख तरीका है आत्महत्या की, उसके बाद हैंगिंग आता है। साउथ एशियन कंट्री में जो ट्रेंड देखने को मिला है, पॉइजनिंग के माध्यम से जो आत्महत्या होती है वो उसकी संख्या धीरे धीरे घटी है, और हैंगिंग के माध्यम से जो आत्महत्याएं होती है उनकी संख्या बढ़ी है। कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, उन कंट्रीज में एक नया ट्रेंड मिला है कि आजकल वहां पे फायर आर्म यूज करके आत्महत्या की जो संख्या है वो थोड़ा उसमें बढ़ोतरी आई है कि आजकल वहां पे फायर आर्म यूज करके। हेलो, यस गो अहेड। आत्महत्या को रोकने के लिए देश में, इंडिया के नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हर कंट्री में कुछ कुछ पॉलिसी, प्रोग्राम, एक्शन प्लान बना है। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, बहुत रिसेंटली 2022 में भारत सरकार ने पहली बार नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को शुरू किया था। आत्महत्या के रोकथाम के लिए हमारे देश में पहली बार स्ट्रैटेजी बना, वो भी 2022 में बना। उससे पहले हमारे देश में सुसाइड को रोकथाम के लिए कोई पक्का तौर पे कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं था, जो कि अभी 2022 में शुरू हुआ। और भारत में जो सुसाइड का जो आंकड़ा है उसको पता लगाने के लिए हम लोग जो डाटाबेस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटाबेस। ये पुलिस की जो डाटाबेस है, यहाँ पे जितने भी सारे सुसाइड होते हैं, क्राइम होते हैं, ये सारे पुलिस के पास डॉक्यूमेंट होती है, और पुलिस की हर पुलिस स्टेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टेट लेवल की डाटा बनाया जाता है और नेशनल लेवल की एक डाटा बनाया जाता है, जिसकी तौर पे हर साल एक रिपोर्ट रिलीज होती है, जो लगभग अगस्त और सितंबर के आसपास रिलीज होती है। हम उम्मीद करते हैं अब कुछ हफ्तों में ये रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट 2023 में रिलीज होने वाली है। इस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि पूरे देश में हर जगह पे किस किस तरह का क्राइम होते हैं, महिलाओं के साथ किस तरह का क्राइम होते हैं, बच्चों के साथ कितना होता है, पुरुषों के साथ क्या क्राइम होता है, डिफरेंट स्टेट में क्या क्राइम होता है, और क्राइम के साथ साथ सुसाइड की भी आंकड़ा पता लगाया जाता है। तो इसके बारे में अभी हमें जानकारी मिलेगी, पिछले साल की क्या था, इस साल की रिपोर्ट जब रिलीज होगा हमें जानकारी मिलेगी। हमारे देश में अभी तक सुसाइड को रोकने के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं, कोई पॉलिसी भी नहीं है, कोई एक्शन प्लान भी नहीं है।
लेकिन अभी रिसेंटली सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी डेवलप किया गया है और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों ने इस सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को आधार बना के और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटाबेस को आधार बना के देश के लिए कुछ प्रोग्राम और पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम लीगल स्टेटस सुसाइड के बारे में बात करें साउथ एशियन कंट्री में, आप लोगों से ज्यादातर लोग शायद ये जानते होंगे कि भारत में सुसाइड को धारा 309 के आधार पे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। इंडियन पेनल कोड 309 के आधार पे इसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। 2017-18 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया, जिसके बाद सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो उसका मतलब है कि 2017-18 को ये जो नियम आया, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। इसके ऊपर भी काफी सारे डिबेट पिछले 4-5 सालों से चल रही है। अगर साउथ एशियन कंट्री के बारे में हम बात करें, बांग्लादेश में अभी भी धारा 309 के आधार पे आत्महत्या एक अपराध, भूटान में उसको अपराध नहीं माना जाता है, मालदीव्स में इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, नेपाल ने 2018 में आत्महत्या की प्रयास को अपराध जो मानते थे उसको हटा दिया गया उस धारा को 2018 में। पाकिस्तान में धारा 325 के आधार पे सुसाइड अटेम्प्ट को पनिशेबल माना जाता था, जो कि 2022 में हटा दिया गया। श्रीलंका में आत्महत्या की जो प्रयास है उसको अपराध नहीं माना जाता है। तो अधिकतर देशों में आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था, जिसको पिछले 5-6 सालों में नियम में बदलाव करके उसको एक अपराध नहीं है ये करके उस धारा को हटा दिया गया है। इसके कारण मैं कहूँ कि सुसाइड की जो अटेम्प्ट करता है जो व्यक्ति, उसकी पीछे की जो मनसा है, उसकी पीछे की जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत बिगड़ी हुई होती है, वो बहुत काफी परेशान होता है। तभी जाके एक व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचता है। और उसको अगर अपराध माना जाए तो उस व्यक्ति को अगर सजा दिया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। तो इसीलिए इन धाराओं को हटा के उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के बारे में बात की जा रही है। कुछ और विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग जानते होंगे हम बहुत सारे आत्महत्या के बारे में खबर सुनते हैं, और सुनने की माध्यम क्या है, ज्यादातर आत्महत्या के बारे में खबर जो हमारे पास अब तक पहुंचती है, ज्यादातर ये मीडिया के थ्रू पहुंचती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, या कोई ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हो, या कोई टीवी चैनल हो, या कोई रेडियो स्टेशन के थ्रू बताया जा रहा हो। आप लोगों ने हालांकि 2020-21 में कई सारे घटनाएं सुनी होगी। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत, एक बॉलीवुड एक्टर जो कि बहुत जाने माने बॉलीवुड एक्टर थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी, और उसके बाद कई सारे और भी बॉलीवुड एक्टर थे जिन्होंने आत्महत्याएं की थी। इसको लेके काफी सारी चर्चाएं चली थी, न्यूज मीडिया में इसके बारे में चली थी, और जिस तरीके से न्यूज और मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो रही थी, ये देखा गया था उसकी असर जो लोगों के ऊपर काफी बुरा पड़ रहा है। एक नेगेटिव न्यूज को ग्लोरीफाई करके मीडिया उसको प्रचार कर रही थी, जो कि काफी सेंसेशनल और प्रोवोकेटिव था, और जितने भी सारे न्यूज थे उसपे हार्मफुल कंटेंट ज्यादा था, और उसको सुन के किसी भी व्यक्ति को कोई हेल्पफुल कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो ये देखा गया था कि इस तरह का विषय पे काफी सारे रिसर्च हुई है। देखा गया है ज्यादातर कंट्री में जो न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया है, वो कोई न्यूज गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 में एक गाइडलाइन इश्यू किया था कि मीडिया को सुसाइड जैसे, आत्महत्या जैसे सेंसिटिव इश्यूज को कैसे बताना है लोगों को। फिर उस गाइडलाइन को उन्होंने अमेंडमेंट किया था 2017 में। ये दोनों चीज होने के बावजूद
पूरे दुनिया में ये सर्कुलेट होने के बावजूद ज्यादातर देशों में मीडिया इस कानून को फॉलो नहीं करती। भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक गाइडलाइन जारी किया है मीडिया के लिए कि आत्महत्या जैसे सेंसिटिव न्यूज को कैसे बताया जाए न्यूज में, जिसमें लोगों के ऊपर बुरा असर ना पड़े। इसके इश्यू होने के बावजूद भी पिछले 2 डिकेड्स में कोई चेंजेस नहीं आया है। ज्यादातर मीडिया एक नेगेटिव तरीके से आत्महत्या की खबर को लोगों में पब्लिश करते हैं। इस मीडिया के बारे में जब हम बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है लोगों के ऊपर, ज्यादातर युवाओं के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखा गया है जो सुसाइड की न्यूज कभी भी कोई मीडिया में या कोई न्यूज चैनल में आती है, उसकी जो असर लोगों के ऊपर होता है वो 2 तरीके के इफेक्ट होता है। एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट को कहते हैं पापाजिनो इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट को कहते हैं रदर इफेक्ट। पापाजिनो इफेक्ट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति की आत्महत्या की घटना को न्यूज में बताया जाता है, वहां पे उसकी क्या असर पड़ता है घर वालों के ऊपर, क्या क्या सर्कमस्टेंस में वो सुसाइड हुआ है, उसको कैसे रोका जा सकता था, क्या तरीका वो आदमी अपनाता तो सुसाइड को रोका जा सकता था। तो ये पॉजिटिव चीजें और लोगों को आत्महत्या की सोच को कैसे रोकना है, उसके बारे में तरीके जब बताए जाते हैं, लोग उस तरीके से सीखते हैं और आत्महत्या की विचार लोगों में रुक जाता है। काफी हद तक लोगों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जहां पे देखा गया है आत्महत्या की घटनाओं को एक सेंसेशनल तरीके से, बहुत सनसनी खबर की तरह उसको पेश की जाती है और इसको देखा जाता है कि वो व्यक्ति आखिरी जीवन में करता क्या, उसके पास कोई रास्ता और बचा नहीं था, तो आखिरी में सुसाइड का रास्ता ही एक सही रास्ता था। जब इस तरह का खबर पेश की जाती है मीडिया के थ्रू, तब ये देखा गया है कि कॉपीकेट सुसाइड बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो थोड़ा इमोशनली एक नेगेटिव स्थिति में होते हैं, तो उनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति थोड़ा बढ़ जाता है और वो आत्महत्या करने भी कोशिश करते हैं। ऐसे देखा गया है बहुत सारे रिसर्च। तो किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जब सुसाइड के बारे में हम बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं आत्महत्या के बारे में जब भी कहीं चर्चा की जाती है, वहां पे कोई स्टिग्माटाइजिंग या कलंकित शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कोई कहता है कि somebody committed suicide और somebody is successful in doing suicide, ये बहुत ही नेगेटिव टर्म्स है। सुसाइड कभी भी एक सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसको सक्सेस या कमिटेड सुसाइड इस तरह का टर्म को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो रिस्पेक्टफुल टर्म क्या हो सकता है जो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे somebody died by suicide, किसी की मौत हो गई आत्महत्या के माध्यम से। तो ये चीजों को, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि फेल और अनसक्सेसफुल इन सुसाइड अटेम्प्ट। सुसाइड अटेम्प्ट में कोई अनसक्सेसफुल होता है, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं, अच्छी चीज है, उसकी जान बच गई, तो उसको इसलिए कहा जाता है। रिस्पेक्टफुल टर्म जो होता है अटेम्प्टेड सुसाइड। अगर आप कहते हो अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब आप इनडायरेक्टली सुसाइड को प्रमोट कर रहे हो। तो सुसाइड होता तो सक्सेस होता, सक्सेस को आप सुसाइड के साथ जोड़ रहे हो, तो वो जो कि नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ सुसाइड की फैक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल दुनिया भर में जो देखा गया है लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। ये आंकड़ा 2019 का है। जो रिसेंट आंकड़ा आ रही है, लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या की वजह से अपने जीवन गंवाते हैं। जो हम आत्महत्या के लोगों को देखते हैं, हर साल 7 लाख या 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन उससे 20 गुना लोग आत्महत्या की प्रयास करते हैं। तो 20 बार प्रयास में से एक आदमी को आत्महत्या में की वजह से मौत हो जाती है। तो आत्महत्या की जो अटेम्प्ट है वो काफी ज्यादा है। अगर हम 8 लाख कहते हैं डेथ होती है, तो 20 टाइम्स मतलब
160 लाख सुसाइड अटेम्प्ट होती है दुनिया भर में हर साल। जो सुसाइड की प्रमुख रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जो देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में पहले कभी आत्महत्या की प्रयास किया है तो उसके अंदर फिर दोबारा आत्महत्या करने की संभावना काफी बढ़ जाता है। इसलिए उसे एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड माना जाता है। 77% ऑफ सुसाइड्स दुनिया भर में जितने भी आत्महत्याएं होते हैं उसकी 77% जो आत्महत्याएं हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। इस कंट्री में ज्यादातर आत्महत्याएं, दुनिया भर की जो आत्महत्याएं उसकी नियरली मोर देन 3/4 ऑफ सुसाइड्स इन देशों में होता है। और भारत को दुनिया का सुसाइड कैपिटल माना जाता है। भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है और इतने बड़े जनसंख्या में जो आत्महत्याएं होती हैं वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए पूरे विश्व का सुसाइड कैपिटल माना जाता है भारत, जो कि अच्छी खबर नहीं है। आत्महत्या की जो कारण होते हैं, जो 15 से 19 साल की बच्चे होते हैं जिनके बारे में हम आज की विषय पे चर्चा कर रहे हैं, यूथ पॉपुलेशन, युवाएं जो होते हैं, उनमें मौत की चौथी प्रमुख कारण है आत्महत्या। इस उम्र में अगर कोई बच्चे का मौत होता है उसका प्रमुख कारण अक्सर एक्सीडेंट होता है, पहला प्रमुख कारण। उसके बाद कुछ और इलनेसेस आती है और सुसाइड जो है चौथी प्रमुख कारण। दुनिया भर में जो आत्महत्याएं होती है कि प्रमुख कारण जो देखा गया है वो है पॉइजनिंग, हैंगिंग और फायर आर्म की इस्तेमाल की वजह से। तो ये प्रमुख कारण सारे पूरे दुनिया भर में पाए गए हैं। जो दुनिया भर में कॉमन रिस्क फैक्टर देखा गया है कि आत्महत्या की कारक क्या है, क्या क्या चीज अगर होता है किसी व्यक्ति में तो उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो वो चीजें जो सामने निकल के आई है, अगर किसी को मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, तो उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अगर कोई नशीली पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, तो भी उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा होता है। अगर किसी के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है स्ट्रेस या तनाव की वजह से, जिसके कारण कोई रिलेशन को लेके, आपसी संबंधों को लेके हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेके हो सकता है, लंबी दिनों तक चलने वाली कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है, तो अगर इन कारणों की वजह से उस व्यक्ति के अंदर ब्रेकडाउन हो रही है, वो भी एक आत्महत्या की प्रमुख कारण बन सकता है। किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई वायलेंट बिहेवियर हुआ है या कोई अब्यूज हुआ है तो वो भी उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। कई सारे व्यक्ति जो समाज में अलग थलग रहते हैं, उनके साथ भेदभाव होती है, वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर भी आत्महत्या की संभावना बढ़ जाती है। जो जेंडर माइनॉरिटी पॉपुलेशन, जिसमें LGBTQ पॉपुलेशन आते हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, बाइसेक्सुअल, ये पॉपुलेशन आते हैं, उनके अंदर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, क्योंकि उनको समाज में एक तरह से भेदभाव की तरीके से देखा जाता है। और कई तरह का वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि रिफ्यूजी हो गए, या फिर जेल में जो प्रिजनर्स हैं, या जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनके अंदर भी आत्महत्या की संभावना ज्यादा रहती है। 2020 में देखा गया था, पुरुषों में आत्महत्या की जो आंकड़ा है वो महिलाओं के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। जितने भी सारे कंप्लीटेड सुसाइड्स हैं मुकाबले ज्यादा होती है।
दुनिया में जितने भी सुसाइड होते हैं उसके लगभग 20% सुसाइड जो है वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से होती है। थोड़ी देर पहले हम जब साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे थे, साउथ एशिया में पॉइजनिंग की जो प्रेवलेंस है वो लगभग 35%। तो पूरे दुनिया भर में 20% लोग सुसाइड पॉइजनिंग के माध्यम से करते हैं, जबकि एशिया में जब ये आती है उसकी आंकड़ा बढ़ के लगभग 35% हो जाए। दुनिया में सिर्फ 38 देश हैं जहां पे सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है। ये 2019 का आंकड़ा है। 2019 के बाद कई सारे देशों में सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, जैसे कि हमारे देश में 2022 में शुरू हुई। अभी अगर 2023 में हम देखें तो ये जो आंकड़ा है ये और काफी बढ़ चुका है। अभी हम बात करते हैं हमारे स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। 2015-16 में भारत सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया था, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारे मानसिक रोग विभाग पे वो एक प्रमुख भूमिका निभाया था। इस सर्वे में जो पाया गया था, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, जो उनमें लगभग 1% लोग के अंदर आत्महत्या की तीव्रता काफी ज्यादा होती है, वो हाई रिस्क ऑफ सुसाइड में होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 25 करोड़ के आसपास है, और 25 करोड़ में से अगर हम देखें लगभग 25 लाख लोग हैं जिनके अंदर आत्महत्या की रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो 25 लाख लोग, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से जो देखा गया था, आत्महत्या की जो आंकड़ा है किस ऑक्यूपेशन में कितना है उसको पता लगाने की कोशिश किया गया था। जो देखा गया था, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो दिहाड़ी आप कह सकते हैं कि रोजमर्रा के काम करते हैं और उनको कुछ पैसा कमाते हैं, उनमें आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हुई। और इसके बाद जो देखा गया है वो हाउसवाइफ थे। और स्टूडेंट पॉपुलेशन में देखा जाए तो लगभग 12,526 सुसाइड स्टूडेंट में हुई 2020। ये काफी बड़ी संख्या है। सिर्फ एक साल में ही 12,526 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था देश भर में। जब हम 2021 बारे में बात करेंगे तो पैंडेमिक के दौरान देखा गया जो आत्महत्या की दरों में बढ़ोतरी आई बहुत सारे पॉपुलेशन में। उनमें से जो स्टूडेंट पॉपुलेशन थे उनके अंदर आत्महत्या की जो बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है। पहले जितना था उनमें से और 21% सुसाइड स्टूडेंट में बढ़ गया ये पैंडेमिक के दौरान। इसके कारण बहुत सारे चीज है कि 2020-21 के दौरान जो कोविड की पैंडेमिक हुआ, इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट अपने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे थे वो कैंसिल हो गया, वो नहीं कर पाए। अपने पढ़ाई वगैरह छूट गई, स्कूल वगैरह बंद हो गया, उनकी अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी रहा। ये एक प्रमुख कारण हो सकता है कि स्टूडेंट के अंदर आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ गई। जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में हुआ था, उस पे देखा गया था कि लगभग 0.9% जो लोग हैं उनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा है, और जिनकी ज्यादातर उनमें महिलाएं हैं और 40 से 49 साल की उम्र में ये ज्यादा है। जिनकी एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है उनके अंदर आत्महत्या की संभावना ज्यादा है। और अर्बन मेट्रो सिटीज में आत्महत्या की प्रवृत्ति रिस्क थोड़ा ज्यादा है। आत्महत्या की जो प्रमुख रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें देखा गया एज एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलरली यंग एज, एडोलेसेंट एज एक रिस्क फैक्टर है जिसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति थोड़ा ज्यादा होती है। इस एज में इमोशनल टर्बुलेंस ज्यादा होते हैं। इस एज में अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना थोड़ा कम होता है, और इस एज में जो पीयर प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस को लेके प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है। और इस एज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि
बच्चे को अपनी पढ़ाई करना है, स्पोर्ट्स या कोई भी चीज में उसको एक्सेल करने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो इस एज में आत्महत्या की संभावना ज्यादा होती है। जेंडर देखा जाए तो महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाए तो लोअर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आत्महत्या की संभावना थोड़ा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वहां पे लोग आत्महत्या नहीं करते, वहां पे भी होती है, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल कॉज एक मेजर कॉज नहीं होता है सुसाइड, वहां पे कॉज कुछ और हो सकते हैं। जहाँ पे स्टिग्मा और आइसोलेशन है, भेदभाव ज्यादा है, उस तरह का व्यक्तियों में आत्महत्या की संभावना ज्यादा होता है। जहाँ पे एब्यूज हुआ है किसी के साथ, सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, वर्बल एब्यूज हुआ है, फिजिकल एब्यूज हुआ है, तो उसके अंदर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जिनके साथ शारीरिक बीमारी, लंबी दिनों से चलने वाली शारीरिक बीमारी चल रही है, जैसे कि किसी को कैंसर हुआ है, जैसे कि किसी को कोई ऑटो इम्यून कंडीशन या कोई फिजिकल इलनेस लंबी दिनों से चल रही है, तो उसके अंदर आत्महत्या की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इन्फेक्शिव कंडीशन जाए, किसी के अंदर HIV हो गया है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, जहाँ पे इलाज काफी लंबे दिनों से चल रही है, उन व्यक्तियों के अंदर आत्महत्या की संभावना भी बढ़ जाती है। जहाँ पे लोग नशा करने लगते हैं, नशा आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक बीमारी है, वो भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। कई बार पेरेंटिंग की वजह से स्ट्रेस होती है, कई सारे पेरेंट्स घर पे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो भी एक आत्महत्या के कारण हो सकता है। और जब यंग एज के बारे में बात करें, एकेडमिक स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, जहाँ पे पढ़ाई को लेके या परफॉर्मेंस को लेके जो स्ट्रेस होता है वो भी एक आत्महत्या के कारण बन जाता है। कई बार देखा गया है आत्महत्या की जो सुसाइडल बिहेवियर जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है। जिसकी परिवार में किसी ने आत्महत्या किया है तो आगे की जनरेशन में सुसाइड की जो रिस्क है वो 43% इंक्रीज हो जाती है। अब मैं आपको एक आत्महत्या के बारे में जो इतने सारे विषय हम चर्चा किए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ। ये जो कहानी है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में जो दिखा रहा हूँ एक रिवर का फोटो है, और यहाँ पे जो मैप में आप देख पा रहे हैं ये 5 नदियों को दिखा रहा है। यहाँ पे 5 नदियां हैं, सतलेज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास रिवर। ये जो रिवर है ये ब्यास रिवर की पिक्चर है। तो ये जो नदी जो है पंजाब और पाकिस्तान होते हुए ये अरबियन सी में जाके खत्म होती है नदी। ब्यास नदी का जो नामकरण हुआ है वो व्यास जी की, वेद व्यास जी के नाम से हुआ है, लेकिन व्यास रिवर का नाम पहले विपाशा के नाम से जाना जाता है। और इस नदी को विपाशा क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक खूबसूरत कहानी है। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही है, अगर कोई किसी को बात करना है तो अपने आप को म्यूट करके आप बात कर सकते हैं। आप जो मैं व्यास रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है ऋषि वशिष्ठ का है। एक बार क्या होता है कि ऋषि वशिष्ठ आप जानते होंगे कि भगवान श्री राम की ये गुरु थे। सूर्यवंशी राजाओं, अयोध्या की सूर्यवंशी राजाओं का ये कुल गुरु थे। ये जाके एक रिवर के पास पहुंचते हैं आत्महत्या करने की प्रयास। नदी के किनारे खड़े होकर ये सोचते हैं कि मैं नदी में अगर कूद जाऊंगा तो हो सकता है मेरे मन में उस समय मुझे कोई तकलीफ हो, मुझे मेरा मन करे कि मैं तकलीफ से बचने के लिए तैरते हुए किनारे आ जाऊं, पहुंच जाऊं, फिर मेरे आत्महत्या करने की जो मनसा है वो पूरा नहीं हो पाएगा।
इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैर को रस्सी से बांध लेते हैं और पानी में कूद जाते हैं। लेकिन जो नदी ऐसा है कि नदी की जो स्रोत में वो आते हैं तो उनके हाथ और पैर की रस्सी खुल जाती है, फिर वो तैरते हुए नदी के किनारे आके पहुंच जाते हैं और वो बच जाते हैं। नदी ने उनको एक बंधन से मुक्त किया, एक पासा से मुक्त किया, इसलिए नदी का नाम होता है विपासा। लेकिन ये ऋषि वशिष्ठ जो है, इतने बड़े ऋषि हैं, इन्होंने आत्महत्या करने के लिए प्रयास क्यों किया? उनकी जैसे व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आया क्यों? आप लोग जानते होंगे कि ऋषि विश्वामित्र जो थे, वो पहले राजा विश्वामित्र थे। राजा विश्वामित्र एक बार क्या होता है कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि वशिष्ठ उन लोगों को, राजा की सेवा करते हैं, उनको खाने पीने की बंदोबस्त करते हैं। राजा विश्वामित्र देखते हैं कि जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले ऋषि जो है, वो इतने अच्छे अच्छे चीज उनको खिला पिला रहे हैं, उनके सैन्यों को और उनको सबको खिला रहे हैं, तो इतने सारे चीजें ये ला कहाँ से रहे? जब ऋषि से इस चीज के बारे में उन्होंने जिज्ञासा की, ऋषि ने बताया कि उनके पास एक गाय है, जिस गाय का नाम है कामधेनु, जो उनकी हर इच्छा को पूरा करता है। तो राजा विश्वामित्र कहते हैं, तो ऋषिवर, आपके पास ये गाय नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मेरे पास होना चाहिए, ताकि राजा की जरूरत ज्यादा होती है, ऋषि की जरूरत तो बहुत कम होती है, तो ये गाय मुझे दे दीजिए। तो ऋषि वशिष्ठ ये कहते हैं कि कामधेनु एक ऐसी गाय है जिसको आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, तो आप गाय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर गाय आपके साथ जाना चाहेगी तो वो जा सकती है, हम इसमें कोई रुकावट नहीं बनी। जब विश्वामित्र के जाके कामधेनु को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, कामधेनु इसमें इनकार करते हैं। कामधेनु को जबरदस्ती जब विश्वामित्र लेने की कोशिश करते हैं, तो कामधेनु के शरीर से बहुत सारे सैन्य निकलते हैं, जो कि राजा विश्वामित्र को बंदी बना देते हैं। राजा विश्वामित्र बहुत लज्जित होते हैं और उनको महसूस होता है, मैं इतने बड़े राजा होने के बावजूद मैं एक ऋषि के सामने कुछ नहीं हूँ। एक ऋषि जो है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल, तो मेरे राजा बनने का क्या फायदा है? तो राजा विश्वामित्र उस दिन फैसला करते हैं कि मैं राजा नहीं, मैं ऋषि बनूंगा। वो तपस्या करते हैं, तो वो एक ऋषि बनते हैं। लेकिन वशिष्ठ की तरफ उनके मन में एक घृणा की भावना होती है या बदला की भावना होता है। वो चाहते हैं कि मुझे वक्त मिलेगा, मैं कभी ना कभी वशिष्ठ से अपना बदला लूंगा। तो वो कठोर तपस्या करते हैं और वो ऐसे कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से वो ऋषि वशिष्ठ को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऋषि वशिष्ठ की जो बच्चे होते हैं, उनकी जो पुत्र होते हैं, उनको वो हत्या करते हैं, वो शक्ति प्रयोग करके। तब जाके ऋषि वशिष्ठ को महसूस होता है कि मैं अपने इतने बड़े ऋषि होने के बाद मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, इसीलिए वो आत्महत्या की प्रयास करने के लिए जाते हैं। तो ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है, उसकी सारांश मैंने आपको बताया है। कहने का मतलब ये है, अगर हम माइथोलॉजी में देखें तो ऋषि वशिष्ठ को एक बहुत बड़ी सम्मान के साथ देखा जाता है। वो इतने बड़े ऋषि हैं, तो उनके अंदर आत्महत्या की भावना भी आई थी और उन्होंने प्रयास भी किया था। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या की भावना कहीं ये साबित नहीं करता है कि आप किसी रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो। चाहे व्यक्ति कितनी भी शक्तिशाली हो, उसकी मन कितना भी मजबूत हो, उसकी हालात कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उसके अंदर आत्महत्या की भावनाएं आ सकती है। और ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो मानसिक स्थिति से बहुत कमजोर होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। जब हम युवाओं के बारे में बात करते हैं और उनमें आत्महत्या के प्रमुख कारणों के बारे में बात करते हैं, उनमें घूम फिर के जो कारण आते हैं वो है, उनके साथ अगर कोई यूज होता है, उनके साथ कोई बुली करते हैं या लोग उनके साथ अपशब्द प्रयोग करते हैं, उनके साथ कंटिन्यूसली उनको टॉर्चर किया जाता है, या उनकी वो एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, उनकी पेरेंट्स के बीच में आपस में कोई एक संबंध खराब होता है, जिसका सामना इन बच्चों को करना पड़ता है। पेरेंट्स अगर बहुत ही हार्श तरीके से अपने बच्चों से लगातार व्यवहार करते हैं, अगर बच्चे कोई रिलेशनल इश्यूज फेस करते हैं, जो कि अक्सर इस उम्र में बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, एक नया रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में फेलर एक बड़ी कारण होता है उनके तनाव का।
और बच्चों के अंदर आपस में जो कंपटीशन होता है, पढ़ाई को लेके हो, किसी और चीज को लेके हो, उसकी वजह से जो दबाव महसूस करते हैं, ये आत्महत्या के प्रमुख कारण। हमें एक चीज को समझना चाहिए कि सुसाइड और डेलिबरेट सेल्फ हार्म क्या है। आत्महत्या और आत्महत्या के लिए बहुत सारे लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको दो चीजों के बारे में देखना है, एक है इंटेंशनलिटी और लिथलिटी। कभी भी कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की प्रयास के साथ जब आया है, उसने क्या तरीका अपनाया, उस तरीके से मौत होने की संभावना क्या कितना थी, और उसकी पीछे का मकसद क्या था, ये जो प्रयास किया गया उसके पीछे का मकसद क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। जहां पे प्रयास के पीछे का मकसद अपनी जान देना था या मौत था, तो डाई इज द इंटेंशन, और जो तरीका अपनाया गया था वो तरीके से मौत की संभावना काफी ज्यादा है, जिसमें बचा पाना बहुत ज्यादा संभावना बहुत कम है, तो उसको हम सुसाइड अटेम्प्ट मानेंगे। जहाँ पे कई बार कई सारे बच्चे या लोगों में देखा गया है, आत्महत्या की कोशिश जो देखी जाती है उसके पीछे का इंटेंशन जो है वो मरने का नहीं होता है, बल्कि और लोगों की दृष्टि आकर्षण करना होता है। ऐसे करने से हमें ज्यादा अटेंशन मिलेगा, और जो तरीका अपनाते हैं उस तरीके से उस व्यक्ति का मरने की संभावना काफी कम होता है। उस चीज को सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहा जाता है डिलिबरेट सेल्फ हार्म। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि आजकल के दिन में लोगों के अंदर और बच्चों के अंदर तनाव का कारण कैसा है, प्रेशर कैसा है। तो मैं वीडियो को अभी चालू करता हूं, और इसमें कोई साउंड नहीं है, इसमें सिर्फ आपको देखना है, इसमें कोई कन्वर्जेशन या बातचीत नहीं की गई है, लेकिन आप इस चीज को देख के समझ सकते हैं। ये 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है। आप लोगों को ये दिख रही है? दिख रही, ठीक है।
तो ये जो कहानी मैं आप लोगों को दिखा रहा था, इस पे आप देख के साफ साफ समझ पाए होंगे कि आजकल की दुनिया में कितना कंपटीशन है और किस चीज के ऊपर जोर ज्यादा है। पढ़ाई के ऊपर जोर ज्यादा है, एट द सेम टाइम जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है और उनकी जो अपनी इच्छाएं, अपनी इंटरेस्ट होता है, उसको दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक तनाव महसूस करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि आजकल की ये हिट न्यूज है कि हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में चर्चा हो रही है, कोटा के बारे में। और अगस्त की आखिरी तक नंबर ऑफ सुसाइड्स कोटा में जो हुए हैं, स्टूडेंट सुसाइड, 23 सुसाइड, अगस्त 15 तक 23 सुसाइड कोटा में इस साल हो चुके हैं। जो एक रेट देखा जा रहा है कि लगभग हर महीने में 3 सुसाइड स्टूडेंट की हो रही है कोटा में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या। कोटा एक छोटी सी सिटी है और उस सिटी में लगभग हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और उनमें से काफी सारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस को लेके, परफॉर्मेंस की प्रेशर को लेके तनाव में और दबाव में आते हैं। उनमें से कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड की जो संख्या है, पिछले 5 साल में लगभग 100 से ऊपर के बच्चे सुसाइड कर चुके हैं कोटा में। तो उसके बारे में काफी सारे चर्चाएं चल रही है, देश भर में उसके बारे में डिबेट भी चल रही है। और कोटा में जो आत्महत्याएं होते हैं, उसके पीछे का जो मेन कारण देखा गया है, वो पढ़ाई को लेके जो तनाव है, वो प्रमुख कारण पाया गया। कोटा तो एक सिटी है जहाँ पे देखा जा रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे सिटी हैं जहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनमें आत्महत्याएं भी होती हैं। अब हम थोड़ा आत्महत्या के पीछे जो मानसिक बीमारी है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सुसाइड की जो सर्कमस्टांसेस, किस कंडीशन में आत्महत्या हुआ, उसके बारे में जो देखा गया है, लगभग 50% जो आत्महत्याएं होते हैं, उनके पीछे देखा जाता है कि जो पीछे का कारण होता है वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी तरह का एक मानसिक बीमारी पाई जाती है। लगभग 50% लोग जो आत्महत्या करते हैं। हम लोगों के पास रेफरेंसेस आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, जहाँ पे आत्महत्या करने की जो प्रयास करते हैं लोग और उसके बाद जो बच जाते हैं, तो वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इलाज के लिए और उनकी मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। जब हम लोग उनकी असेसमेंट करते हैं, उनमें से लगभग आधे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर
किसी तरह का कोई मानसिक बीमारी है, स्ट्रेस है, या फिर कोई पर्सनालिटी की समस्या है जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने के प्रयास करते हैं, ये देखा गया है। तो एक बड़ी संख्या में लोग जिनकी मानसिक समस्या एक प्रमुख कारण बनती है जितने भी सारे लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या के बारे में प्लान बनाया या उसके बारे में सोचा और किसी घर वालों को बताया। पिछले 2 हफ्तों में जितने आत्महत्या होती है उनकी आत्महत्या से 2 हफ्ते के अंदर वो कोई क्राइसिस की स्थिति में जा रहे होते हैं। लगभग 31% लोगों में जैसे देखा गया, और अपने पार्टनर के लगभग 27% लोग के अंदर जो आत्महत्या करते हैं उनमें देखा गया उनकी अपने पार्टनर के साथ किसी ना किसी चीज को लेके मतभेद है और उसको लेके प्रॉब्लम चल रही है। लगभग 23% लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या करते हैं, उनमें देखा जाता है कि कोई ना कोई शारीरिक स्वास्थ्य को लेके कोई परेशानी होती है। लगभग 18% लोगों के अंदर अल्कोहल रिलेटेड समस्याएं होती है। लगभग 17% लोगों में शराब को छोड़ के जो अदर नशे की समस्याएं हैं उस समस्याएं होती हैं। लगभग 10% लोगों में अपने जॉब को लेके कोई ना कोई समस्या है। तो आप अलग अलग कारण समझ पा रहे हैं जो आत्महत्या के पीछे की सबसे प्रमुख कारण जो है वो मानसिक बीमारी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लगभग 50% लोगों में पाया जाता है। तो मेंटल इलनेस के साथ आत्महत्या की एक बहुत बड़ा गहरा नाता है। ये देखा गया है हर 10 इंसान में से 4 लोग जो सुसाइड करते हैं तो उनमें मानसिक समस्या होने के बावजूद वो कोई मेंटल हेल्थ केयर को मिला नहीं। तो मानसिक बीमारी होने के बावजूद उनको मानसिक बीमारी के लिए कोई सपोर्ट या कोई इलाज उनको मेंटल हेल्थ केयर, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। जो लोग आत्महत्या करते हैं और मानसिक बीमारी उसके पीछे का कारण होता है, लगभग देखा गया है 50% लोग जो आत्महत्या करते हैं उनके पीछे डिप्रेशन एक प्रमुख कारण। लगभग 70% लोग जो एंजाइटी महसूस करते हैं या उलझन घबराहट महसूस करते हैं, अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार उनके अंदर आत्महत्या के ख्याल आते हैं। जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक तरह का व्यक्तित्व की समस्या है, उस पे 80% लोग ऐसे होते हैं वो जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या के लिए प्रयास करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक बीमारी है जिसमें लगभग 20 से 50% लोग जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या के लिए प्रयास करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में लगभग 40% लोग आत्महत्या के लिए प्रयास करते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो उदासी, उलझन घबराहट, व्यक्तित्व की समस्या, गंभीर मानसिक बीमारी, ये सारे चीजों में आत्महत्या की प्रवृत्ति कैसे बढ़ जाती है। अब हमें समझना है कि आत्महत्या की जो रिस्क होता है उसको कैसे असेसमेंट करना है। आप में से ज्यादातर लोग टीचर हैं और आप लोग स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। एक स्टूडेंट के जीवन की जो 1/3 ऑफ लाइफ वो सोने में चला जाता है और 1/3 ऑफ द टाइम वो स्कूल में टीचर के साथ चला जाता है। बाकी 1/3 टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ या पढ़ाई में, खेल-कूद में बिताता है। तो टीचर के साथ अपने स्टूडेंट लाइफ में 1/3 समय वो बिताता है वो स्टूडेंट। और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो काफी इंटेंस इंटरेक्शन होता है और वे काफी लंबा समय है एक सुसाइड रिस्क को पहचान करने की। पहला चीज है कि आप जब किसी की सुसाइड की रिस्क को एसेस करते हैं उसके साथ एक अच्छा रैपो या अच्छा रिलेशन बनाइए। एक अच्छी दोस्ताना रिलेशनशिप उसके साथ होगा, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा। आप उसके तरफ अपनी एक संवेदना दिखाएंगे, उसको बोलने के लिए एनकरेज करेंगे
तो अपनी समस्या को लेके वो खुल के आपके सामने आएगा, अपने सोच के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में आपको बताएगा। तो उसके साथ एक अच्छा दोस्ती जैसा संपर्क रखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग आत्महत्या के बारे में पूछने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, उसके बारे में पूछते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं ये पूछूं तो उसको कैसा लगेगा, कहीं ये उसके अंदर आत्महत्या के विचार को बढ़ा तो नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरह का मिथ है। अगर आप किसी को आत्महत्या के बारे में डायरेक्टली पूछते हैं, आत्महत्या के बारे में मन में कोई हिचक ना रख के आराम से उसको पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं, तो अगर उस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या को लेके कोई विचार या कोई भावनाएं चल रहे होंगे, वो उसको प्रकट करने में, बताने में उसको आसानी होगी। इसलिए आप, अगर लगता है कि वो बच्चा परेशान है, तो आप उसके सुसाइड रिस्क असेस करना चाहते हैं, तो जरूर उससे पूछिए कि बेटे तुम्हारे मन में कोई आत्महत्या के विचार जैसे ख्याल तो कभी आया नहीं। तो ये आसान सवाल, डायरेक्ट सवाल है, जिससे हम उस व्यक्ति के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट होकर उसके मन में अगर कोई विचार है तो बताने में मदद करते हैं। अगर उस व्यक्ति ने आपको बताया कि उसके अंदर आत्महत्या के विचार आते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ये विचार उसके मन में कितने अक्सर आते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उसके मन में इस तरह का विचार आते हैं तो उसकी तीव्रता क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। जब ये ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, कितनी देर तक ये ख्याल उसके दिमाग में रहते हैं, क्या उसने आत्महत्या को लेके जीवन में कभी भी कोई प्लान बनाया है, कोई ठोस कदम उठाने के लिए सोचा है, या कभी कोई ठोस कदम उसने उठाया है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आत्महत्या की संभावना कितनी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है और उसकी तीव्रता कितनी है, उसके बारे में आपको जानकारी देगा, जो कि सुसाइड प्रिवेंशन में हमें मदद करेगी। उस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या को लेके क्या इंटेंशन है, अगर इस तरह का प्रयास करेंगे तो क्या हासिल होगा, उसके बारे में वो क्या सोचता है, क्या उसके मन में आत्महत्या के विचार चल रहे हैं, उसके पीछे का इरादा क्या है। कहीं ये अपनी जान को पूरी तरह से अपने आप को खत्म करना चाहता है, या दूसरों को दिखाना चाहता है, लोग उसके ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर अटेंशन मिले, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि सुसाइड और डेलिबरेट सेल्फ हार्म के बीच में फर्क क्या है, तो ये जानना जरूरी है। फिर उसके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं घट रही है जिसकी वजह से उसके अंदर आत्महत्या की संभावना बढ़ रही है, जैसे कि उसके लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर कोई एक मानसिक बीमारी का शुरुआत हो गया है, या मानसिक बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, या पहले कोई मानसिक बीमारी था जिसकी इलाज चल रहा था, इसने इलाज छोड़ दिया है, या कोई नशा का इस्तेमाल ये करता है, या उसके जीवन में किसी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई उसके जीवन में उसको कोई एक चोट पहुंची है, दिल पे चोट पहुंची है, कोई घटना है उसको बुरा लगा है बहुत ज्यादा, या उसके परिवार में किसी ने कोई आत्महत्या किया है, इस तरह का कोई चीजें हुआ है क्या, इसके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। क्या उसके जीवन में कोई ऐसे चीज भी है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति है जो उसको सपोर्ट कर सकता है, क्या उसके अंदर अपने तनाव से निपटने के लिए कोई एक अच्छा तरीका उसको पता है जिसके माध्यम से वो आत्महत्या के ख्यालों को रोक सकता है, उसकी लाइफ में कोई एक मीनिंगफुल गोल है, उसके परिवार में लोगों की सपोर्ट कितना है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमें सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोटेक्टिव फैक्टर को पहचान के उसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। कोई इस व्यक्ति को, जिस बच्चे को आप उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति कितना है, रिस्क फैक्टर को एसेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई मानसिक बीमारी तो पहले नहीं रही है, पहले कोई आत्महत्या की जोखिम तो नहीं उसने उठाया, और उसके लिए कोई इलाज तो नहीं हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। कई तरह के मानसिक बीमारी के लिए स्क्रीनिंग क्वेश्चनर आते हैं, जैसे उदासी को पहचानने के लिए PHQ-9 करके क्वेश्चनर आता है, जिसे कहते हैं पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर, जो कि एक बहुत सरल सवाल है जिसमें 9 सवाल होते हैं। उसको आप पूछ सकते हैं, पूछने के बाद उस व्यक्ति के अंदर उदासी की बीमारी या डिप्रेशन की समस्या तो नहीं है, अगर है तो उसकी तीव्रता कितनी है,
वैसे ही GAD 7 करके एक क्वेश्चनर आता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर 7 आइटम स्केल, 7 सवाल होते हैं। उस पे ये पता चलता है उसको कोई उलझन घबराहट की कोई समस्या तो नहीं है। क्लास 21 करके एक तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के बारे में 21 सवाल होते हैं और उन सवालों को आप आराम से पूछ के पता लगा सकते हैं उसके अंदर तनाव की मात्रा कितनी है, उदासी और उलझन की मात्रा कितनी है। ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है। बहुत सारे स्कूल की जो काउंसलर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं अगर कोई बच्चे को वो पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा तनाव में या कोई परेशान नजर आ रहा है। कई तरह का सोशल फैक्टर और सामाजिक और परिवेश से जुड़े हुए जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। उसकी लिविंग सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पे रहता है, किसके साथ रहता है, जिसके साथ रहता है उसके साथ उनका सब रिलेशन कैसा है, उनकी सपोर्ट इनकी तरफ कितना है, उसकी लाइफ में कोई रिसेंट चेंजेस हुए हैं क्या। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक 17 साल की लड़की आई थी जिसने वो काफी तनाव में थी और आत्महत्या की प्रयास किया था उसने। और जब उसकी जानकारी मिली उसने कहा कि हम पहले गुजरात में पढ़ाई करते थे, अब हम अपना होम स्टेट यूपी में आ गए हैं। अभी हमने जो नए स्कूल में ज्वाइन किया है, यहाँ स्कूल में बच्चे मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हैं, वो मुझे अलग थलग देखते हैं और मेरे वेट को लेके मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो। तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी और स्कूल के बारे में जब बात करते थे वो आत्महत्या के बारे में बात करती थी। तो उसकी लाइफ की चेंजेस क्या हुए हैं रिसेंटली, उसकी परिवेश में क्या बदलाव आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। रिस्क जो है सुसाइड की, उसका तीव्रता कितना है, ये मामूली सा रिस्क है या मध्यम रिस्क है या बहुत ज्यादा रिस्क है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और इसको पता लगाएंगे तो उस हिसाब से जो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए इंटरवेंशन है उस हिसाब से प्लान किया जा सकता है उसको। क्या चीज सेफ्टी मेजर्स ले ताकि सुसाइड को रोका जा सकता है। जैसे कभी भी कोई तनाव की स्थिति आए तो क्या तरीका अपनाए ताकि तनाव से अच्छे तरीके से निपट पाए लोग। कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, जब कोई बहुत ज्यादा तनाव महसूस करे, दुखी महसूस करे, आत्महत्या के विचार आए, तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसके साथ ही बात करें। क्या वो कॉन्टैक्ट आप ही हो सकते हैं? क्या आप उस व्यक्ति को उतना लिबर्टी दे सकते हैं, बेटे तुम्हारे मन में कभी भी इस तरह का विचार आए तो तुम बेफिक्र मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे अपनी दिक्कत बता सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की तरह काम करूंगा, तुम्हें मदद करूंगा। क्या वो आप बन सकते हैं? ठीक है, तो क्या इसको तरीका लिया जा सकता है जिसमें उसकी आत्महत्या के विचारों को कम किया जा सकता है? क्या हम एक माध्यम बन सकते हैं उसको मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास पहुंचाने के लिए एक माध्यम बन सकते हैं जिससे हम उसको एक सेफ्टी दे पाए? तो उसके बारे में भी हमें गहराई से सोचना होगा। हमें कोऑर्डिनेट करना होगा कि इस व्यक्ति ने, अगर आपने उसको पहुंचा दिया और उसकी काउंसलिंग हो गई या मानसिक स्थिति के लिए उसकी डॉक्टर से इलाज हो गया, लेकिन वो रेगुलर इलाज ले रहा है क्या, क्या रेगुलर काउंसलिंग कर रहा है क्या, काउंसलिंग के बाद उसको जो तरीके बताए गए थे उसको वो फॉलो कर रहा है क्या, क्या परिवार वाले उसको साथ दे रहे हैं क्या उसको दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा है क्या, इस चीज को भी फॉलो अप करना एक जिम्मेदारी बनता है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमें ये चीज की ध्यान रखना होगा कि सुसाइड रिस्क असेसमेंट बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है और काफी चैलेंजिंग है। एक आध सवाल पूछ के हंसी मजाक में हम उसकी असेसमेंट कर सकते, इसको हमें सीरियसली सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एसेस करना चाहिए। अगर आपको अपने आसपास में, अपने स्कूल में कोई ऐसे स्टूडेंट आप देखते हैं जिसके अंदर आत्महत्या की भावना बहुत ज्यादा है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाने की रिस्क ज्यादा है, तो इस तरह की स्थिति में आप उसको इमरजेंसी सर्विस या क्राइसिस इंटरवेंशन सर्विस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इमरजेंसी सर्विस कहाँ पे उपलब्ध है? ये हर जिला अस्पताल में उपलब्ध है।
हर जिला अस्पताल में यूपी की ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रही है, जिसके तौर पे वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर है। वो लोग बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटी भी करते हैं, तो आप उनके साथ उसको लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे उसको मानसिक स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट मिल सकता है। अगर उस जिले में कोई मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आप उसको पहुंचा सकते हैं, उसके साथ लिंक कर सकते हैं, जहां से मानसिक समस्या के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपना जान देने के बारे में बात कर रहा है, मरने के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही ज्यादा होपलेस फील कर रहा है, अंदर एक खालीपन फील कर रहा है, और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीजें वो किसी को बांट दे रहा है, अपनी जो जरूरत की चीजें वो दूसरों को दे दे रहा है। यूजुअली लोग जब महसूस करते हैं अब इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरा लाइफ तो खत्म होने वाला है, तो वो अपने बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें और लोगों को दे देते हैं। अगर आप इस तरह का चीज बिहेवियर में नोटिस कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा है, अंदर जैसे बंधा हुआ सा फील कर रहा है, ट्रैप फील कर रहा है, ठीक है, और जैसे बहुत सारे जोखिम उठा रहा है, और आत्महत्या के बारे में बहुत सारे चीजें इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्स से वो पता लगा रहा है, चीजों को ट्राई कर रहा है, कोई सुसाइड नोट या नेगेटिव लेटर लिख रहा है कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, और कभी वो ये से बात कर रहा है कि मैं दुनिया के ऊपर एक बर्डन, अपने परिवार से अलग थलग जैसा महसूस कर रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कहीं ये आत्महत्या की तरफ जा तो नहीं रहा है। तो अपने आप को कोई चोट पहुंचा रहा है, अक्सर मरने के बारे में बात कर रहा है, अक्सर उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमेशा कोई खतरनाक चीजें अपने साथ जैसे चाकू, पॉइजन, इस तरह का चीजें अपने पास रख रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, लोगों से अलग थलग रहता है, अपने बारे में एक नेगेटिव नकारात्मक सोच लेती, मैं तो देखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बेकार ही हूँ, नशा की तरफ उसकी मन जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का चीजें अगर रिस्की बिहेवियर आप देख रहे हैं तो सतर्क रहना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब इस तरह का स्थिति की आप सामना करते हैं, उस व्यक्ति का असेसमेंट जरूर करिएगा, उसकी पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर है उसको जानने की कोशिश करिएगा, उसको प्रोत्साहित करिए कि उस व्यक्ति का जो जिसके साथ परिवार में सबसे ज्यादा लगाव, उसके साथ वो अपनी समस्या को खुल के बताए, उनसे थोड़ा मदद लेने की कोशिश करे, उनको भी आप काउंसलिंग में आपके साथ शामिल करने की कोशिश करिए, या बच्चे की तरफ से आप एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो खबर उसकी परिवार वालों को दीजिए, ताकि उसके परिवार में जो व्यक्ति उसको सबसे ज्यादा केयर करते हैं वो इसके बारे में जानने के बाद थोड़ा सतर्क होकर इसकी मदद करें। जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत है, वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके आप, मेरे पास अमेठी से एक टीचर का फोन आया कि मेरे एक स्टूडेंट है जिसके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है, वो काफी प्रॉब्लम है, हम आपको उनकी फैमिली को भेज रहे हैं, लेकिन आप उनको हेल्प करिए। मेरे पास उनका टीचर का फोन आया, मुझे जो खुशी हुई, मैं कम से कम उसकी टीचर जो है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को उसके घर वालों को कन्विंस करके साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा, और हमने देखा कि उस व्यक्ति के, उस बच्चे के अंदर एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको ट्रीट नहीं किया गया है। उसको इलाज करने के बाद उस बच्चे के अंदर काफी सुधार आया, और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा फिर इलाज के लिए आए नहीं। उसकी टीचर ने कहा कि मैं उसके व्यवहार में फिर से बदलाव देख रहा हूँ, कहीं उसने दवाई छोड़ तो नहीं दिया, मैं उसको दोबारा भेज रहा हूँ। जब दोबारा हमारे पास भेजा तो देखा कि उसने, घर वालों ने दवाई उसकी बंद कर दी, फिर हमने दवाई शुरू की, उसको काउंसलिंग की, फिर उसके अंदर सुधार आया। तो टीचर का एक अहम भूमिका होता है इस तरह का स्थिति। सुसाइड को प्रिवेंशन करने के लिए कई तरह के हेल्पलाइंस हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हेल्पलाइन एग्जिस्ट करता है। एक तरह का सेवाएं अभी शुरू की गई है जिसे कहते हैं टेली मानस,
हर जिले की हॉस्पिटल में एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसमें किसी को भी मानसिक समस्या है तो वो उसमें संपर्क करके साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट ले सकता है। तो वो अभी कुछ जिलों में शुरू हो गया है और कुछ जिलों में शुरू होने वाला है। तो इसकी सुविधा भी टीचर्स अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं, जहां से बच्चों को अपने मानसिक परेशानियों के लिए सपोर्ट मिल सकता है। तो हेल्प जो है वो अवेलेबल है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से मिल सकता है, एनजीओ के माध्यम से मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर से मिल सकता है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक नर्सेस या साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं जो ये सभी मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। तो इनके साथ लिंक करना, एज ए टीचर आप उनके साथ लिंक कर सकते हैं व्यक्ति को, स्टूडेंट को, ताकि वो उनकी हेल्प ले सके। टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए कई तरह के रिकमेंडेशन और मैनुअल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो आप एक टीचर की तौर पे ये देख सकते हैं कि अपने स्कूल में, अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके आसपास में उपलब्ध है, क्या आपके स्कूल में कोई काउंसलर उपलब्ध है, आपके स्कूल के आसपास में कोई साइकियाट्रिस्ट है, मेडिकल कॉलेज है, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल है जिसके साथ आप लाइसेंसिंग कर सकते हैं, क्या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि साइकियाट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, जिसको आप जानते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, क्या आपके स्कूल में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी व्यवहार में आप लगातार बदलाव देख रहे हैं या आत्महत्या की उन्होंने कोशिश कर चुके हैं, क्या आपकी क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो कि आपकी स्टूडेंट्स में कोई अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है तो उसको एज ए फास्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे स्टूडेंट आपके साथ संपर्क कर सकते हैं। ये सारे चीजों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये सारे चीज तैयार होने के बावजूद कई बार क्या होता है, लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ बच्चे सुसाइड कर देते हैं और टीचर जब ये चीज की सामना करते हैं, देखते हैं कि उनकी स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया, वो उनकी मानसिक स्थिति को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो उस तरह का स्थिति को सामना करने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए अपने स्कूल में आप डिफरेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं और स्टूडेंट को अपने लाइफ में जितने भी सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आती है उसकी सामना करने के लिए कैसे प्रस्तुत करें, उसके लिए आप उनको एजुकेट कर सकते हैं ताकि हम लोग सुसाइड को प्रिवेंट कर पाए। एक टीचर खाली एक टीचर नहीं होता है, एक शिक्षक एक रक्षक भी होता है। अगर शिक्षक अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट के अंदर आत्महत्या की जो रिस्क फैक्टर है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं और उनको एक सपोर्ट बन के खड़े होते हैं तो आत्महत्या को रोका जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ और आपके मन में कोई सवाल है तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कार, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और I hope Dr. Dalal will join soon for the last presentation of the day. लेकिन अगर हम कुछ ही लोग हैं, फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो जो डॉक्टर कार से करना चाहे तो मुझे बताएं। कोई कमेंट हो, कोई नहीं तो I just want to appreciate and thank Dr. Kar for such a deliberate and very long presentation with all minute details and on all dimensions. Yes. And all. I really appreciate. Very, very exhaustive, very, very academic and very, very elaborate. Yes, And yes. It's like a complete booklet on like how to take care of our students and our right. children. Thank
So it's in fact he is a faculty for our teachers training program. So he prepares. It's part of how we impart training to go into every minute detail. He has not covered still, in the next session or sometimes how to classify different kind of ideas, how to quantify the severity of the ideas, what is lethality, what is severity, what is the potential of every kind of, which ideas are more lethal, which ideas are less lethal. So maybe next month or sometimes when he conducts the proper training with selected audience, we would be able to cover that. Thank you, Dr. Carr. A wonderful job. And well, I think let's see if Dr. Dalal is joining. Otherwise, is there any other comment? Anybody wants to raise any point? Okay. I think we had a long day, about 6 lectures, though one of our faculty was not well, so the topic was covered by Dr. Shruti Sinha today. And tomorrow again we have the day will begin at around 4 o'clock. I'll restructure the program and email it to you. Again, let me check if Dr. Dalal is joining or not joining. In the meantime, I can just raise the query to Dr. Carr. Yes. Dr. Carr, telling about like a short type questionnaires available बस for. आप ज्वाइन कीजिए, कंक्लूड करना है आपको, बस हो गया बाकी। So जो वो उसने खत्म किया ना, ये finished. I told you. Okay. Yeah, so the questions, are they available to check the stress level Exactly. of the students in the public? These questions are freely available. They are available in multiple Indian languages. Hindi में, English में, regional languages में available. आप उसको टाइप करेंगे तो आपको वो क्वेश्चनर्स मिल जाएंगे. मैं चाहे आप कहें तो मैं उसको चैट बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर सकता हूं, जिसको आप यूज कर सकते हैं. मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं. हाँ, so ये And Dr. Carr, you can share your email also if you don't mind. Sure. So that Sure. if we need some information we can have. Thank you. Yes, the Professor Mishra, Dr. Carr is a very good faculty and resource, and I think when you have the program in Lucknow University, he'll be involved. When you develop the course, Dr. Carr is going to be part of the faculties who will help develop things. So quantification, Dr. Carr, so we are struggling with quantification of psychopathology. What would be your recommendation? Which kind of quantification you would advise? Any thoughts? Quantification, sir, this is a two-step process. Yeah. First, we need to identify. हमें ये पता लगाना जरूरी है whether there is any psychopathology or not. Then, if there is psychopathology, then what is the type of psychopathology, and what is the severity of psychopathology? Right. So, first thing we need to identify whether psychopathology is there or not. Right. For that, we need to have a screening questionnaire. Right. Like, if you are planning to screen for all the psychiatric illnesses, there are different screening questionnaires. One of the valid screening questionnaire is MINI 7.2. It is a mini international neuropsychiatric inventory. Right. ये जो सारे मानसिक समस्याओं को स्क्रीन करने के लिए सवाल है. वैसे ही अगर हमें सब्सटेंस यूज को, एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज को पता लगाना है, उसके लिए भी स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है जिसको कहते हैं WHO असिस्ट 3.0 वर्जन. तो उससे क्या है कि जितने भी सारे एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आप पता लगा सकते हैं. तो स्क्रीनिंग क्वेश्चनर से पता हमें लगता है कि मानसिक बीमारी की संभावना है या नहीं, मानसिक समस्या है या नहीं. Right. वैसे ये तो हो गया सारे साइकियाट्रिक इलनेस को.
लेकिन हम अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को स्क्रीन करना चाहते हैं, जैसे कि हम सिर्फ डिप्रेशन को स्क्रीन करना चाहते हैं, या जैसे कि हम सिर्फ एंजाइटी को स्क्रीन करना चाहते हैं, या स्ट्रेस को स्क्रीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है। जैसे डिप्रेशन को स्क्रीन करने के लिए जो स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है उसे PHQ-9 कहते हैं, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर 9। मैंने अभी इसको चैट बॉक्स में शेयर किया है। इसमें 9 सवाल होते हैं। ये मिनिमल डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, जिसे क्वांटिफाई भी करता है। ये स्क्रीनिंग टूल आपको बताता है कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन है या नहीं, और ये स्क्रीनिंग टूल ये भी बताता है अगर उस व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसकी सीवियरिटी कितना है, तीव्रता कितनी है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था WHO असिस्ट क्वेश्चनर जो है, ये एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज को स्क्रीन करने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये भी ये बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर उस एडिक्शन का रिस्क कितना है, माइल्ड रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, सीवियर रिस्क है, और उसकी स्कोर के हिसाब से उसको किस तरह का इंटरवेंशन की जरूरत है, तो वो भी एक तरह का गाइड करता है। तो पहले हमें पता लगाना है कि साइकोपैथोलॉजी है या नहीं, स्क्रीनिंग टूल लगा के, और फिर जो साइकोपैथोलॉजी है उसकी तीव्रता कितना है उसको क्वांटिफाई करना है। उसकी तीव्रता अगर माइल्ड लेवल पे है, हो सकता है उसको सिर्फ साइकोसोशल सपोर्ट के माध्यम से, या उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी काउंसलिंग के माध्यम से, या उसकी कोई प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से उससे इसको डील किया जा सकता है, या प्रॉपर कोपिंग स्किल के माध्यम से उससे इसको डील किया जा सकता है। अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है, हो सकता है ये चीजों के साथ साथ उसको एक प्रॉपर इलाज की जरूरत पड़ेगा, चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम की प्रॉपर काउंसलिंग जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसे इलाज की तरीका हो सकता है, चाहे वो कोई दवाई की इलाज भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है साइकोपैथोलॉजी को क्वांटिफाई करने के बाद। अगर तीव्रता मॉडरेट टू सीवियर है तो प्रोबेबली दैट पर्सन रिक्वायर्स मेडिसिनल ट्रीटमेंट और some counseling support additionally. Thank you, Dr. Kar. So, thanks very much. We are having our most senior most in the last speaker of the day, Professor P.K. Dalal. Dr. Dalal, welcome. Professor Dalal is former. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Former professor and head of King George's Medical University Department of Psychiatry, and is an active member of International Fraternity, past president of Indian Psychiatric Society, actively works with World Psychiatric Association and Indian Psychiatric Society, and in the SAARC countries for teaching, research, program development, and education in mental health. Professor Dalal, most welcome. We are looking forward to your remarks on our initiative, and you can take the time that you want. We are very few remaining, but we are encouraged to listen to you and your advice on our program of Mansik Shakti. Most welcome, sir. आवाज नहीं आ रही है यार मेरे। Am I audible? Yes, now yes. Okay. So thank you, Dr. Amresh. Thank you, Dr. Sujit, and my dear participants. This is a great initiative for the Indo-Canadian Mansik Shakti, and I congratulate Dr. Professor Amresh for this initiative. और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये जो डॉक्टर साहब का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो ये है कि जो भी व्यक्ति जो भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनमानस को, खासकर जैसे टीचर्स को, अभिभावकों को, जो किशोरावस्था में जो मानसिक तनाव है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है वर्ल्ड ओवर, एक ज्वलंत समस्या है, एक बहुत वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका आकलन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उस समस्या को समझा जाए और किस तरीके से उसका निदान प्राप्त किया जा सके, इसके लिए जो प्रयास हो रहा है वो मेरे विचार से बहुत ही सराहनीय है। इसमें मुझे ये कहना है कि
जो भी जैसे एक तो किशोर हैं, उनकी एक मानसिक परिपक्वता के तरफ वो हैं, और उनमें खुद भी कुछ द्वंद्व की स्थिति चलती है किशोरावस्था में, क्या करना है आगे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी लाइन में जाना है। और उसके अलावा अभिभावक रहते हैं उनके साथ, तो उनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी कुछ चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे कुछ करें। और जो तीसरे हैं वो जो टीचर्स हैं हमारे, जो टीचर्स हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं जो कि कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, एक तीसरा वो ग्रुप है। तो इन तीनों का आपस में सामंजस्य बैठाना एक बहुत जरूरी बात है। मतलब बच्चा जो किशोर है वो, उसके अभिभावक, और इसके अलावा जो दो और चीजें हो रही हैं आजकल मैं ये देख रहा हूं, एक तो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ता है, फिर घर आकर के स्कूल का होमवर्क, फिर उसके बाद कोचिंग जाता है, फिर कोचिंग की पढ़ाई करता है, फिर कोचिंग से आने के बाद कोचिंग का होमवर्क। तो इस तरीके के जो रूटीन में बच्चा आजकल फंसा हुआ है, तो उसको किस तरीके से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, किस तरीके से वो सेल्फ स्टडी में कुछ अपना समय निकाल पाए, और किस तरीके से वो इन सब जो मानसिक तनाव या मानसिक दबाव है उसको किस तरीके से हैंडल कर पाए। मैं 2-3 उदाहरण इसमें देना चाहूंगा जो मेरे खुद के देखे हुए कुछ केसेस हैं इसी सप्ताह के। बहुत ही रीसेंट बात है ये। एक अध्यापक खुद अपने बेटे को लेकर के आए, और वो अत्यधिक मानसिक तनाव में था वो बच्चा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कि आपकी क्या समस्या है? तो उसने ये कहा कि सर मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आपका क्या रूटीन रहता है बताइए। तो उसने ये बताया कि सर मैं 5 बजे सुबेरे कोचिंग जाता हूँ, और 5 बजे से लेकर के और 6-7 बजे तक कोचिंग करता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ, फिर स्कूल से लौट के आने के बाद फिर मैं दूसरे विषय की कोचिंग करने चला जाता हूँ, और फिर मैं शाम को देर, कभी कभी रात भी हो जाती है, मैं लौट करके आता हूँ। और उसके बाद मुझे जो स्कूल का होमवर्क है और जो कोचिंग का होमवर्क है वो सब करना पड़ता है, और इसी में काफी देर रात हो जाती है, फिर मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, कई बार मेरा होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता है। और मैंने कहा कि फिर आप ये बताओ कि फिर आप सेल्फ स्टडी कब करते हो, और इसके अलावा जैसे बाकी और मनोरंजन या ब्रेक्स में क्या करते हो, वो कब लेते हो, कब अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना टहलना, बातचीत करना, खेलना कूदना, अपने अभिभावक अपने पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू करना, या बैठ करके थोड़ी देर मनोरंजन करना, ये सब क्रियाएं कब करते हो। उसमें उसके पिताजी और वो बच्चा दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इसके लिए तो इसके पास समय ही नहीं है। मैंने उन अध्यापक से ये पूछा कि भाई आप एक अध्यापक हैं, और आप इसी उम्र से इस बच्चे के ऊपर इतने सब्जेक्ट्स के आप उसके ऊपर कोचिंग का बोझ डाल रहे हो, और स्कूल भी जा रहा है बच्चा, कोचिंग भी कर रहा है बच्चा, और दोनों जगह के होमवर्क भी कर रहा है, और आप खुद एक अध्यापक हो, आप खुद क्यों नहीं कुछ बच्चे के पास बैठते हो, कुछ उसकी परेशानियों को, कुछ उसका जो भी कुछ है उसको समझने का प्रयास करते हो, खुद क्यों नहीं कुछ करते हो। तो इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो निरुत्तर थे। आजकल ये सबसे बड़ी समस्याएं होती जा रही हैं। अभिभावक चाहे वो अध्यापक ही क्यों ना हो, वो ये खाली समझता है कि मैंने बच्चे के ऊपर कोचिंग करवा रहा हूं, मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, और माई जॉब इज ओवर।
अब बाकी सारा बच्चे के ऊपर दबाव है और अभिभावक यही कहता है छूटते ही कि इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है और तुम ही को सब कुछ करना है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और उधर कोचिंग वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि 16 घंटे तुमको पढ़ाई करनी है, उसके बगैर तुम्हारा सिलेक्शन ना तो नीट में होगा, ना आईआईटी में होगा, ना जेईई में होगा। तो बच्चा, एक किशोरावस्था का जो बच्चा है, वो ये सब सुन करके वो बिल्कुल दिशेहारा हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। वो compete करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, और जिसके कारण फिर उसमें ये सारे मानसिक तनाव, मानसिक विकार, नींद ना आना, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं कर पाना, भूख ना लगना और हमेशा तनाव में रहना, इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाती। तो मैंने फिर उनके उस अध्यापक महोदय को अच्छी तरीके से समझाया, मैंने उनको रूटीन बताया कि बच्चे का क्या रूटीन होना चाहिए, उसको कितना टाइम स्टडी में देना चाहिए, कितने ब्रेक्स लेने चाहिए बीच में, किस हिसाब से उसको कब उसको कोचिंग में जाना है, कब स्कूल जाना है, और कोचिंग और जो स्कूल है उन दोनों का जो गति है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दोनों अगर सामंजस्य और एक दूसरे के होमवर्क करने में मदद करेंगे तो ही फिर समय बच सकता है, वरना स्कूल अपनी गति से अलग चल रहा है, कोचिंग अपनी गति से अलग चल रहे हैं, दोनों ही अपने अपने होमवर्क्स दे रहे हैं, बच्चे को समय ही नहीं है सेल्फ स्टडी का। तो मैंने उनको, अध्यापक को और उनके जो बच्चा था, उन दोनों को सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। और ये सब चीजें करने के अलावा एक ठीक से बैलेंस्ड अपने समय से भोजन करना, समय से सोना, कम से कम उनको बताया कि 8 घंटे की नींद तो अत्यंत आवश्यक है, वरना आप बाकी 16 घंटे तो आप एफिशिएंटली काम ही नहीं कर सकते। तो ये सब बातें बताई, स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, नींद किस तरीके से मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। तो इस तरीके की चीजें उनको समझाने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद उनकी कुछ बातें समझ में आई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उनसे लाभ उनको मिलेगा, और दूसरी बार फिर वो जब आएंगे तो और उनसे बातचीत करके और उनके जो भी कुछ समस्याएं होंगी उसका समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें कि बच्चा सुबह 5 बजे से लेकर के और रात में 10 बजे तक सिर्फ स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क करता गया, और उसके अलावा उसके पास और कोई समय नहीं है। तो एक ग्रुप ये है। दूसरा, एक बच्ची मेरे पास आई और उसके अभिभावक लेकर के आए। उसको 3 साल हो गया इंटरमीडिएट किए हुए, और 3 अटेम्प्ट वो कर चुकी है, नीट की तैयारी कर रही है वो। उनके फादर ने बताया कि सर ये 2 साल से कोटा में रह भी आई हैं, और अभी ये घर आ गई हैं और घर पे तैयारी कर रही हैं। और उस बच्चे की मेन जो परेशानी थी वो ये है कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई पे। मैंने उससे पूछा कि आपके नंबर कैसे रहे, बताइए, कितने आपने 3 बार अटेम्प्ट किए, किस तरीके से नंबर रहे, कैसा रहा, और जो आपकी परफॉर्मेंस थी क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, कितने नंबर पे आमतौर से सिलेक्शन होता है, मिनिमम मार्क्स क्या हैं, और आपके कितने नंबर आए इन 3 अटेम्प्ट्स में। तब जा करके उसको अपनी बात ये समझ में आई कि वो कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है आसपास, तो उसके 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने उससे ये पूछने की कोशिश करी कि आप और कितने साल इस परीक्षा को आप देना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ये मेरा लास्ट चांस है। तो मेरे दिल को फिर भी कुछ तसल्ली हुई। मैंने उनसे कहा चलो भाई ये आखिरी बार है, जम करके पढ़ाई करके इम्तिहान दो, और इसके बाद फिर तुम अपना प्लान बी, तुम्हारा कुछ है कि तुम अपने प्लान बी पे आगे बढ़ने का प्रयास करो, अगर प्लान ए तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसने कहा हाँ सर मैं वेटरनरी साइंस में कुछ करना चाहूंगी इसके अलावा, अगर मेरा मेडिकल में नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो भाई तुमने बहुत अच्छी बात सोची, और उस तरफ भी तुम अपना कदम आगे बढ़ा सकती हो। और मैंने उसको फिर उसने ये बताया कि सर पढ़ना है, कुछ फोकस नहीं हो पा रहा है।
तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें क्या पढ़ाई करनी, किस चीज का इम्तिहान कैसे हो रहा है आजकल। उसने कहा एमसीक्यू के जरिए हो रहा है। तो मैंने कहा तो एमसीक्यू ही आपको करना है, बाकी तो आपने पूरी पढ़ाई 5 बार पढ़ ली। आपने क्लास 11th में पढ़ाई करी, क्लास 12th में पढ़ाई करी, नीट 1 पहली बार आपने दिया तब पढ़ाई करी, नीट 2 में पढ़ाई करी, नीट 3 में आपने पढ़ाई करी, वही पढ़ाई आपने 5 बार कर ली। अब आगे आपको थियोरी पढ़ करके तो कुछ होगा नहीं। आपको बेसिकली नीट में जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो भी कुछ टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आपको अपीयर होना चाहिए और उसमें आप देखिए बाद में सवालों का उत्तर कि आप किस तरीके से, कहाँ पे आप नहीं कर पा रही हैं, कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पे आप सही हैं और कहाँ पे आप गलत हैं। फिर उल्टा चलिए, फिर उनके उन सवालों के जवाब के लिए आप बुक रेफर करिए और बुक से उसका सही जवाब ढूंढने का कोशिश करिए। आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से अगर सिर्फ पढ़ती किताबें तो उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं अब इस समय, क्योंकि आपने 5 बार उन किताबों को पढ़ रखा है और फिर भी आप जो भी रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आपका इस तरीके से आप अपने अगर प्रयास करेंगी तो हो सकता है कुछ बेहतर हो, और अगर नहीं हो तो इसको आखिरी बार समझ करके अच्छे से मेहनत करके अपीयर होइए। आपके माता पिता आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ देंगे, और अगर आप इसमें नहीं कर सकती हैं तो आपका कोई ऐसा नहीं होने जा रहा है कि पहाड़ टूट पड़ेगा। मैंने उनको अपने उदाहरण भी दिए कि मेरे टाइम में भी नीट का एग्जाम होता था, जो कि सेंट्रल का अलग होता था और अलग अलग कॉलेजेस का और यूपी का अलग होता था। हम लोगों ने भी उस समय अपीयर हुए। मैंने उनसे ये बताया कि हमारे जमाने में जो लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी, वो आज किसी भी रूप में हमसे कम नहीं है। और आजकल और बहुत सारे लाइन हो गए हैं। हमारे टाइम में तो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉ, इसी तरीके की 2-3 लाइनें थी, लेकिन अब और बहुत सारी लाइनें हो गई हैं। तो आप किसी भी लाइन में जिसमें आपका जुनून हो, जिसको आप वाकई में चाहती हो दिल से, उस लाइन में आप जाने का प्रयास करिए, तो उसमें आप अच्छा करेंगी और उस लाइन की पढ़ाई करने में आपको थकावट नहीं होगी। मेरे ये जो थकावट वाली लाइन है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था अपने पिछले बार के टॉक में, कि एक मेरे अभिन्न मित्र हैं जिनकी फैमिली में सारे लोग इंजीनियर हैं। तो उसमें एक नौजवान लड़का एक मैरिज में मुझे मिला। जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर मैं म्यूजिक बनाता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आश्चर्य से उससे पूछा कि बेटा आपके घर में तो सारे इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचा? तो उसने कहा, अंकल मुझे म्यूजिक बनाने में थकावट नहीं होती, चाहे मैं जितनी देर इस काम को करूं मुझे इसमें अच्छा लगता है और मुझे किसी किस्म की थकावट नहीं होती। तो यही मैं सारे अभिभावकों को, सारे विद्यार्थियों को, सारे किशोरावस्था के जो भी विद्यार्थी हैं, जो किशोर हैं, उनको और सारे टीचर्स को यही कहना चाहता हूं कि अपने ड्रीम, अपने माता पिता के ड्रीम को न फॉलो करके खुद का जो आपका ड्रीम है, खुद का जो आपका जुनून है, जो आप खुद से बनना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास करें और उसमें अपने अभिभावकों को और अपने टीचर्स को कन्विंस करने का प्रयास करें, और उसमें आप, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि अगर सचिन तेंदुलकर को कोटा भेज दिया जाता तो क्या होता। ये जुमला जो है, ये मेरा वाक्य, ये कई अखबारों में भी लोगों ने इसको प्रकाशित किया और ये कई लोगों ने ये कहा कि साहब आपने एक वाक्य में ही सारी कहानी, मूल मंत्र बता दिया। तो ये समझने की जरूरत है हर बच्चे को, हर अभिभावक को और हर टीचर को। मैं अपने खुद का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गया और शायद वो 8th या 9th में होगा।
और जो क्लास टीचर थे वो ये विद्यार्थी को समझा रहे थे कि विद्यार्थी और उनके अभिभावक को, मतलब मेरा नंबर उनके बाद था, तो मैं उनकी सुन रहा था उनकी बात। तो वो क्लास टीचर उस पेरेंट्स को समझा रहे थे कि देखिए 95% से नीचे तो कुछ नहीं हो सकता बच्चे का। तो मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के नाते मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये जो है ये इस तरीके का दबाव क्यों डाल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। हो तो बहुत कुछ सकता है, अगर विद्यार्थी अपने मन की कोई कोर्स चुने, अपने मन के लाइन में आगे बढ़े तो बहुत कुछ वो कर सकता है। इस 90, 95, 99 के फेर से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे खुले दिल से, खुले मन से कुछ कर पाएंगे। तो इन कुछ शब्दों से मैं अपना ये समाप्त करना चाहता हूं अपना संबोधन। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी कुछ सवाल जवाब, अपने कुछ कमेंट्स बताएं कि आप लोगों को किस तरीके के विद्यार्थी मिलते हैं या किस तरीके के अभिभावक मिलते हैं, और आप लोगों की क्या समस्याएं रहती है स्टूडेंट्स को डील करने में या उनके अभिभावकों को डील करने में, और या उन लोगों को, विद्यार्थियों को पहचानने में कि इनमें मानसिक तनाव है कि नहीं है, या इसका इलाज या इसमें किस तरीके से उस बच्चे की मदद की जा सकती है। तो ये सारी बातें हम लोग थैंक यू प्रोफेसर दलाल। बड़ी अच्छी और गहरी बातें की आपने अपने एग्जाम्पल्स के साथ। जो प्रसंग सामने हैं, जो हमारे मरीज और बच्चे जो जिन समस्याओं को लेकर आते हैं, उनसे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। दिन काफी लंबा रहा है और आपने एक ऐसे मोड़ पर बातों को समाप्त किया है कि इसके आगे क्या करना है ये चर्चा हम कल चालू रखेंगे। कल भी स्पीकर्स हैं और डॉक्टर कार ने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। लेट मी आस्क, तो मैं अपने श्रोताओं से पूछ रहा हूँ, कोई और सवाल है, कोई कमेंट है, कोई बिफोर वी क्लोज फॉर द डे? कोई, किसी के पास कोई? आर देयर एनी कमेंट्स? हेमंत, मणि? ओके, आई थिंक मेरा ख्याल है प्रोफेसर दलाल लोग आज थक गए हैं, शायद 6 घंटे से सेशन चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, और हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल का कार्यक्रम मैं पुनः ईमेल पे आप सभी को भेजूंगा, और आज का जो भी कार्यक्रम रहा शाम तक यूट्यूब में आप उसको फिर से देख सकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आप जुड़े, इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।